think we are live. Thank you very much. Jojolapa, Thana Jayadipi Sakala Bazu Mezupinta, Jiguto, Pasapucha Gutia, online seminar, contemporary practices in the preservation of Newa tradition, Losukusudu, Pasapucha Guti, London ya, Nayo Mezu, Rukmani Manandhar Juyata, Thana Sakala Sita, welcome speech bita in Apianasana. Swear. Rukmanji, unmute mute. Yes, we have to change the. You have to stop sharing the. Yeah. Jojolapa, namaste, good afternoon. Rukmani Manandhar, Pasapucha Guthi, London ya, Nayo Mezu. Pasapucha Guthi, UK ya, Nido, Hyungulas bag, one Mudaya, Nepal Samvat, Jinsasawa, Peach Handaya, Hanigo, Ajuya, Jisong, Gosa Boybu, online Guthi, Yato Muja. Dakoyana article, Yungu Guthi, Guthi, To Muja, Jisong, Yake Tunkudo. Nepal Samvat, Jinsasawa, Peach Handaya, contemporary practices in the preservation of Newar tradition. Sisake Hakano Chaka, Chibu Guthi, To Mujaya, to Nyabu Vo, Yabu Gosa, Guebu, Kana, Jitasko Heleta. Babisheno, Uthi, Sutalako, Tatehe Yana, Nadi, Tegu, Palasa, Dunoglan Yansona. Toya, Mujale, Honey ko Titi Esong, what Titi Cotton, Putza, Long, Jajo, or Bakta Cotton, Newar Con, ADP, HDP, Sakala Honey Bobby, Pa, Hazu Major Pinta, but here she passes Puto Guthi, London, Sostaya, Guthi UK, London, Nayo, Rukmani Manandhar, Lishe, Sostaya Pake, Koshia, Hana Banalishe, Dunoglonishe, Laskusian. Delighted Guthi seminar, Chi, Pulama Nayo, Hazo, Dr. Sachetan Tuladar Juno, Mu Bizayandia, Tojazo, Pasapucha Guthi, Londonia, Nepal, Samvat, Jinchasa, was Sui Soda, Nise, Esuru Juguka. Weka yato Modiko Gwali and a Dima, Chief Laman Nayo Pazo, Samyuta Shrestha Junaka, Weka Pinto Chi, Sakusha, Dunuklonishe, Yuko Subhad Desanatona. Toskoye Goropta. Tuxi Waya Chief Board of Trustees and Nayo Bhajo, Ojesh Singh, Swahasian, Nepal Bhasa Puchaya, Shenami, Meju, Merina, Finsoni, Guthi, To Mujayabu, Gosa Kola. Dunechona, Tosko Banaka Jayandi Gudu, wake up in Tona Yoko Subad Desana. How, Tatabu, Prostuti, Tosko Banaka, Yandipi, Taka, Yanadi Taka, Sakula Honeybopi, Botimi Pinta, Pasaputa, UK, London, Nayo, Rukmani Manandhar was Sakula Jasuna Putoya, Duzopini Pake, Yoko Pimpana Desansona. Niha Dea, Steer Duty, Hazusankadar Sakayata. Chisa Lumangkatuna, Nudaya Pintuna, Nepal, Samvat, Jinsasawa, Peach Hadaya Pintuna. Happy New Year. Aji Biwati and Nayo Bhazo, Ojesh Singh Juyata, to P Jaya, Nyoni Hakita, Lol Hansona, Pija Subha. Yoke Subha, Rukmani Manandhar Ju, Ale Jojolapa. Thauya Jajole, Togu Ibia, Hali, Bivina Deson, Boticata, Jayadipin, Sakala Bazu Mezupinta, Jipasapucha Guthi, BOT, Board of Trustees, Nayo, Ojesh Singh Yapakin, Losukusa, Ale Nuguda, Jinsasa, Pizaraya, Yoko Bintuna. Thau Pasapucha Guthi, UK Palista Jugu, Tugusi, Nidana Kyongudu, Uki, Nuguda, Nepal, Samvat, Jinsasa, Pizara, or Pasapucha Guthi, UK Palista Jugu, Nida Kyongu Lasta, Jison for online seminaria Bosago Ibuka. आया प्रविधि या विकास उठाउँ या समकालीन अभ्यास त्यसमा याना झिगु नेवा परम्परा तजिलजी अहिले संस्कृति या ऐतिहासिक हात्या या समाधान गर्न विभिन्न समकालीन ज्या आ झिगु न्यने ज्याचंगु अज्यागु अभ्यास ते त झिस हनेगु जकमखुकी ग्लोबल नेपाल या डायस्पोरा लिसे सहल गेना ब्याकेगु
अलि कैना मिलेजिया जी नापा न्ह जागु धैगु ठोस सेमिनार यु objective न ख currently we live in the world where there are numerous new ideas, innovative ideas, and different opinions which coexist in a homogeneous manner. There might be difference of opinion, and there can be various new and innovative ideas to help promote and preserve Newa culture, and there might be some misunderstanding. But what Pasapusa Guthi intends to do is to create a platform to bring all these different ideas, innovative ideas into one place, have a healthy discussion, find a progressive path suitable for everybody, and reduce division if possible. We hope to achieve this by having a mutual understanding, mutual discussion, like seminar as such, and move forward with understanding and respect. आठौं यागु सेमिनार या टाइटल जिसं नेवा परंपरा या संरक्षण व प्रवर्धन या समकालीन अभ्यास or contemporary practices in the preservation of Newa traditions ta kata yudo thau ya seminare Newa tajilajia academics and activists te sang yana chungu samrachan wa sambardariya bare ji sang khala bala ya thana. There are 4 members in our organizing committee, myself, Ojesh Singh, then we have Marilina Frisoni, Sangyukta Shrestha, and Dr. Sachatan Tuladar. There is also an additional moderator, Sandeep Shrestha, who will be working behind the scene, and he will be moderating all the technical aspect of this event today. The going into the seminar itself, the seminar is, let me just share this. Seminar is divided into 3 different sessions. Each session will have 3 presentations, and first session will be chaired by myself, second will be chaired by Marilina Frisoni, and the third and final session will be chaired by Sangyukta Shrestha. And Dr. Sachatan Tuladarju will be moderating all of this. He will be overseeing everything that is going on. So Dr. Sachatan Tuladar is as a supervisor for us, looking after the seminar. Let me quickly go through some house rules. To all the audiences, please keep your mics on mute. And to all the presenters, time is in essence. We have repeatedly said this. Please stick to the given time slot of 15 minutes. There are timing police who will be giving you warnings, and apologize for that already. But please keep your presentation into the time, because we believe that 15 minutes time is the time that one can spare to have a full concentration on your presentation, and we can benefit on all fronts. So in all the presentations, all the sessions, all the presenters will present their presentation first. All 3 will be presented, and then there will be a discussion time for about 10 to 15 minutes. Then that discussion time will be moderated by the session chairs. For example, I will be moderating this discussion on myself, and then there will be a discussion time, and there will be a short break. So let's start the first session. Sangeeta, if you're ready, let's start the first session. The first session will be mainly about Nepal Samvat and the challenges for Newa communities. There are 3 presentations in this session. The first one is Challenges and Importance of Nepal Samvat by Kashinath Tamot. Kashinath Tamot is a very, very well-known and well-respected writer and researcher in the field of Newa and its heritage. I will leave that introduction there, and I will request Kashinath Tamot with his presentation. Thank you. Subha. Kashinath Sangeeta presentation will be making it. Okay.
Any issues, Sanita? Just can you stop the share and you've already given the share, right? Yeah, okay, I'll stop it. There you go. Do you want me to share? Yeah, actually, better if you can share from your one. My one is like a lot of bandwidth being shared. So, do you want me to share? Yeah, please. Okay. Challenges and importance of Nepal Samvat. Challenges and importance of Nepal Can we see? Is that right? Samvat. चुनौती मल्ल शासन अन्त्यद्रिया शाह शासन नेपाल सम्वत 888 निसे सुरु जुसेली नुपी शासक पिस नेपाल मण्डले नापा छुछु जिया वन खनी ढका भाषा वंशावली चोकल अबले या भारदार पिनी लागि वंशावली चोकाटेगु छगु गौरव या विषय जुल अज्यागु वंशावली टगु क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय सफुकुटी ख्यङ्गुडु कुकी मध्ये छगु डेनियल राइट मुन्सी शिवशंकर सिंह व पण्डित गुणानन्द पाखे अनुवार्यका सम्पादन याना ठौं स्वया ख्यौ मथ्यौ सत्य ड ह्य नेपाल सम्वत 997 स पिकाल उकी खोपया जुजु आनन्द मल्ल ज्योतिषिया सल्लाह कथ ये विष्णुमती भटिखु लखु तीर्थ या फी साहित्य कया हसा व फी लु जुइगु ख व उकियाट साख्वाल नाया शूद्र व्यापारी शंखधर याट साफा ढयाटल हजरत सम्पादन यागु इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी हसन संकलन लंडन या वंशावली वगु ख अथे हे थिमी थी भाषा वंशावली ठो बाख साख्वा ढाइमेसिन नेपाल सम्वत न्याकुगु ख वल ठो बाख इतिहास चैपिसन चर्चा यागु याट ठो टसक लोक घट शंखधरिया ठो साख्वा पक्ष या बाख याट नेपाल भाषा मंका खल येन नेपाल सम्वत 1100 निसे 1120 कछला ठो दशमी बुधबार राष्ट्रिय विभूति मान्यता बिल ठुकी खस नेपाली पत्र पत्रिकाए पेखेर आक्रमण जुल सरकार दन्ती कथा या व्यक्ति यात्र मान्यता बिया मकुकु ज्या यात ढका बे जुल आ वल चुनौती शंखधर ऐतिहासिक मनु खला ढैगु ठो चुनौती यात देशेमरु झ्या वापौ या वापौ न हाथ्या रूप काल उकिया संपादक भाजु प्रदीप मान श्रेष्ठ ठगु वापति खोप जेलटवाया अभिलेख नेतना शंखधर यात राष्ट्रिय विभूति घोषणा यागु नियात शंखधर दिवस नाला लुमन्ती ज्याख या मागु खया बुख नेथन अनली वो दिवस मदिक हनेगु ज्या ज्या वया चंगुडु देशेमरु झ्याले जी शंखधरिया ना लाट चया मल्ल इलिया सफटी वगु माला टिकया वो ना वासिष्ठ लैंगोक पुराण सम्वत शंकु दत्त 766 भट्टोट पल रत्नमाला टीका शंखधराब्द सम्वत 830 शंखधरिया बाख लिजेन्ड अफ शंखधर एनिमेशन मूवी टक डेका उकियाट ब बिया चोंगुडु वो अकस्मात वगु धेवा सम्वत हिल ढका शंखधरिया हिचतिया अवमूल्यन येना चोंगुडु गुणिसिन उपन्यास हे चया शंखधर याट न्यक बाख या पात्र डेका अझ औपन्यासिक परिकल्पना याट सार्वजनिकरण याना ठगु परिकल्पना याट तथ्य हिलेट
पुट याना चंगुडु नेपाल भाषा या चोमी पिस किपा फी पाखे लु दैगु खे ब बिया साखा बाख याट सत्य साबित याट पुट याना चंगुडु शंखधर बारे बालक तथ्य मलुगुली ठासे चौपिस वयाट ठगु ठा या ढका डाबी यानाचोन आटक शंखधर याट ठ ठा या ढका ये या मरु सिना मंगल यल सको डाबी यानाचोंगुडु वयाट ढकसिबे नापा ऐतिहासिक वासिष्ठ लैंगोप पुराणे पशुपति देश अर्थात गोले चोम शिव भक्त कृष्णदेव लुमंगपुगु ख शंखधर उर्फ साखा नामे न चुनौती दु वया खास ना शंकु दत्त ढका नेपाल सम्वत 766 या पुराण सफ्टी वल कुकियाट ज्योतिषीय परम्परा नेपाल सम्वत 830 स वा 864 स सफ्टी शंखधराब्द अर्थात शंखधर सम्वत ढका अभिलेखन याट भाषा वैज्ञानिक ल्याख शंकु दत्त या शंखधर व शंकु पाखे लोहपति शंखा व वंशावली साखा जुवंगु यचुपसिडु नेपाल भाषा या पत्र पत्रिकाए हिंदी साखवाल आर्थिक कारोबारे पक्का म पाखे साखा खगो वल जुई ढका साखवाल साखा टाका चन साखा नामे टहाची अथवा विसर्ग टे मागु कारण खनिमरु नेवा टेके नेपाल सम्वत चांद बोलना चंगुडु वास्तवे नेपाले छगु सक विक्रम मानदेव लक्ष्मण नेपाल सम्वत फुक्कसिया चान्द्र सौर निता मंका दिनमान ख नेपाल सम्वत तिथि गते निता छेलेजु नेवाटे छु गते गठे वैशाख 1 गते खाइसलु भाद्र 1 गते किपु बाघ भैरव जात्रा माघ 1 गते घचाकु सलु संस्कृति अभिन्न अंग जुवंगुडु नेवाटे राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर विक्रम सम्वत 1960 वैशाख 1 गते निसे गते प्रणाली छगुयाट नेपाल सम्वत या बहिष्कार टाका चंगुडु वास्तवे वो चंद्र शमशेर या 1718 ड निसे झना वया चंगु तिथि चन्द्रमान प्रणाली याट गते सौरमान प्रणाली युगु ऐतिहासिक पलाख ठो नेपाल सम्वत या बहिष्कार मकु देश मिति प्रणाली छपला नेज्यागु ख नेवा टेस हाक्न सरकारी ज्याख जनस्तरीय बिले तिथि प्रणाली छ ढका दे याट लिजा हूँ ढामजु बरु सरकार विक्रम सम्वत 2022 श्रावण 1 गते निसे प्रणाली या पलिसा मैट्रिक प्रणाली छगु व इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य विक्रम सम्वत त्याग याथे सन अर्थात कमन एरा नालेगु याट हामाल ठुकी नेपाल छेला एशियाई देश अंतर्राष्ट्रीय स्तरे खेनी अले नेपाल सम्वत राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्वत जुइगु लपुचाली नेपाल सम्वत या महीना छेलेगु खैन चुनौती दु नेवा महीना यना नेपाल सम्वत 500 निसे जक खने डट हाक्न ठो नेवा स्वापु डुगु चोज्या ग्रन्थे खास याना खने डट उत्कीर्ण अभिलेखे सामान्यतया संस्कृत महीना यना हे छेली थज्यागु अवस्था अमान्तमान नेपाल सम्वत या संस्कृत नेपाल भाषा पर्याय ना जुई कार्तिक कचला मार्ग ठिला पौष पोहेला माघ शिला फाल्गुन चिल्ला चैत्र चौला वैशाख बचला ज्येष्ठ तचला आषाढ दिल्ला श्रावण गुला भाद्र यौला व आश्विन कौला
दुखया खख मुक नेपाल भाषा खग ढुकुटी थिला व मेवेगु यात मंसिर पुस आदि सलाइगु महिना ढका विक्रम संवत या पूर्णिमान्त मान यात मूल नाला अर्थ बि छला तगुदु नेपाल संवत या ठाउँकने या महिना या नादक विचायना भाषा पद पदावली या अर्थ ब्युगुली गुला यात नेपाल संवत अनुसार 9औं महिना ढका अर्थ छ्याट वास्तवे ठ 10औं महिना ला व उकिया पूर्व रूप गुनी ख नेपाल भाषाए शिला माघ यात मेबेगु महिना नाप जोलाका सिल्ला ढागु याना हगुडु नापा ठुकियात सेला सिला जक ढाइगु ख से ढयागु पुलागु भाषा सेवडी अर्थात छंगु ख नेपाल भाषाए नक्षत्र पाखे सोंगु ना वगुडु पुष्य पाखे पोहेला संस्कृत थे ख तर चित्रा पाखे चेतला फागुन व कृतिका पाखे कटिला कौला संस्कृत या चैत्र व कार्तिक स्वया महिना न्यकया टगुडु नेपाल भाषाए द्योपी इन्द्र पाखे यौला व गुनी अर्थात बुद्ध पाखे गुला ना सुनाट गुडु नेपाल संवत नेपाल देश या सांस्कृतिक संवत जुल भाषा संस्कृत नेपाल भाषा खेले मालेफु नेपाल संवत या अमान्तमान पद्धति बारे न विद्वान पी अलमले जुयाचंगुडु विक्रम संवत या पूर्णिमान्तमान नाप ठो बार झुके जुयाचंगुडु पूर्णिमान्त महिना नेपाली जनजीवन नाप जो मलना चंगुडु गठे शिवय महिना माघ शिला चरे ठुकी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीलाई गुला गा श्रावण कृष्ण त्रयोदशी ये व खोपया पंचदान ठुकी भाद्र कृष्ण त्रयोदशी लाई अठे गुला गा श्रावण कृष्ण या सापारु व मतया भाद्रेलाई यलया जुजु तेज नरसिंह मल्ल खोपे शरण का वंगु मिति भाद्र बढी 13 ढका चोगु बिरे जुल ढका टिप्पणी यागुडु वास्तवे व नेपाल संवत या अमान्तमान छलाख भाषा वंशावली पूर्णिमान्तमान आश्विन बढी 13 ढका चोगु वहे ख नेपाले पूर्णिमान्तमान पद्धति मलोगु टाका नालेमागु ख संस्कृत विश्वविद्यालय या ज्योतिष गुरु तथा वैदिक तिथि पत्र या प्रकाशक प्रमोद वर्धन कौंडिन्यायन नेठंगुडु ठुकुठ सरकारी नेपाल पंचांग निर्णायक समिति अमान्तमान कठ नेपाल या राष्ट्रिय पात्र पिकाल भाषा व नेपाल संवत यात मान्यता बिउगुजुई ठुखे पाखे नेवा राष्ट्रिय अंतरराष्ट्रीय खल पुचते ध्यान वनेमा महत्व नेपाले स्वथी संवत छेलेगुया राष्ट्रिय रूप विक्रम संवत छलाचंगुडु अंतरराष्ट्रीय संबंध या जाखे सन अर्थात कम्युनी एरा छलाचंगुडु भाषा स्थानीय जातीय रूप ठठगु संवत अर्थात लोसार छलावया चंगुडु नेपाल या सरकारी ज्यासले अंग्रेजी पत्राचार न स्वीकार्य जु ठौकने नेपाली तेस स्वथी संवत छेलेमागु अवस्था दु नेपाल या लागि नेपाल संवत राष्ट्रिय ता नाप स्वापुडुगु संवत ख ठुकिया नान दे या ना पाखे वगुडु नेपाले नापा व आ प्रचलित सक लक्ष्मण तथा विक्रम संवत भारत मूल या ख पहाडी हिमाली जाति या थिथि लोसार सांस्कृतिक महत्व लुगु ख ठुकिया झिन्जिरा या चक्र व्यावहारिक द्विफुगु अवस्था मरु
पिड न्येड न्य प्रचलने हगु येले सम्बत व सचिदति न्य निसे तिनी नेपाले छगु बुद्ध सम्बत या ऐतिहासिक आधार मगा ठफुक कारण नेपाल सम्बत नेपाल या सांस्कृतिक सम्बत जुइत बल्लागु दावेदार ख नेपाल सम्बत या सुरुआत छगु विशिष्ट ज्याख जुल लिच्छवी काले जुजुखल बाहेक मेपी सार्थबाह अर्थात् साहु वार्त अर्थात् जागिरदार सामन्त आदि पिस कृति टगुली द्य स्थापना देग डेके हिति पुकु बिहार आदि डेकेगु स्वया पागु जनता या त्यासा पुलाबीगु ज्या शङ्कधर यात वंशावली संकेत या कठ व महाजन ख सार्थबाह अर्थात् तढम व्यापारी ख व छम जुजु खल नाप स्वापु मोडुम सर्वसाधारण ख उकि वया नेसट्या द स्वया अपव डटक नाटक मव घुसट्या ड पाखे वया ख नाया न्यव शङ्का साखा ढका वल व वयाट तिलस्मी बाख या रु पात्र कठ साहित्य कागु खुसिया फि लु जुगु ल्याख हेठने हल न्यागुसान शङ्कधर्य ना वल नेपाल सम्बत 766 स वया खास ना शङ्कु दत्त ढका पशुपति देश अर्थात् गोले 24 लुमङ्के न्य ठिठी नाम ठुइकेगु याट शङ्खधर सुरु यागु सम्बत याट सत्या ड टक सम्बत जक धाल अनली छगु प्रज्ञा पारमिता सफुती नेपाल बत्सर 148 ना तल वल ठयाल्यु सधे या तन्जुर ग्रन्थे नेपाले सु छमेसिन जनता या त्यासा फुला ब्युगु ड 251 अथवा 291 ढका उल्लेख याट शङ्कधर या ज्यायाट लुमङ्कल ना लुमम ठयाल्यु वाराणसी ढगु प्रेट कर्म महार नव सफ्टी नेपाल देशे छेलेगु यागु सम्बत 366 थाल अनली खस देश सेन्जा ल्यगु प्रज्ञा पार मिटाए नेपाल सम्बत छर 478 हेठन ढासा महाचीन या जुजु नेपाले छया हगु परवाना पत्रे महाचिनाब्द थाल क्याम्ब्रिजे डुगु छगु अमरकोश सफ्टी नेपाल सम्बत याट ने गुप्ताब्द अर्थात् ने न रक्षा यागु सम्बत 595 ढका न चयाट गुदु ठौकने भारतीय बंगाल या छगु जिल्ला नापा स्वतन्त्र राज्य कुच बिहार या जुजु प्राण नारायण साके 753 ढका छल नेपाल सम्बत गुस ड न्य निसे अन्तर्राष्ट्र नाजा नेपाल सम्बत 1141 ड न्य सक सम्बत स्वया 801 ड विक्रम सम्बत स्वया 936 ड लिपा सुरुजुगु ल्याख ठुकी सामयिक ज्योतिषीय सुधार जुल ठोहे इले सुमति तन्त्रे भारत उज्जैन याट ज्योतिष गणना आधार डेकेगु पाखे नेपाल या अक्षांश पाखे नेपाल या अक्षांश देशान्तर याट हे आधार डेकेगु सुरु याट सायद नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति पञ्चाङ्ग गणना बिन्दु मरुसत याट ढेका वया चोङ्गु उकियाहे परम्परा खला नेपाल सम्बत सुरु जुसा निसे ऐनाम्स पागु गणना यागु ज्योतिषीय पद्धति सुरु जुल नेपाल सम्बत कठ तछला ज्याफुनी नि डकसिबे टहा नालेगु पोठिला योमरी नप जोला नेपाल सम्बत याट सम्पूर्ण देश नाला काट ठुकिया गौरवमय परम्परा नडु ठो सम्बत डोलन्दो संस्कृत
गो नेपाल भाषा छगु दर्जन अप बङ्गाली निसती मैथिली छुछु तिब्बती हिन्दी नेपाली पुरा वस्तु अर्थात् अभिलेख मध्यकाले छेला टगुडु शुभा challenges and importance of Yoko Suba, Kashinath Tamot Jiata. Chikpinu questions to Dusa. Please write it down on the message board and we will entertain your questions and ask the questions to Kashinath Tamotju later on during the discussion session. So the next one, next presentation we have is regarding towards the practical approach to Nepal Samvat by two very dynamic activists, Supriya Manandhar and Rukshana Kapali. Please be ready with your presentations now. Supriya Manandhar is a dynamic artist, author, and an activist. Similarly, Rukshana Kapali is also an author, blogger, and an activist. Please take it away, Rukshana Kapali and Supriya Manandhar Ju. Subha. Thank you. Thank you. Let me just share my screen. May I please have screen share privileges? So it needs to go to the account with SM, but no photograph or video. Everyone has the screen share right seconds. Okay, so let me just, all right, now I got it. Okay, so I'm just gonna make sure that this is on, and then I will also do this. And it is now full screen, and everyone can view. All right, so I'm just going to begin, and I'm just gonna ask my co-presenter to make sure that mic check is also on and audio is working for her as well. Yes, it is. All right, okay, so I'm going to begin the presentation. Hello, everyone. Thank you very much for attending our presentation today. Today's Nila is Pila 11 of the Solar Nepal Samvat year 1141. So first of all, let us park ourselves mentally sort of on this particular slide. Tradition is not the worship of ashes, but the preservation of fire. This is one of my favorite quotes, and to me, it embodies some important concerns around cultural activism. The Newa civilization has, among other things, its own language, script, culture, its own calendar, but also its own histories of syncretism, change, and survival. And this too, we should be proud of. I'm sure that being able to adapt and carry a living Newa civilization, a living Newa identity into the future is something we all think is important. So as things stand, the Nepal Samvat has been declared a national Samvat, but it is not widespread. It's been 40 years, at least 40 years of Nudan rallies since the Manka Kala began it, and here we are. So why, right? Why isn't the Nepal Samvat widespread? We can speculate on a number of different reasons for this. Some people may say, well, the public just isn't interested in the Nepal Samvat, or maybe people will say that we just don't have enough political will to get people to lobby the parties into getting some kind of state support for this project, right? Or people may say that we just don't have the money to run massive national or international level campaigns to promote the use of Nepal Samvat, and so on and so forth, right? So the list just may go on, so on and so on, et cetera, et cetera. But the fact remains that there are actual hurdles to practicality. Now imagine, like, even if everything on the left side were fulfilled, let's say there was a miracle tomorrow, right? And then you get all the money that you need to run a massive campaign, or all the political parties of Nepal go out on the streets and like, yes, we want Nepal Samvat, we want Nepal Samvat, and they all do this, right? So let's say you have all of the criterion on the left side being fulfilled.
if the hurdles are not ironed out, how many people do you think are actually going to use it? So that's something to think about. Now consider the complexity of the variables involved, right? The various movements of the moon, earth, and sun. Now a tithi is the duration between two phases of the moon, and it does not always coincide with a solar day because of the way that these variables interact with each other. As a very simplistic illustration of this, just to help people understand, here is a row of tithis and a row of solar days. Sometimes one tithi overlaps one day. Okay, fine. But then sometimes, as in the case of tithi 3, it overlaps day 3 and day 4. Or consider how on day 4, you wake up in the morning and it's one tithi, and by the time you go to bed, it's already another tithi. Sometimes a tithi may even be skipped, as over here, where it goes straight from tithi 6 to tithi 8. Now, we looked at 4 actual published Nepal Samvat calendars and counted the days. Nepal Samvat 1130 and 1132 had 384 days each. Nepal Samvat 1135 had 385 days. Nepal Samvat 1139 had 356 days. The Nepal Samvat year may have 12 months, but during Anala years, it will have 13 months. Now, which years are the Anala months? Anala years is confusing by itself, but then there's also the complex matter of where in the Anala year is the Anala month, right? There's also the matter of different intervals between the same date each year. For something like the AD calendar, let's say we have November 29, 2020. So between that date of this year and the next, there will be a consistent span of time. There'll be give or take 1 day for leap years, of course, right? But for the Nepal Samvat, what is it like? It's much more complex. Now, we looked at some of the difficulties in the internal pattern of the Nepal Samvat. And here I just want to emphasize something about the connection between regularity and intuitiveness. Now on the screen, we have a number of different sequences with varying degrees of complexity. Now let's say at the end of this presentation, I call on someone in the audience and I say, what was the sequence that I showed on that one slide, the very first sequence? Everyone will be able to tell me it's 010101. Like, it's simple enough. Everyone will remember, you don't have to look at it again. But the same can't be said for the fourth example over here, which just goes to say that the simpler and regular the sequence, the more likely that people are to remember and internalize it. So regarding the difficulties of the Nepal Samvat, the late K.B. Malla had also stated, and I will just excerpt from this, in order to know the ending moment of a tithi, one has to carry a pocket almanac since it is simply unpredictable. Now, over the years, there have been a number of controversies involving the tithis. So let's look at some examples. Just this year, due to the fact that tithis can overlap 2 days, some people celebrated Mapuja on November the 15th, and some people celebrated on November the 16th. And we all know this, right? This just happened this year. There is also an institution called the Parva Sudhar, which has laid down principles to realign the calendar every 2,000 years to compensate for the fact that astronomical events may no longer coincide with calendar landmarks as time passes. For example, Magh 1 of the Bikram Samvat calendar used to be the winter solstice, but now it's shifted to Pos 6. So according to the Parva Sudhar's calculations, the Mapuja of this year was actually back on October the 17th and not November 15 or 16. So that was their own calculation.
The three cities in the valley also each seem to have their own traditions for calculating various dates for religious activities. So there's the fact about local traditions as well. Now, astrological and religious practices of this nature will continue on the lunar system. And any difficulties such as this over here, they will have to be resolved by experts of those fields. However, the matter goes beyond religious practices and rituals only. Because of all these irregularities in the calendar, consider what this means for daily life. Now let's look at a few examples in terms of practicality. Let's take the issue of disappearing tithis. Let's say you're taking Chaturdasi as a marker date. So you're counting from Chaturdasi of one month to the next, and so on. But then suddenly in one of the months, there is no Chaturdasi. What do you do? Or let's consider you have a fixed deposit in the bank. So in Nepal Samvat 1139, the bank paid you interest for 12 months. But in Nepal Samvat 1140, they have to pay you interest for 13 months. It's a similar story for loans. Let's say you want to take out a 5-year loan of some sort. But in a situation where even detailed predictions of 1 year ahead is so challenging, how are we going to predict 5 years ahead? How would that work out? The system is also unfeasibly complex to integrate into technology. We can't really formulate an agreement on the starting point of the tithis. Consider something like a salary that is paid on a monthly basis if the number of months itself is not consistent across years. So earlier, in one of the past slides, we talked about how tithis can extend over 2 solar days. Let's say you have a court appointment. You have to go to court on a certain tithi, like that's what you've been given. You check the calendar, and the same tithi extends over 2 days. So which day are you supposed to go to court? Or based on the tithi alone, how do you calculate time spans for something like the statute of limitations? So we see all these hurdles in terms of implementing it in the judiciary. So we can see how there are all these obstacles to implementing the Nepal Samvat in our daily life. Having looked at all of these examples, what might be the solution? I have the solution. All right then, well, let's hear it. The solution is a solar version of Nepal Samvat. The Solar Nepal Samvat is based on Earth's revolution around the sun, and it has 365 solar days, or nilya, in a year. A year is divided into 12 months, where the first 5 months have 30 days, the 6th month has 29 days, and the rest 6 months have 31 days. This pattern of number of days makes it easier to remember. The middle month is the leap month that has 30 days in a leap year. For a simplified understanding, a leap year occurs once every 4 years. As it is due to the problems of the lunar Nepal Samvat, people are already relying on other calendars on the site, such as the Vikram Samvat or the AD calendar. This is the reality of today. We can look at the introduction of Solar Nepal Samvat as a way of expanding the reach of Nepal Samvat by adding practicality for daily life. We have two systems, but both of them fall under the same cultural and conceptual umbrella. In this way, the continuity and popularity of Nepal Samvat can be better secured. The problems that Supriya had mentioned earlier can now be resolved. The major issues with Lunar Nepal Samvat were its unpredictability, complexity, which are now resolved by Solar Nepal Samvat, making it ready to be incorporated in government use, banking, judiciary, advanced planning, and technology. The discussion on how to make Nepal Samvat practical has been going on for many years now. In 2008 AD, Nudang Samharo Samiti introduced the practice of replacing tithi names with numerals, as for example, to assign number 1 for the first day of the month, number 2 for the second day of the month, and so on. Some also adopted using Gregorian dates with Nepal Samvat years. For example, January 7, Nepal Samvat 1141.
In 2010 AD article by Shamsundar Rajvangshi suggests that Nepal Samvat had solar calculation in historic times. The same year, Pramod Shrestha had also done some tentative calculation around the Solar Nepal Samvat for readers to study. Lobalal Pradhan also has been publishing articles and posts since 2012, advocating for some form of Solar Nepal Samvat, a solar version of Nepal Samvat as well. In 2015 AD paper, scholar Balgopal Shrestha had suggested that it may be possible to implement Nepal Samvat through a solar calendar. In 2020, we reached out to folks who had published papers, researched, worked in the sector, or who were enthusiastic about the topic. We first reached out through personal inbox messages, and those who consented were added to the email group where discussions over introducing Solar Nepal Samvat took place. While not all had the same response, all included members had access to the discussion. We had also reached out to all major Newa organizations, including Newa Dedavu and Sankhadar Sakha Pratishthan. We had been disseminating information and updates regarding formulation of Solar Nepal Samvat and the campaign through Nepal Samvat Facebook page, Nepal Samvat Chela Bula Puja discussion group, as well as affiliated social media pages with followers in tens of thousands. Looking at some of the many calendars prevalent around the world, there are many cultures around the world who have traditionally used lunar calendar. However, because lunar calendar is not suitable for government and official purposes, and no modern government uses lunar calendar for official work, a solar version of their calendar has been introduced, such as the Hijri calendar or the Islamic calendar introduced its solar version in the year 1354 of its era. Similarly, Bangla calendar also introduced a solar version in its year 1394, while Shaka Samvat also got its solar version from a calendar reform committee of the Indian government in their year 1879. Another example is introduction of Bikram Samvat by Chandra Samsher in 1958 BS. These are 4 instances among many other global examples of calendar system transitions and changes done to keep their own era relevant to modern time and uses. Just as how those other calendars continued their cultural identities when systematizing through introducing a solar version, the Solar Nepal Samvat also gives continuity to the concept of Nepal Samvat. Solar Nepal Samvat is a subset of Nepal Samvat as whole. It is an initiation of a new era. This is affirmed by the name of the calendar itself, the name of the months, beginning the calendar from the year 1141 and commemorating the initiation of Nepal Samvat. Regarding 20 October 879 AD as the starting point of Nepal Samvat, it's important to note that Rukshana, calendar... Supriya, I would like you to let you know you've got you have almost finished your time, so please wrap up. Thank you. Regarding 20 October 879 AD as the starting point of Nepal Samvat, it's important to note that the AD calendar itself switched from Julian to Gregorian in 1582. Using 20 October as a marker, we are paying tribute to Nepal Samvat establishment event, even if the referenced AD calendar itself has switched from one system to another. It is important to note that using the date of commencement does not mean Solar Nepal Samvat New Year is 20 October. It only means the day coincides with 20 October. The Solar Nepal Samvat New Year is Kathala 1. Since our campaign has generated significant discourse around Nepal Samvat, beyond platitudes, people are revisiting technicalities of the calendar, revisiting the calculations. People who know about Nepal Samvat also know that it's not widely used. However, not all are aware of why that is the case. Our campaign has helped people to become aware of what the underlying obstacles to implement Nepal Samvat are. Nepal Samvat has been a topic discussed mainly by Newa seniors. However, in the wake of our campaign, we can see a large number of youths are now engaged in the discussion which had never been seen before. All of these positive changes have occurred in a mere handful weeks that this campaign took off. So just imagine what greater momentum it can achieve in coming days and months to come. For further information, please visit www.nepalsamvat.org. Thank you very much. Supriya. Thank you very much, Supriya Rukshana Ju and Supriya Manandhar Ju.
Please keep your questions for the discussion session. We will ask you questions. The next presentation will be done by the final and the last presentation of this session is by Dr. Mahesh Man Shrestha, and his presentation is titled Challenges in the Existence of Newa. So I will quickly share the video. Can we all विदेशे चुनान नेपाल देशे आदिवासी नेवाटे सुटा कासे थोतोजी युके यात युक्को सुबे नेपाया आदिवासी नेवाट तेत अनेक कथया थिथि हाथ्या वे जंगदो सुसु हाथ्या त अन्यवेतेना नापांगु हाथ्या ख फास्ट ट्रैक के नाम किरात कालीन संस्कृति व सभ्यता खना वो भुंग दे सरकार ध्वस्त याते मुदो निगुगु हाथ्या सडक विस्तारिय नामे आदिवासी नेवाटे त पुर्खौं पुर्खा निसे चोना चोंगु ठास विस्थापित यान चोंगुदो सोंगुगु हाथ्या पशुपति क्षेत्र विकास नाम लिच्छवी कालीन बस्ती गोलो वो चावैया आदिवासी नेवाटे थाना छ्वेटे मुदो पेंगुगु हाथ्या आउटर रिंग रोड वो पेंगु नु शहर देखेगु नाम सुनि गए 2 लाख रुपैयाँ कृषि भूमि खुल्ला ठ्या फुक स्वाहा याटे मुदो न्यागुगु हाथ्या सोनिगले टोनिगु लमरो खुगुगु हाथ्या सरकार गुठी विधेयक खया आदिवासी नेवाटे गुठी फुक सिधे केट सोइचुन नेगुगु हाथ्या आदिवासी नेवाटे मामा नेपाल भाषा सिन च्यागुगु हाथ्या आदिवासी नेवा जाति है सिन तिपि च्यागु हाथ्या मध्ये 15 मिनेट या दुने सोंगुटी हाथ्या बारे खल्याटेना दक्ले नपा आदिवासी नेवाते अस्तित्व मडे चंगु बारे खल्या जीगु मने यसदनिफो जाति धेगु मडे वनि यला सिनवनि यला संसारे यक्को जाति मडे वनि ढुंगला नेपालले न अल्पसंख्यक जाति त धमाधम मडे वन चंगुदो आ चाहिँ राजनीतिक कारण याना आदिवासी नेवा जाति मडे वनि चंगुदो नेवाते त आदिवासी छाडाउ सोनिगले दक्ले नपावया सोंगवपि नेवाते हेख नपाए कला कौशल जागो वैभवशाली विश्व विख्यात समृद्ध सांस्कृतिक नगर सोनिग देकुपि नेवाते हेख अथे जुगली नेवाते त सोनिग आदिवासी थाई आदिवासी नेवाते ल्या गुलिदु नेपालले आदिवासी नेवाटे ल्या अथे 15-16 लाख दिदो सोनिकले धासा नेवाट 7-8 लाख दिदो आदिवासी नेवाट धेबी सो आदिवासी नेवाट मूल रूपमा किरात परिवार या नेपाल जाति खदै उकी मिएपु सापु साक्य ठकुरी लिच्छवी मल्ल व मैथिल त लग जान चंगुदो सकले नेवा जुइ ढुंकला सोनिगले आदिवासी नेवाट अल्पमते लाउन चंगु खला ख जी छगु तथ्याङ्क बि थौसिबे निए नेरति य अथिरिउ सन् 1963 पाके सोनिगले आदिवासी नेवाट 50% सिबे चाहिँ उपदो थौसिबे गुरन्य अथिरिउ सन् 2011 पाके जनगणना कामले सोनिगले आदिवासी नेवाट 23% क्वावे ढुंकला थोरे नेवाट छ अल्पमतेला ठुकिया मुख कारण ख आप्रवासन सरकार पिनिया पिनि मनुट यक्कु यक्कु दुकै बिला सोनिगले जनसंख्या 50-60 लाख थिने ढुंकला सोनिगले जनसंख्या उपोजी ढुंकला सोनिगले टोनी उल्ला मरो डीप बोरिंग याना ल बिया चंगुदो
डीप बोरिंग या कारण सोनी गए जमीन कमजोर जुजो होना चंगुदो भूगर्भ बीते अनुसंधान कथा लाजिम पाट लागा 2 इंच भाषे दी रुंकला डीप बोरिंग या लन नि छक या बी मफु च्यानी छक 1 घण्टा बी उन हिने मफु चाने 12 बजे न ल्याफु उन ल या पुलिस फे वेफु ढ वेफु मिलम चे ल हसा सोनी गया त मगा ढुंकला तर सरकार या न सोनी गया चुटाडु न आदिवासी नेवाटे चुटाडु सोनीले 1 करोड जनसंख्या ठेंक्यु मेगा सिटी देखिउ योजना कथा सरकार न्याउन चंगुदु सोनी गया भूभाग ढिगो नेपालिया जम्मा 0.6% भूभाग जक ख ठुली भूभाग नेपालिया 30% सिमे उपमनुट के हेट्यंगुदो सोनी गढेगु नेगु विश्व सम्पदा दुगु प्राचीन सभ्यता व सांस्कृतिक नगर ख फिकिया संरक्षण यागु दायित्व सरकार या ख तर सरकार दायित्व कै जंगु मरु नेपाया तकले उब्जाउ कृषि भूमि सोनी गए ख आउटर रिङ रोडिया नाम हनो 72,000 रोपनी कृषि भूमि केंगु नुगु सहरिया नाम हनो 1,30,000 रोपनी कृषि भूमि सरकार नष्ट याट्यंगुदो सोनीगले स्वच्छ फेया लागि मडेको मगागु खुल्ला ठ्या टक्कु सखाप याट्यंगुदो कंक्रीट या जंगल देख चंगुदो सोनीग उप भीड़ भार जुइगो प्रदूषित फोहर सहरे हिलाउन चंगुदो प्राचीन सभ्यता विश्व सम्पदा सांस्कृतिक सम्पदा सत्ता संकटे ल्या ढुंकला थुकिया देह सरकार हनो विकास दै चंगुदो आप्रवासन आदिवासी नेवा जाति या छुली चोला सरकार तिनी यापी मनु दुके फक्कु सोनीगले दुके चंगुदो सरकारी योजना सोनीगले 1 करोड मनु टटे हेउ ख सरकारी अथवा गलत नीति याना सोनीग नरक थेंजुल सोनीग या आदिवासी नेवा त झन्झन अल्प मटे लाउन सोनीगले कोर सिटी पिनी या स्थानीय सरकार गैर नेवा त से कब्जे या रुंगला कोर सिटी दुनिया सिथे न गैर नेवा त से हेट्या के रुंगला नेवा त अल्प मटे लाउ लिसे कोर सिटी दुने न गैर नेवा त से स्थानीय सरकार कब्जे या चंगुदो सोनीग या जनसंख्या 1 करोड थिनिबले आदिवासी नेवा त 60-8% कुवावे चंगुदो अले ढासा केन्द्र व प्रदेश को मको स्थानीय सत्ता न आदिवासी नेवा त पुंके विस्थापित जुई आदिवासी नेवा त प्रशासन विस्थापित भूमि विस्थापित भाषा विस्थापित गुठी विस्थापित लजगान विस्थापित स्थानीय सत्ता तक न विस्थापित जुई चंगुदो जिरो निरिया खख आदिवासी नेवा त सोनीगल तनाउने चंगुदो मनाउने चंगुदो मरे होने चंगुदो आदिवासी नेवा त मरे होने चंगु लागि मरेका छ्वेट्यौ राज्य सत्ता आप्रवासन तत्वेका चौहे आदिवासी नेवा त झन अल्प मटे लागि त ख सोनीगल विस्थापित या त ख आदिवासी नेवा जाति नंका छ्वेट ख छोछको कठया जातीय हत्या ख भाषा पाइमको राजनीतिक दल त सत्ता यहाँका चोपी राजनीतिक दल त नेपाली कांग्रेस एमाले माओवादी जातिवादी नस्लवादी ब्राह्मणवादी ख आदिवासी नेवा जातीय हत्यारा ख आदिवासी नेवाटे अस्तित्व बचाइया फैटिनला सोनीगय नेवाटे से झिपी आदिवासी नेवा ख ढापट ढासा सोनीग झिमिगु आदिभूमि ख ढापट ढासा थन झिमिगु अनुमति मगासे सरकार जेगते यादैमको ढापट ढासा संविधान बेटगु स्वायत्त क्षेत्रीय अधिकार क्यापट ढासा आदिवासी आदिभूमि झिउ आदिभूमि सोनीग बचाइया फैटिनी आदिवासी नेवा जाति न बचाइया फैटिनी ठुली ढ्या फेकेट
सोनी गए आदिवासी नेवा त छप्पन दुई फ्याके मानी सोनी गए आदिवासी नेवा त छप्पन दुई फ्याके मानी अहिले विदेशी जोपी नेवा त से जिन्द तिब बि मानी अलि न्यङ्कय नेवा त छप्पन दुईया धनी फट रास आदिवासी नेवा ते अस्तित्व मके फैतिनी आजि मेगो हाथिया विषयले वन्टेन मेगु हाथिया धिगु नेवा भए या बारे ख आदिवासी नेवा ते मा भए नेपाल भाषा ख नेपाल भाषा सिच्यौमुरु चिकपी पट्या जुला बुद्ध धर्म या पवित्र महान ग्रन्थ त्रिपिटक पाली भाषा चैताउ ख थौ पाली भाषी रुङ्ला समृद्ध साहित्य दुगो अले वेद न चैताउ संस्कृत भाषा ख संस्कृत भए थौ सी रुङ्ला ल्याटिन भए थौ सी रुङ्ला नेपालले न अल्पसंख्यक जाति नभएको भ्याट धमाधम सिनाउन चोङ्गो भ्याडेको सिनाउनिया चिकित्सा जुका निफो नेपाल भाषा सितेङ्गुया प्रमाण छुदो नि छौ प्रमाण दि थौसिबे नि नेर दिन्यो अथि जो सन् 1963 पाके जुगु क्षेत्रपाती टोले 99% नेवाटे छे नेवा भाषा खलायु ख थौ 99% नेवाटे छे मस्त नाप खे भाषा खलायु जुइरुङ्ला मस्त नेवा भए मस नेवा तसे नेवा भाषा खम्मलाटकी नेवा भए सिनावनिउ ख अन्युको प्रमाण जिथा क्लिनिके उइपी ल्याम ल्यासित से नेवा भए ठु तर नेवा भाषा रिसर्च बि मफु इमेको लागि नेपाल भाषा 50% सित इमेको लागि नेपाल भाषा 100% या सिरुङ्ला नेपाल खौया नेवा मस्ते है कन्या नेवा त ख कन्या नेवा त नेवा भए मसपी जुइत्यङ्गुदो नेवा त से नेवा भए मसलकी नेवा भए सिनाउनिउ ख जिग निरया खख नेवा भए सित्यङ्गुदो नेवा भए सिटकी छुजी जि नेवा ते धर्म संस्कृति नस्ल छौया मगो जिगु मनका साझा पहिचान देउ छौजगुदु वख नेपाल भाषा नेवा ढका मसिकेगु मुख्य पहिचान नेवा भएख नेपाल भाषा मन्त्रीकी जिगु मनका पहिचान मु पहिचान सिनाउनिउ ख जि नेवा ते स्वामा हथे हनटौ सुका नेपाल भाषा ख नेपाल भाषा मन्त्रीकी सुका चबुगु स्वामा थे जुइगु ख अले सुका चबुटकी स्वामा दैमुक्त जी पहिचान मोडुम मनु ठेन्जी जी नेवाटे लागि महाकवि सिद्धदास अमात्य दैदिगु प्याछिख भाषा मुआसा जाति मोय नेवा भए सिटिकी नेवा जाति सिनाउनी नेवा भए सिट्यौं लागि स्याट्यौं जिउ मने निसा दनवे निसो निएर न्य पृथ्वीनारायण शाहनो नेपाल भाषा स्यागो अभियान न्याकल राणा शासक तसे थुकियाद निरन्तरता बिल चन्द्र शमशेरला अड्डा अदालते नेवा भए छेले मरु यान बिल राणा शासक तसे नेपाल भाषा साहित्य चोइबिन्त सर्वस्व हरण व आम अति आजन्म कै टक्न चाहिँ यात नेपाल भाषा या विद्वान जोगली है शुक्रराज जोशी या फाँसी बिल फौसीबे खुइरन्यो अथेरि सन् 1960 पाके पञ्चायती शासन होला पञ्चायती शासक तसेन नेपाल भाषा स्यागो अभियान याद निरन्तरता बिल भने कुठी नेपाल भाषा भने मरेका बिल फौसीबे स्वीकृतिन्यो अथेरि सन् 1989 पाके बहुदलीय प्रजातन्त्र होला भाषिक समानता दैगु जुल भने कुठी नेवा भए भने खनिगु जुल ढका झि नेवा त लेले चाहिउ ख बहुदलीय प्रजातन्त्रीय व्यवस्था न
पृथ्वीनारायण शाह नेपाल भाषा स्यागो अभियान यात निरन्तरता बिल झिसँग विश्वास यानको राजनीतिक दल त नेपाली कांग्रेस एमाले ओ माओवादी नेपाल भाषा यात मूल्यतया गकिल पृथ्वीनारायण शाह राणा शासन पञ्चायती शासन बहुदलीय प्रजातन्त्र सक्ले वहे मुलु वहे सोका जुया छोन सक्ले हे नेपाल भाषा या हत्यारा जुया बिल नेपाल भाषा सिट्योङु मको स्याट्योङु ख आ नेपाल भाषा मके फैतिनला झिन्यवा तसे कुटो याउ खसा मके फैतिनी झिस थ मस्त नापो नेवा भाषा खल्यागु या फटो ढासा मके फैतिनी डाक्टर शान्त वीर थ मस्ते त नेपाल भाषा हस्तान्तरण या त शान्त वीर या छे वेग लन्डने जुसन शान्त वीर या छे नेपाल भाषा स्वा होला झि नेवा त सक्ष्या थ मस्त नब नेवा भाषा खल्यागु या फटो ढासा नेपाल भाषा या स्वा होइतिनी नेपाल भाषा मोइतिनी सुनिगले चोपी आदिवासी नेवा त से पुनि कुठी नेपाल भाषा भंकेगु व्यवस्था याके फटो ढासा नेपाल भाषा मके फैतिनी नेपाल भाषा बोलेगु आदिवासी नेवा मस्ते अधिकार ख बाल अधिकार ख प्रजातान्त्रिक अधिकार ख जी आदिवासी नेवा त से थगु अधिकार क्यागु खस नेपाल भाषा मके फैतिनी नेपाल भाषा मके फटो ढासा जी आदिवासी नेवा त मंका पहिचान मु पहिचान नेपाल भाषा मके फैतिनी आदिवासी नेवा जाति मके फैतिनी आजि सुंगु हथिया बारे छुङखल्या नेपाया फास्ट ट्र्याक 12 जिल्ला या निजगढ हो यलो जिल्ला या खोनादी स्वाइगु मोटर याल ख फास्ट ट्र्याक सुरु जुइगु पॉइंट या त 0.5 ख 0. खोना टेट्योङगु 0. खोना तलगी थो खोना जख या लगा तरंगु बस्ती चो होइतिनी सरकारी आउटर रिंग रोड ठनहे वयु ख सरकारी नोगु शहर ठने देखिउ ख मेमेगु तडरंगु सरकारी योजना त ठने वेट्योङगु सोनिगले दक्ले उपदली जीगु कृषि भूमि खोना हे ख खोना बचा कृषि भूमि ल्याउँदनी हे कृषि भूमि आयस्ता थनिया सांस्कृतिक जात्रा पर्व न्याका चोङ ख खोना प्रसिद्ध सिकाली दिएगडु भुङ्गे लोकौ वागु भुङ्गड्याडु सिकाली वो भुङ्गड्या न्युगली लिच्छवी काली खोना दिएगु सम्पदाय धलके ल्याट्योङगु ठ्याख 0. थनतलगी थनिया कृषि भूमि फुक कंक्रीट या जंगल जुइगु ख थन सोनिगा पिने यापि लाखौं मनुट चो होइतिनी जात्रा पर्व गुठी न्याकिट मागु आस्ता मरिया फ्लो संस्कृति ननावनी उख भुलिया याना चोपी किसान तय लजगा मरि वनी उख सांस्कृतिक खोना वो भुङ्गडे संकटे लाइगु ख खोना वो भुङ्गया आदिवासी नेवा त संकटे लाइगु ख थनिया आदिवासी नेवा त विस्थापित ज्यावनी उख आदिवासी नेवा त विस्थापित जुलकी थनिया प्राचीन संस्कृति सभ्यता फुक ननवनी ख खोने जनताय माग छु खोने जनताय माग ख 0. खोना महु खोनाया दक्षिण पाखे चोङु फसी डोले तेयंकी देउ मागेन चोङु तर सरकार ढासा खोना हे 0.2 खोना वो भुङ्गडे ध्वस्त यागु जिति अन चोङु खोने जनता सुसोइ चोङले जनसरोकार खोने जनता जनसरोकार समिति देका खोनाया खोना भुङ्गे आदिवासी नेवाते संगठित याना संघर्ष यान जोंगुदो ओनो निनु न्यातिनी 0. या ता धलानिया वला बिमको धलानिया को जिमतन धलानियान छोटका धलानिया गर्टु वन हाथे दु वन ठेकेदार सेना धलान दिगल बहादुर खोनाया जनता याद सलाम खोनाया जनता
जी सक्सिके गोहाली फना चोंगुदु जिसं खोने या जनता इद या फुगु गोहाली या सुबह जिता थुली नवागु मौका बिया दिल पासपुत गुठी युकी या द अंडा छक सुबह जिछे सुबह Yakir Kusava, G. Mahesh Man, Dr. Mahesh Man Shrestha. You are discussion session Suzudu. Wekoya lagi G. Songway presentation ya presented ta. G. Kashinath Tamot ju, Rukshana Kapali ju, Supriya Manandhar ju, wo Dr. Mahesh Man ju ya ta ready jita inapianjana. Ale jita to question answers discussion session support yata help yata Dr. Sachetan Tuladharju or Marilina Frisoni to help yata inapianjana as you to discussion jiachomble ji Nepal Samvat discussion jiachomble ji thana ji Bhagwan Das Manandhar samana jahedi gudu wekaya guna chau ekdam interesting point do daga jahedi gudu wekaya ta thogu point minimum time 2 to 3 minutes maximum 5 minutes at data in Apyanjana. Bhagwan Dasu. Azur, Jazalapa. Jazalapa. Two slides this are shared and this, huh? 5 minutes when you could two discussions quickly. To do skin onion this, to skin onion this. Okay, two dream out. To choose any Guthi seminary to the Kotia Dasala, Ju slide G tie. Kala. Azur. Oh, a slide walla? More slide. Azur. Two slide share and this, huh? Azur. Zula share Zula walla? Wait on to J. Surya Yandisa. Nepal Basa Times, November 9-11, Sunun Yankataka, Pidongo Chosuya, leaders Nepal Samvat Titia coding or decoding patra. G. Prada Bhagwan Das Manandhar, Daibage Kriti Madan Joshi, Pova Sami, or Dr. Binod Sami, Nesati Kodi Nonguma Pitona Guzula. To Nepal Samvat Timila Patroka, to Raste Maulik Samvatka. नेपामी टेसा जनजीवने व्यवहार छेला वया चंगुटु तर सरकार धासा सरकारी जाखा मछानी ठुकिया हुनिखा नेपाल सम्बन्ध द दुछिया नील्या छसी खेर एसेन्डिङ अर्डर कम्प्युटर प्रणाली दुछाय ठाकु ठोय ठौया मु समस्या का उके एसेन्डिङ अर्डर द दुछिया नील्या दुठ्याके जीका नेसति कोडी सूत्र पते लगे या नगुजुला जिमिसा पिठनागु सूत्र कठ सूर्य पात्र इस्वी सम्बन्ध व्यापार सरकारी ऑफिस है औपिग छेले जी जिला ढयागु जिमिगु ढापुखा अठे नेसति कोडी सूत्र कठ तिथि गठे छेले अठे चुएगु गठे चोला अठे छेले जुई ठुकी तिथि या सूत्रता काम याई ढयागुना ढापुखा ठो ड दुने अनला अधिक मास या 32.5 ला छका वइगु नला या 6 मास 19 ड निसे 140 ड दुने वयो अले हाना अपि अनला नला न्यागन ला दुने दठुइ लाउने फु अथे नील्यान थन सोइदिसा पारु द्वितीय तृतीय टन चतुर्थी बोला अथे ना थन तृतीय डोरे जुला द्वादशी थन जने जुला हाना जने गुले चाहिँ छवे दिले चाहिँ न्यू तिथि एकादशी द्वादशी लाओइ चौ थन क्लिप खण्डटा अथे जुसाना ठोस सूत्र छेला अपिक ठाकु मजिक नि मटंक ड दुचिया नील्या एसेन्डिङ अदरे चुए जुगु जुया चुना इस्पी सम्बत विक्रम सम्बत छेला वया चुनाको जुगुली सूर्य ज्यामछि थे जुसाना नेपाल सम्बत छेले जी का छे बानी जुला जुसा आप अपिया बने गति के जिस मोटरसाइकल गए मसातले गुलिना ठाकु गुली ट्याङरा पुली फु तर गएस कि नगा मोटरसाइकल गए गुली अपु अले गुली नेपिसे छ आठो जिसा इस्पी सम्बत चोइला 2020 ठौए दिन चोय माला 2020 थन जुला अनतु नोभेम्बर 11 अले 29 ध्या थन जिसा च ठौए दित चोल लाथे अठे ना च छुट चाहिँ नेसति कोडी अनुसार कोडिङ चोइला यार से 41 अले ठोक कसला रेबले 1 महिना जुला 1 अनतु थन चाहिँ 1 ठोप 25 जुला अनतु ठौ चाहिँ
चतुर्दशी याना चाहिँ 14 अले कमा 1 याना चाहिँ थो चाहिँ छोरा छ म आइतबार खर या चाहिँ केनि फै अल ठोनेसटी कोडिङमा चाहिँ हरेक दिन चाहिँ छन् जिप्स याङु आखना चाहिँ कोट चेयर तरिका न केन तया अले थो कोडा चाहिँ झिसा चाहिँ ढोक छि छसी खेर चुइबला चाहिँ मिले मजु जुल डिकोडिङ ए किमा डिकोडिङ ए गिबला चाहिँ थो वर्ष दे पेंग डिजिट अले महिने त न्यागा डिजिट अले चाहिँ डी नि ल्याइ त चाहिँ पेंग डिजिट न केनिमा ओके मध्ये ठाउँ यु डी यु चाहिँ टिटी धामा लासा जसै या चाहिँ 41 थो चाहिँ डल्या जुल अनु तो मन्थ्यु चाहिँ न्यागा आखा मध्ये न्यन्चो निगा आखा न चाहिँ 112 तक ठो चाहिँ महिना यो लाक्नी अले सो बिच चौ निगा शून्य चाहिँ ठो डिजिट चाहिँ ठो अनला वल्ला छ 3 नला वल्ला छ 4 याना चाहिँ केनी अले लास्ट चौ चाहिँ 6 अंक चाहिँ ठो चाहिँ ठो ठोप पछि छ 1 गा पछि छ 2 या चाहिँ केनी अले डी नि ल्या पाखे चाहिँ पेंगा आखा मध्ये न्यन्चो निगा आखा न चाहिँ ठो 1:15 तक चाहिँ ठोपछि डिकेनी अथवा गापछि डिकेनी दाला अले नाप 6 शून्य बिच जो शून्य चाहिँ यदि टिटी डोरा जो लास ठुट 9 अंक चोया केनी गुयाई अले लास्ट जो डिजिट चाहिँ ठो चाहिँ 12 केनी 1:7 तक केनी अले ठो चाहिँ झिस डिकोडिङ चाहिँ नेपाल सम्बत यार से 41 यार से 40 या अनला दुठ्यागो पनि अठाएना यार से 3 या नला अनला दुगो ठो दो दुचिया चाहिँ डेट भरेन एक्सेल चाहिँ तया एसेन्डिङ अर्डर चाहिँ ठीक जो रह्यो चाहिँ प्रमाण याना सोइट्याङ गुजुल विक्रम सम्वत 1960 न्यवा नेपाल सम्वत सम्वत छलाया वे चंगो ख नेपाल सम्वत राष्ट्रिय सम्वत ढका 12 द न्य सरकारी मान्यता बि ढुंगुगु दु अठे जोगुली 69 कोटी सूत्र कठ नेपाल सम्वत छिकपिस छिकपि बिके बिटन्टेसन छेला ठुके मगागु मसागु दुसा सुजा बियादि त इनापयाना सरकार छेले चाहे जुल ढासा तुरन्त नेपाल सम्बन्ध व्यवहार अफिस छेले जिल सरकारी अफिस व्यापार छेले त सकस्या ग्वाली जुल ढासा याकन राष्ट्रिय सम्बन्ध कठ छेला वने फै ढका भल सकया जी तयार दु सकस्या ग्वाली फनचना सुबा धन्यवाद यको सुबा जी भगवान दास जी त Vandas ji, choose. Suba. Stop sharing. Stop this, sir. Kaka, Suba. Thank you very much again. Now we will start the discussion session. Marilena, could you please help me find one question from the discussion to ask any of the presenters? Yeah, I have already okay. one question there. Yeah, okay, so I can read. So this is from Vijay Bajachari. I think I guess it's for Rukshana and who else? Okay, Supriya. And solar-based calendars should have anchor point by which at least a particular day should mean a special position or phase of the sun. What's such significant date the NS Solar has apart from 28th October proposed as the first day of the year? Thank you very much. So I'm going to try and answer this question, and if there's anything remaining, my co-presenter will chip in. Okay. So, the first thing I want to say is the whole point behind the Solar Nepal Samvat initiative is that we need something for practical use, right? It's not that we need some kind of calendar device for cultural significance or for some kind of religious significance, right? What I mean by that is we already have the lunar Nepal Samvat that is aligned with certain astronomical events along which certain ritual practices take place. So we already have a cultural calendar. Now, other societies in the world, when they came up with solar calendars, usually what they did was, like, let's say equinox or solstice and so on. They would say, let's begin the new year at the solstice, or let's begin the new year at some equinox, or so on, right? And they would begin their own traditions in that way. Now, the thing is, we don't really have the need to begin this kind of a cultural milieu because we already have a cultural calendar. What we don't have is a calendar
an indigenous calendar for practical usage. And that is the whole point behind it. Another point I want to say is, even though I said all of that, that doesn't necessarily mean that there is no correlation between the solar-oriented movements of the Earth and the calendar. Let me try to explain this. So one other point is October 20 is the day that coincides with the beginning of the solar new year. But the beginning of the solar new year is Kosala 1, right? So it's just that it coincides. We're not saying that October 20 is our new year. We're saying that our new year, Kosala 1, coincides with October 20. Because it is a solar synced calendar, the equinoxes and the solstices will eventually sync with some date in the solar calendar as well, and it will be repeated throughout. It's just that it's not the first day of the month or the middle of the month or the exact center of the year or so on, right? So that is something that I would like to clarify. We're not anchoring specific dates as such, but by virtue of it being a solar calendar, the astronomical events will coincide with certain dates every year. And our priority is continuing or paying tribute to the Nepal Samvat, and that's why we're using October 20 as a commemoration date. And in our presentation as well, we mentioned that other points of continuity are, we're taking the names of the month, we're beginning not from year 1, but from the year 1141 and so on, right? Thank you very much, Supriya. I think we'll have to go on to the next one. I think this is a very short time we have for discussion left. I'm sorry to interrupt you, Supriya, but I'll have to go for another question. And I think we will exchange emails, and we will pass on your website and stuff to all the attendees so they can have further discussion about this. Marilina, can you please ask next question on this one? Yes, there is another question on this topic by Pramod Shrestha. And the question is, what is the start date in solar calendar? 20th October 879 is Julian, and the corresponding date is 24th of October in Gregorian. So leap year every 4 years is Julian aspect. If we follow it, it will be an error. So there has been an exchange in the chat between Pramodji and Rukshanaji. I was wondering whether you could explain this to the public. All right, just to help me explain this further, may I please share the screen on one of the slides that I showed? I'm going to do that really quick, okay? Yeah. So I'm just going to pull up this, and then I am going to make sure that I have the correct slide visible. I've got this. Sorry, just give me a few seconds. I'm going to go into present mode, and then I'm going to go here. And then, okay, there we go. All right, so back to this particular slide. So the 20 October date that we take as the initiation point of the Nepal Samvat, first of all, this is something that has had community consensus and acceptance for 132 years, right? So that was when this date was first identified. And when that took place, the Julian AD calendar was in use. Now in 1582 AD, the AD calendar itself switched from Julian to Gregorian. Now what Pramodju is saying, what I understand is that this 20th October is incorrect because we are now in Gregorian. Well, the thing I want to emphasize is, what does this word commemoration mean, right? For example, let's say I was born on August 5, 1581, when the Julian calendar was in use. And then we fast forward to 1583, when would I celebrate my birthday? It would be on August 5. I wouldn't do the calculation. So it's like, it's an idea of historically commemorating a certain date. And I want to emphasize that that's what we're doing rather than counting backwards. The other thing is to insinuate that it's October the 24th, 879 would in a way be historically inaccurate, because in 879 AD, there was no Gregorian calendar. So I hope that answers the question. Okay, thank you very much, Supriya, for this again. The last question for this session, can Dr. Sachetan Tuladarju ask? And then we'll... Two questions I Mahesh Man Shrestha. To iPhone harga dara jo weka chai sukha chai thana naam usila. Pashi raidila Newa bashit ki Newa jati sinauni
नेवा भाषिना उंगुकी सिया त्यंगु ख सियाना यंगुको ख तर नेवा भा मुका यंकीको जिम्मा झिगु नुगु पुस्तायगु लाते थिएन छिछु कमेन्ट कि हाना फोटो यान्दिकी Dr. Mahesh Manju. Okay, so maybe questions. Dr. Sachitandu, I think we'll have to go on to the next session. Okay, so Tadula. Okay. Tadula. Ale Sachitanji chu yasasaka चाहिँ हानसका रेडिसला को चाहिँ कमेन्ट्सको खमा रक्छु कमेन्ट चाहिँ को चाहिँ थाना छुएलको जि क्वा भन्न पाछि ल नेवा भाषित कि नेवा जाति सिनाउनी नेवा भाषि सिनाउँ कि स्याट्यंगु ख स्यानेंगु ख तर नेवा भा मकै इंकीको जिम्मा छिगु नुगु पुस्तायगु लाते थिएन छु कमेन्ट एदिमाने चाहिँ झिसा चाहिँ नुगु पुस्ताय त जिउ चाहिँ भा हस्तान्तरण चाहिँ यानबी मल मको झिसा हस्तान्तरण यान मोबिलर गारल्ला स वो नुगु पुस्ताला नेवा भाषा मक्ट अले वो कारण याना चाहिँ लिपाई पिनेवा र नेवा भाषा मक्ट एदिमाने चाहिँ नेवा भाषिना पनि अले भा मरे उनकी चाहिँ असुका मरुगु स्वामा थे दिया जी नेवा जातिन छाल बिछाल जवनी नेवा जातिन ननाउनी दैउ ख सुबा Thank you very much, Dr. Mahesh Manju. Thank you very much for all the presenters of this session. Kashinath Tamot Ju, Rukshana Kapali Ju, Supriya Manandhar Ju, and Dr. Mahesh Man Shrestha Ju once again. And thank you very much for all the audiences for asking the question and having the patience of not getting the answers just yet. We will arrange something to get all the questions answered by your presenters. For now, I think we will move on to the second session for the seminar. The session chair for the second session is Marilina Fridsone. Marilina, Suri Asanjila. I'm actually very excited to be chairing this second panel, in which we will have a chance to hear from young Newars who are not only promoting but also innovating their culture through the use of new technologies, and also by fostering intergenerational transmission of knowledge, narratives, and skills. Juna America, Tau Sibe, Nyadanya, Sos Vidyarthi Pinapa Jona, Sos Newar language, Nepal Basa Dagu, Sanstaya Sonagoka. Ale Ublina Shipasa Puchagutia, Duja Pinapa Jona, Madika, Ne Pushitonka, Nepal Basa wo Newa Tajilajia Kele, Tameshia Fugu Chaguja Yana Boya Chonagudu. I'm not that fluent in Nepal Basa, so please forgive me if I will continue in English now. Being an anthropologist myself and having been involved in a project of language revitalization with the Newa community of Pasapuchaguti members in London, and having collaborated with Ojesh Singh to the production of a series of introductory videos to Nepal Basa, I'm especially eager to learn from the experience of presenters in this panel who have been working on similar projects in Nepal. The first presenter of this session is Sunita Dangol. Welcome, Sunita. Sunita is a media professional, a public speaker and trainer, and more recently, she has been part of the Kali Jatra movement, a youth group from Nepal promoting Ranjana script and Nepal Lipi through the organization of open workshops. During the lockdown, Sunita has been running a series of enjoyable Nepal Basa classes, which I've also attended. And with her team, they have been producing new educational material for the study of Nepal Basa. Today, she will be presenting on promoting Ranjana script through mobile app and Kali Jatra workshop. So time is very tight, so please forgive me if I will interrupt you at some point, giving a warning of 3 minutes before the end. Without further ado, Sunita, the floor is yours.
Yakukusuba, thank you so much. The screen share yani. Screen khanidula. Okay. जसले सकेपछि त जी टाइमर नथे अहिले टाइम ए ठ्याक्कै जी के नभएदी जिगना चाहिँ सुनिता डंगोल ख जी चाहिँ क्यालिजाता टिम त थौ रिप्रेजेन्ट याना चाहिँ प्रमोटिङ रञ्जना एन्ड नेपाल लिपि थ्रु मोबाइल एप एन्ड क्यालिजाता वर्कशप त्यो टपिक चाहिँ नवाते लगदो जिसा चाहिँ क्यालिजात्रा टीमा चाहिँ थी मोडालिटीले चाहिँ ज्यान चोंदु रञ्जना लिपि वर्कशप अथवा चाहिँ राइटिङ नेम्स लाइभ क्यालिग्राफी विदाउट चाहिँ था सेवना मनुते ना चाहिँ रञ्जना लिपि चोया दिगु अथवा लिपि गफ तका लिपि टक नयाना अथवा लिपि नखन नेपाल लिपि गुठी नाप जाना चाहिँ जिसा रञ्जना लिपि प्रमोसन लागि ज्यान जुल अथवा क्यालिजात्रा आइडिया चाहिँ गेना पपअप जुल अलि ज्या गेना सूर्याना दासी जिपी चाहिँ खास नेपाल लिपि गुठी नेपाल लिपि रञ्जना लिपि सेन्यु लागि चाहिँ अनवन ख अलि अनुवन ढुङ्गा थपिन्छ सेकी ढुङ्गा चाहिँ थै बालागु ख छा चाहिँ थिस मेपिन त नमदा मेपिन त नछा म सेन्यु ददा चाहिँ विचावला अलि वे जुले चाहिँ टिपिकल क्लासरुम स्टाइल याद ल्याउ चाहिँ एकदम लिमिटेड आछु जुया चाहिँ लिजको जु तर वेसिना क्लासरुम ब्यारियर सेना पिने वना पब्लिकली वना चाहिँ जिस ज्याजो याद ल्याउ अझ यही थिए चुना चाहिँ छौ न्यू एक्सपेरिमेन्टल वर्कशप डेमोन्स्ट्रेसन्स त याना अलि मनते त चाहिँ आख एकदमै तस्क यगु अलि खै बालागु खचे जिन्छ गब्ले मस्युदा थिए फिडब्याक त वेदुका चाहिँ रञ्जना लिपि वर्कशप युपति कन्सेप्ट डेभलप जिल्ला अथवा दक्षिण आपा चाहिँ 2075 रञ्जना लिपि वर्कशप वन स्पन्टेनियस एकदम प्लान याना वर्कशप याद स्ट्रक्चर दिएको मकु कि अबले चाहिँ वर्कशप लागि प्रपोजल होला तर वर्कशप जिमसँग चाहिँ छौ स्पेस अन चाहिँ रञ्जना लिपि डेमोन्स्ट्रेट याद चाहिँ बिचा यानो तर वेकअप इन्छ चाहिँ टिपिकल वर्कशप आख सेन्युए दगा चाहिँ ठेका दिनुका चाहिँ जिसा चाहिँ लिचिन्यु मको का जिउ दगा धाउ दगा चाहिँ वर्कशप एना स्टार्ट जुख अहिले फर्स्ट वर्कशप निमा नियामा पास वे दुका वेकअप इन उपति एनर्जी वेकअप इन फिडब्याक वखन दुका चाहिँ त कुस्या आ गब्ले जी गना जी जिपि हाना वे कि म वे दगा चाहिँ यो कुस्या क्वेशन ने स याद दुका चाहिँ अथवा वर्कशप त कन्टिन्यू या मानि दगा यानि यो खोजिला अलि नाप्पो चाहिँ रञ्जना लिपि वर्कशप वितुम्बाले यादुङ्गा नेपाल लिपि गुठी अथवा क्यालिजात्रा टिम चाहिँ नाप्प जाना था चाहिँ वना चाहिँ रञ्जना लिपि वर्कशप्स त याना अलि वो यानो बोले चाहिँ जिस लिमिटेड रिसोर्सेस वना एकदमै भोलिन्टरी दक्को भोलिन्टरीले पार्टिसिपेट ज्या ज्ञान चन जुल अझ दक्को कस्टिङ त स्पेशली ट्राभल कस्ट फोन कस्ट वो दक्को जिन्सै बियर ज्ञान चन जुल तर अयो इले चाहिँ जी दक्को थासे वन लाइमको प्रोफेसनली दक्ष थ ज्यादु तर थु इले न जिस लोकल पार्टनर्स त देखि फतलाउ चाहिँ लोकल पार्टनर नाप ज्यातलाउ चाहिँ अझ इफेक्टिभ जिफ दैदा चाहिँ लोकल पार्टनर्स नाप मिले ज्या चाहिँ जिन्स था चाहिँ रञ्जना लिपि वर्कशप्स त याना अलि वो नलेज ग्याप दु थासे चाहिँ जिन्स फिलिया वो चाहिँ ज्या कि ज्या न याना अलि गुलियोको वर्कशप्स तयार त उले योको मतिना उले योको मनते यो बाल फिडब्याक उले योको मनु त नाप्लाय अलि उले योको मनते खाले चाहिँ जिन्स चाहिँ स्माइल स्प्रेडिङ स्माइल्स वो थीमे न जिपि चाहिँ वना छादा सिधोको मन त वर्कशप वे दुका चाहिँ फर्स्ट डे अफ स्कुल वनो बोले दक्षिण आपा कख गग चाहिँ सेको थिए जुल गयो मचा बोले खतलु मन दगा थाइदले चाहिँ वर्कशप न रञ्जना लिपि न सेना चौजुल नाप चाइल्डहुड मेमोरिज त रिकल जु बोले चाहिँ मन्तेसँग अझ वो आँखा नाप चाहिँ अट्याचमेन्ट जु न खन्त त अलि जिन्स रञ्जना लिपि वर्कशप चाहिँ पिठासे योको थासे चाहिँ रञ्जना लिपि वर्कशप्स त याद नगदो अथेना लाइभ राइटिङ नेम्स इभेन्ट दगा चाहिँ नाचोइबिउ अलि मस्ते मिसे न्याम्म न वे अन न्याम्म वसा जिन्स चाहिँ छौ मतिनाइ ची कथा चाहिँ नात चोया बेगो वो चाहिँ 60+ क्यालिग्राफी वो चाहिँ 60+ थासे चाहिँ जिम्स क्यालिग्राफी इभेन्ट न याद नगदो अथेना रञ्जना लिपि वर्कशप्स यानौ थायु नादाइ बोले इतुम्बाल सुजु ख ये ल खोप अथेना नेपाल मण्डल चाहिँ पिनेन वना चाहिँ पोखरा लमजुङ अथेना इलाम नुवाकोट थासे चाहिँ मन बुझुला
अहिले इन्टरनेसनली चाहिँ फर्स्ट टाइम जुन छ 2019 नै ATIPI 2019 बोधाउ चाहिँ टाइपोग्राफी आखयुबारी एजुकेसन आखदेखि पि आखयुबारी चाहिँ झिथे याना चाहिँ एक्टिभिजम मोना चोपी मनो त एजुकेटर्स इति को चाहिँ छौ थासे वया चाहिँ डिस्कसन यापति प्लेटफर्म को अहिले अन चाहिँ जिन्स डाइभर्सिटी फन्ड दि त्याकी दुंगा चाहिँ टोकेले वना एटाइपाले भाकाया अहिले अनुवना चाहिँ भाकायो बले चाहिँ दुनिना जिन्स लाइभ क्यालिग्राफी डेमोन्स्ट्रेसन याना नाप पिने चाहिँ वो इभेन्ट से पिने न वर्कशॉप्स याना अहिले मेउदा चाहिँ भर्चुअल वर्कशॉप्स नै याना अथे याना वो चाहिँ वर्कशॉप्स जुल अहिले मेउदा चाहिँ नेपाली लिपि रञ्जना लिपि टाइप मेवा धका चाहिँ लिपि एप दिएको गुजुल मेगुदाको चाहिँ एनिमेटेड ट्युटोरियल्स भिडियोज अहिले वो चाहिँ एन्ड्रोइड आइओएस न्यूले जुइपति एप अथे याना ट्युटोरियल भिडियोज तना दिएको नेपाली लिपि रञ्जना लिपि टाइप नेवा धगा एप यो नादु वो चाहिँ डिसेम्बर 2017 चाहिँ नेवा युनिकोड एन्ड्रोइड 9 रिलिज मजु बले थो चाहिँ यानो क वो चाहिँ छादासी नेपाली लिपि योको मन्ते त छेली मास व तर मिडियम चुन माध्यम मरु जोडी चाहिँ सो अल्टरनेट आइडिया थो जुइ पई आखय कपी या मफुसा चाहिँ मन्ते स इमेज रूपमा मेसेन्जर इन्स्टाग्राम भाइबर सोशल मिडिया ले चाहिँ वेकअप हुन्छ पोस्ट या खनी धगा नेपाली लिपि न सूर्यना लिपा चाहिँ रञ्जना लिपि न उके इन्क्लुड याना अले उके चाहिँ टेक्स्ट न तको चिगो याउ अले जवे खवे गन्तेउ ख रङ न थय इच्छा अनुसार चाहिँ चेन्ज या पई 2017 ने एन्ड्रोइड एप लन्च खदा चाहिँ 2019 चाहिँ आइओएस न लन्च ल अले आ चिक्पी मध्ये गुलिसिया चाहिँ इन्स्टल याना न दिगुजी गुलिसी त चाहिँ मसुना जुथो चाहिँ एकदमै प्ले स्टोर एप स्टोर मिथा दु चिक्पिन्छ डाउनलोड याना न छेला दि पई अथुके फीचर्स त न बचा बचा दानी थुके चाहिँ नेवा स्टिकर्स त देखे पै अझ बालक इन्टरेक्टिभ अझ नेपुलाई चाहिँ स्टिकर्स त न छिपिन्छ छेला दि पै अथे याना ई कार्ड्स ग्रीटिंग्स त न देखा दि पै अले ब्याकग्राउन्ड चाहिँ थयु या खाते हो थये कि पाते हो खसा वना याना दि पै छिपिन्छ थय लाइब्रेरी न फोटोज त दि पै ब्याकग्राउन्ड अले ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज या टेक्स्ट कलर चेन्ज या अथे याना नेपाली लिपि या खके रञ्जना लिपि या ख वना छिपिन्छ याना दि पै अले थुके चाहिँ लिपि जग्गा मको कि भिडियो ट्युटोरियल्स व ब्लग यु लागि न थादु छुन नेपाल भाषा लिपि यु लागि चाहिँ अयो कन्टेन्ट प्रोडक्सन जु खसा चाहिँ केएमबी मा जुन चाहिँ एप यु थ्रु ए वन जी कना याना 2017 चाहिँ जुन छ एप नाप नेपाल लिपि एनिमेटेड ट्युटोरियल्स मा जुन छ लन्च याना वो चाहिँ छिक्याली जात्रा टिम मेम्बर मध्ये वान अफ द लीड आनन्द कुमार महर्जन अथयाना अश्लेषा महर्जन वेकअप इन देखा दिएको ख युट्युब अन लिंक नदु अथयाना 2020 चाहिँ लकडाउन टाइम द पछि चुनचुनो टाइम चाहिँ रञ्जना लिपि एनिमेटेड ट्युटोरियल न आनन्द कुमार महर्जन वेकन है देखा दिगुदु छिन्छ युट्युब स्वाति पै अथयाना आथो एप चाहिँ देखियो कन्सेप्ट्स त वला देखि ढुङ्गा चाहिँ सुसु कन्ट्रिब्युटर खदाइले चाहिँ एन्ड्रोइड चाहिँ पवन राजा महर्जन अथयाना आइओएस आइफोन चाहिँ सुयोग्य रत्न ताम्राकार वेकन देखा दिगु ख अलि त ओभरअल डिजाइन अथयाना कन्सेप्ट चाहिँ आनन्द कुमार महर्जन यु खदासी फन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फन्ट मरेको छुन जिमखु केनी फन्ट यु लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युट याना दिउ नेपाली लिपि गुठी पाखे रविन्द्र पाछे वेकन नेपाली लिपि अथयाना रञ्जना लिपि चाहिँ नेपाली लिपि गुठी पाखे समीर कर्मचारी अथयाना देवनागरी चाहिँ आनन्द कुमार महर्जन वेकन देखा दिगु ख अलि यही पुगो स्टिकर्स त न दु विज्ञान प्रजापति वेकन बौचा व मैचा स्टिकर्स देखा दिगु ख आनन्द कुमार महर्जन योम भाजु अथयाना भाजु मेजु अश्लेषा महर्जन मैचा व बौचा बुकेश महर्जन इन्टुमिन्टु अबको क्रिएसन अथयाना नेवा स्टिकर्स आनन्द कुमार महर्जन अलि रञ्जना स्टिकर्स मा आनन्द कुमार महर्जन अथयाना शङ्खदरी स्टिकर्स चाहिँ संयुक्त श्रेष्ठ वेकअप इन कन्ट्रिब्युट याना दिएको दु अलि मेगु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट दाउ चाहिँ आखयो प्रमोसन यु लागि मा दाउ चाहिँ कीबोर्ड्स यु न छुखा लाग्यो चाहिँ नेवा युनिकोड प्रपोजल चाहिँ 2012 जुल 2016 चाहिँ नेवा युनिकोड एन्ड्रोइड 9 प्लस निस्किने चाहिँ होला तर अबले चाहिँ वला धगा अप्रुभल ला जुल तर अप्रुभल जुसान चाहिँ फन्ट मरु जोले चाहिँ 2018 तिनी बल्ल गुगल चाहिँ फन्ट देकला
अलि वो 2016 वा 2018 यो बिचे चाहिँ मन्तेसा युनिकोडे वसा फन्ट मरुनी चाहिँ छेलीला मखन अलि वो ग्यापे चाहिँ झिसना छ केनोपति रञ्जना लिपि नेपाल लिपि टाइप नेवा एप वो एप यो चाहिँ ठ्याक्क ज्या चाहिँ गबे जुल राछि 2016 से 2018 अब्लिक फन्ट मवो टाइने चाहिँ त्यो एप यो चाहिँ एकदमै युजफुल जुल मन्तेसा चुए मखसा वो छेली खन एज अ पोस्टर एज अ फोटो वेकअप इन छ युज न याकन अलि नोटु सान्नेवा धका चाहिँ ज्याकरी सर्चम बेकना चाहिँ देखा दिगु ख मोनोटाइप टीम अथेना वो देखि बले आखा बाला क्यु लागिन स्पेशली टीम कोअर्डिनेसन चाहिँ आनन्द कुमार मर्जन बेकना प यो कोही याना दिगु ख अलि आखै बारे अझ जिम समस्यु खत चाहिँ नेपाल लिपि गुठी अलि जीपीसी सिनियर वेकअप इना पन सहल याना चाहिँ आखा अझ बेटर अझ बाला क्यु चाहिँ ज्याज अथेना 2018 चाहिँ क्वार्टी कीबोर्ड ला वला अलि वदुका चाहिँ आनन्द कुमार मर्जन है नेवा कीबोर्ड चाहिँ म्याक अथेना बकमन यो प्रति कीबोर्ड न देखा दिला एन्ड्रोइड कीम्यान लागि अलि 2019 सन्तोष प्रधान वेकन न कीबोर्ड देखा दिला अझ बालाको अझ डिक्सनरी त एड याना अलि 2018 यो म्याक कीबोर्ड आनन्द कुमार मर्जन देखा दियो चाहिँ छिपिन्छ स्क्रिन स्वादी फै अलि 2020 ले चाहिँ एन्ड्रोइड नेवा कीबोर्ड दका सुजिन जोशी वेकना देखा दिला क्याली जात्रा टिम मकुसा वेकना यान दिगु ज्या चाहिँ तस्कै बाला गुनी त्यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ फिचर याना गुख तर त्यो 2020 ले आइओएस न नेवा कीबोर्ड बोला वो चाहिँ सुयोगी रत्न ताम्राकार क्याली जात्रा टिम है देखा दिगु ख सो थ्यांक यू योकेको सुबह सुयोगी रत्न ताम्राकार लादिन अथेना 2019 चाहिँ नेवा अनलाइन नेवा कीबोर्ड न बोला Sorry, you have a couple of Hello? हजुर You have a couple of minutes left. Quick warning. Okay. To wrap up. अलि त्यो चाहिँ सिक्पिन्छ मेन चाहिँ आज छ लुमङ्कीमा आउँदा चाहिँ कन्भर्टर न वेद हुँला नेपाल लिपि चाहिँ देवनागरी न चाहिँ नेपाल लिपि चाहिँ कन्भर्ट या ज्यू त्यो कन्भर्टर न वेद हुँला ओके मन त्यो त चाहिँ थई वेबसाइट यु कन्टेन्ट त न कन्भर्ट या त थाको मजु त्यो एप न नेपाल लिपि लन्च हुँला नापा सर्वे या नबले चाहिँ यो को मन त्यसो नेपाल लिपि थई मोबाइल खने मधु धका गाइदिल तर वो नम्बर चाहिँ इन्क्रिज या चंगो दु छादा चाहिँ आ मन त्यसो चाहिँ मन त्यो जिम स क्याली जाजा पेज थ्रु न यो को मन त्यो चाहिँ गेना छेली धका चाहिँ इन्फर्मेसन त दिया छ अलि कन्टेन्ट प्रोडक्सन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट ख गुगल डक एना यान दिफै फिल्मले यान दिफै अथवा फोटोपिया गेम अलि थो चाहिँ छु न्यूज कभर ख जुन स क्याली जात्रा यान चुनको जाइ त चाहिँ कभर यान त चाहिँ काठमाडौँ पोस्ट फ्रन्ट पेज वो क वन अफ आवर अचिभमेन्ट अथवा पेन्डेमिक टाइम चाहिँ भर्चुअल वर्कशॉप्स पनि याना 10+ वर्कशॉप्स अथवा 25+ live sessions अथवा 1 minute tutorial sessions चाहिँ 50+ episodes याना So this is all about Kali Jatra. Ali thinai jinsa चाहिँ यो झिसा फु जति चाहिँ ज्याम छ नकुतो अलि कन्टेन्ट प्रोडक्सन यो लागि चाहिँ सिक्किन्छ न नेपाली पिछला चाहिँ इलाका छ नासुला Thank you, Sunita ji. Thank you so much for your presentation. We'll go straight into next presentation. I will introduce the presenter. She's Alina Tamrakar. She's Alina, you there? Welcome. Yes, I am. Thank Welcome. you. Thank you She's so an much. architect and an heritage and photography enthusiast. And after 2015 earthquake, the field of heritage conservation became really her major interest. And she's currently a consultant architect at the UNESCO office in Kathmandu, working on the documentation and restoration of heritage structures affected by the earthquake in 2015. More recently, she has developed a strong interest also in the preservation of Newa intangible heritage, and she has been working with her team called Bakanya Newa. So come listen to stories. And her presentation will focus precisely on this topic. Alina ji, the floor is yours. Thank you. Thank you so much. So is my screen visible? Yes, it is. Okay. जो लोपा थन जाइदिपि सकसित जी चाहिँ थो थौठो गुठी सेमिनार on contemporary practices in the preservation of Newa tradition to online seminar चाहिँ बखने नेवा यो बारे छु खते दु ले चाहिँ जी एकदम लेता न छ न so
First of all, जी चाहिँ language medium चाहिँ नि जी नेपाल भाषा अहिले बजा English न mix याना चाहिँ तो presentation यहाँ किटे नहुदु दगले नापा बाखनेनिवा रका दाउ छु रका त्यामल दासा चाहिँ चिउ थो नानोय दाइ बाखनेनिवा रका दाउ चाहिँ come listen to stories दगा दाउ ख अहिले तो चाहिँ नि गेना छु गे गथे रका त्यामल दासा oral storytelling बाखनेनि कनि या रका दाइपति चाहिँ नि चिउ तो नेवा अमूर्त सम्पदायुपट्टि छौ नापानिसे छौ पार्ट ख अहिले ठो चाहिँ वो बाखन्यन्यु छौ एन्टरटेनमेन्ट अथवा नेपुसे चोम्क्यु नेपु छौ पार्ट जको मजुसे चाहिँ मेठो चाहिँ छौ पुस्ता मे पुस्ताले चाहिँ नि छिउपट्टि थो तजिलजी अहिले छिउपट्टि संस्कृति नापान्से यान्चनगुपट्टि ठिठी किस्मुपट्टि जु नखच खय बारे चाहिँ नि ठुके बारे खकन्युपट्टि छौ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टुल न ख अहिले आठो छिउपट्टि थो एकदम रिच कल्चर छिउपट्टि फेस्टिभल्स मोन्युमेन्ट्स थाबा युना तो दोको दै चाहिँ नि थुके पनि बारे चाहिँ नि त्यो जुन छिउ त कनाचौपट्टि बाखपि त मिथ्स एन्ड लेजेन्ड्स हाइ छुके त चाहिँ उके चाहिँ एकदमै दुनियापट्टि खपि थो झिसा छायान्चनो उठके ल्युनेपट्टि लजिक्स बि देखि लिएर त्यो चाहिँ नापान्से छाया माउ ख दै छि चाहिँ ठोए बाखले लुके बाखै माध्यम चाहिँ छि त हस्तान्तरण जुयावै चौंदु ठो चाहिँ ठु बाह नेने कने ज्या जोल चाहिँ छुन जुइ दगा ड्याबले छिउपट्टि तो कल्चर हेरिटेज जु लागि चाहिँ प्रिजर्भेसन लागि न के छौ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभ्यान चौंदु जुन चाहिँ छिस सिकौ म सिकौ वो छिउपट्टि ठो अयु डिटेलले छिस छुन चीज नखच कपि हन्युदेखि लिएर द को चीज पि छिउ आर्किटेक्चर छिउ आर्ट छिउपट्टि नेउटोन्युपट्टि कल्चरे सोसान हरेक चीज चाहिँ वो एकदमै माइन्युट डिटेलिङ्स पि जुन दु वो चाहिँ बाह कन्यु अथवा थो नखच खय बारे थो मिथ्स एन्ड लेजेन्ड उके थ्रुन चाहिँ छित डेलिभर जचौँदै वो चाहिँ तर आयुक्ति प्रेजेन्ट सिनारियोले स्वेउ खसा नापा जिएन लुम अल्थन दिपी योको छि पार्टिसिपेन्ट्स पिन्तन याद देमा छि चाहिँ नापा लेजर टाइमे अथवा नख भले न छुन चीज चाहिँ नि छिप्ति थयो इन्ट्रेस्टिङ खालको प्याटर्न दै चौँदै अलिक यो बारे थुगे गथेरका कन्युपट्टि चीज पि चाहिँ नापा झिउपट्टि अजिबाजा पिसँग कना चौँ चाहिँ जिदय आफै न यादु जब नख भले एकदम वो नियन्यु भले नख भले बाजा पिसँग कन्यु धैला दयरु तर वो बाहेक न छि लेजर टाइम न चनले चाहिँ वो बाखनिन क्यु बाखले चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ चीज पि दैपट्टि चाहिँ जिदय लुम तर आयुटी जेनेरेसन आयु टाइमे जि जुए छेन्दुपी मस्त किजापी केपी सेव खस चाहिँ नि टेक्नोलोजी अलि छिउपट्टि लाइफस्टाइल न चेन्ज आउँ उके ना चाहिँ नि ठो बाह नेने कन्युपट्टि कल्चर चाहिँ भचा कम ज्याउ अथवा मरे ढुङ्गुथे खण्डै वइ चौँदु सो तो बाख नेनवा गादा छि जुम छ इभेन्ट ख वो इभेन्ट हाउ जिम सँग गे गादा छिन तो गेना स्टार्ट जुल अलि तो छुकर गादा त चाहिँ थो 72 साल भूकम्प भखा वयोपट्टि टाइमे वन माले जी अलि उब्ले चाहिँ नि जब भखा बया योको सांस्कृतिक सम्पदा पि चाहिँ नि डिस्ट्रोय जुल वे टाइमे चाहिँ नि झिउ मरुसत छुके चाहिँ नि तो झिउपट्टि काठमाडौँ युपट्टि थायुपट्टि नानो वे काष्ठमण्डप ताउपट्टि थाहा छ वो दाइपट्टि जुन दु इम्पोर्टेन्ट वो स्ट्रक्चर युपट्टि चाहिँ नि पुनर्निर्माण युपट्टि ज्या झोले चाहिँ वो के झिलाइ जुका झोले चाहिँ नि क्याम्पेन टु रिबिल्ड काष्ठमण्डप ताउ छौ पुचल चाहिँ नि जिमसँग क्याम्पेनिङ चाहिँ नि जिन छम पार्ट अठे चाहिँ जितेनी आपने लाइक माइन्डेड मोनु पास्मी चाहिँ नि ठुके मुना चाहिँ जिबि थो क्याम्पेनिङ लगे जा चनाबले चाहिँ नि जिमसँग तो जिल्ला टेक्निकल पर्सन आर्किटेक्ट अठे एना मेपी पास्पिन अठे टेक्निकल पास्पिन चाहिँ जिमसँग चाहिँ ठो तो काष्ठमण्डप युपट्टि डकुमेन्टेसन या झोले चाहिँ नि ट्यान्जिबल दाइची नापी नक्सा वला दयदु तर वो नापना चाहिँ नि intangible heritage दसा के tangible व intangible मिगु मिक्स या जु ख ओकेपट्टि डकुमेन्टेसन या क्रममा चाहिँ नि काष्ठमण्डप सँग स्वापुदुपट्टि गुठी अलि काष्ठमण्डप नाप रिलेटेड चाहिँ स्टोरीज पि ओरल स्टोरीज पि छुचुदुहरुका कलेक्टिभपट्टि झोले चाहिँ खास्तो छौ छौ इभेन्टै याना छु गुठीसँग सम्बन्धित ख अने वना चाहिँ नि वे कपिनि वे मुटु चाहिँ वे कमिन सँग याना चौपट्टि बाखपि अथवा
अयपट्टि बाखौपि कलेक्टिभ हिसाब चाहिँ थो बाखने निवा डाउपट्टि सुरु जु ख थो इभेन्ट चाहिँ अलि लिपायु फेजे वना चाहिँ ने काष्ट मण्डप जको मखु आ चाहिँ तो नेपाल मण्डलले झिउपट्टि छौ मोन्युमेन्ट जको मखु झिउला थ्या बायुना जात्रा अले नेउपट्टि कल्चर हरेक यो ल्याउने चाहिँ बाखदै वे बाखन चाहिँ ठो चिसा यान चोनोपट्टि चिज पिन्त चाहिँ लजिक ब्याचौँदै छायामाउ अले उ छायामाउहरुगा सिल्किटिनी लिपायु पुस्ता चाहिँ नि यामाउ चिज खनिहरुगा न्यने इन्क्यु जुली चाहिँ लिपा वया चाहिँ वाइडर पर्सपेक्टिभ चाहिँ नेपाल मण्डली उपति थे ठिटी किसिमु बाख कलेक्टिभहरुगा चाहिँ न्यने वना चोनौजु ल अले वयाना भले चाहिँ छौ कोर टिम न जिमसा उब्ले क्याम्पेन टु रिबिल्ड कास्ट मण्डपे लगे जुपिए पासपि चाहिँ नेले पाहन मेसो पुचा देका चाहिँ जिपि सेकेन्ड सिजन निसे चाहिँ एक कार्यक्रम पिन्याका चोनौजु ल आठो छाया मालले सा बाखने न आठो इभेन्ट चाहिँ छा इम्पोर्टेन्ट लगा द्याबले चाहिँ नि नाचन द्याडुन जी झिउपट्टि ठो जुन झिउ सम्पदा झिउ संस्कृति झिउपट्टि ट्रेडिसन नेवा ट्रेडिसन उकेपट्टि बारे चाहिँ नि झिस छायान चनो छुन छि झिस नख जग हनो छा हनो अलि वो नख धाउ छुख नख जको एक्जाम्पल काया अलि वो गेना या दै छि चाहिँ ओ बाखयु माध्यम चाहिँ उके त छौ पुस्ता मे पुस्ता हस्तान्तरण या निम्ति अलि ठो बाखपि चाहिँ नि बिस्तारी इफ वी स्टप टकिङ अबाउट इट झिस अब खला बला से यान वन किट के बारे ठुए मठुसा चाहिँ उलिपा तनाउने हिसाबमा चाहिँ उके चाहिँ कलेक्ट याना छौ डकुमेन्ट याना चाहिँ छौ आर्काइभिङ याना न अडियो भिजुअल फर्म चाहिँ नि तैते हिसाबमा न तो या जरुरी जुल अले आ मस्त आयुपट्टि नेक्स्ट जेनेरेसन है ठो चाहिँ नि चिपटी तो चिपटी जुन ट्रेडिसन ख उके न्यने इन्क्यु ख अलि उके निम्ति चाहिँ मस्तेसँग छु भाषा थ्री उके भाषा चाहिँ नि चिस वेक अप इन द बीमा सो दैट दे कैन टेक इट ताइ हिसाबमा चाहिँ नि बाखदै चाहिँ थौ थौ माध्यम ख उके चाहिँ हरेक एज ग्रुप पिन चाहिँ नि उके चाहिँ अट्र्याक्ट उके चाहिँ थ्री के त अफ युजुअली चाहिँ ठो बाखने निउपट्टि न थौ एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि ठो मिडियम ख अलि आथेना छौ चाहिँ चिज सुजुदा सिन छुन था किसिमपट्टि आज भी था चाहिँ होना बाख नेनेवार गाए अलि अठियाबले चाहिँ नि अन्यपट्टि बाख जब अने चोपी लोकल अने चोपी मोनुटेसन कनिबले चाहिँ एथो जिमो थायोपट्टि थ इम्पोर्टेन्ट खनि थोला पिन है मतलब पिन मको दको मनु त वया न्यन चौडु थन चौ बिजको मको पिन चोपी मनु त न वया न्यन चौडु जिमुपट्टि थाइबले चाहिँ नि छौ सेन्स अफ ओनरशिप छौ सेन्स अफ इम्पोर्टेन्स ज्यान उके न पचा प्रिजर्भेसन लागि चाहिँ नि एन्करेज जाइरहु न छौ खोजुल जिमु इभेन्ट यो बारे खलामल दास चाहिँ जिमसँग दखले नाप्न चाहिँ छौ थीम डिसाइड है थीम चाहिँ नि आ छिबजिला यो कोइ चीज पिदु थाबा नाचन दा थाबा युना जात्रा अले फूड कल्चर अले चिपटी देगपी सम्माने नापी जपिनु बारे न बाख पिदु सो अयो लागि चाहिँ पहिला सुरु थीम डिसाइड आट अलि थीम अनुसार चाहिँ छुटासे वन्यु ढका डिसाइड आट वो ढुङ्गाले पछि वो ठायु लागि चाहिँ रिसर्च आटा सुना चाहिँ कन्यु अनि पि सुपी मनु त अनि पि मनु ते चाहिँ न्याना चाहिँ नि वेक अप पिनु पति चाहिँ छौ स्टोरी टेलर रेकग्नाइज याना अलि वो ढुङ्गाले पा चाहिँ नि अनिवे जुन छिउपटिला आर्किटेक्चर न छि एकदमै रिच अलि वे थासे चाहिँ जिउटी मौलिक जुन सेटिङ दु बाहा बही दबु जस्तै थो पिक्चरै सोय दिस थो चाहिँ न किफुयुपटि क्वाचो ढाउपटि थासे चना चाहिँ नि न्याबा विन्टर यो टाइममा न्याबा पाना चाहिँ नि एकदम मजा बाखने न्युपटि छिउपटि सेटिङै अठि दुसो अयुपटि चुज याना अलि ल्याङ्ग्वेज हिसाब न बाखौ पनामी पिन त छु ल्याङ्ग्वेज कम्फर्टेबल जु उके चाहिँ लाइभ सेसन याना चाहिँ जिमसँग यहाँका चनौदु अलि ज्याजो इभेन्ट पि म्यानेजरहरुले चाहिँ जिपि कम्प्लिटली भलन्टरी ग्रुप ख जिमु टिम मेम्बर्स पिन जिमसँग दकिसा भलन्टरीली टाइम अलि दको म्यानेजरपटि यान्छनो ख अलि वो बाहेको अन्था माइक पि अलि सुकु पि लाउ अलि चावो बिस्किट पि बेसिक रिफ्रेशमेन्ट यो लागि चाहिँ अनिउपटि लोकल वार्ड क्लब अर्गनाइजेसन पिनाप चाहिँ जिमसँग स्वापुतै चनौजु ल उके याना चाहिँ छौ सुजी धाग्यो त जिमु इभेन्ट ख ओनरशिप न यो लागि न वो इम्पोर्टेन्ट मको अन यदि मरु ढका ढास चाहिँ जिमसँग जिमु हिसाबमा चाहिँ अय चीज भी चाहिँ म्यानेज याना होइ चनबु ख वो ढुङ्गालिपा चाहिँ जब झिके चाहिँ बाख पनामी न रेडी जुइ ढुङ्की अब ढुङ्गालिपा बाख थरथरे ख ठोटो टाइम या गाजिपि फाइनल जुइगा चाहिँ जिसमा सोशल मिडिया थ्रु न चाहिँ डिटेल्स पे अनाउन्स याना चाहिँ द क्वेस्ट चाहिँ बाख नियन्त इनाप चाहिँ अठना याउजी
वो ढुङ्गाली पा चाहिँ चिन अपन बाह निने भले गेना चाहिँ म बाजा अजी अथवा गुर्जे ता बाह नि पियाले चाहिँ गेना वो गुरुकुल सेटअप पे बाह कनामी चाहिँ न्याउने चना अल्दो कुकुए चना चाहिँ बाह निन्यु अब यो किसिम सेटिङ ए चाहिँ जिम सयान चनहरु अलि ठोय के चाहिँ नि चिप्टी चिस ट्रेडिसनल हिसाब चाहिँ सुकुन्डा चाका चाहिँ छुन बाला भि जासुरिया न्या चाहिँ सुकुन्डा चाका जाय यही अठेना चाहिँ जिमुन जाजो सुरुजी अलि बाहपा इने गुन छ इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पार्ट अफ आवर तो बाह नेनेवा ख जुन चाहिँ सुरुले बाह कनामी न्याने चिस सुकुन्डा चाका अलि बाहपा पनि मुसासिया चाहिँ न्याने तेउजी अलि बडुङकाली पा चाहिँ बाहङ पनि सिरेका चाहिँ दोखम बाहपा इन्युजी बाहपा चाहिँ नापा नापै खोन्या नाबले चाहिँ मस्त चाहिँ गेना चाहिँ वो मुभी मस्त चाहिँ स्टोरी लाख बट देन बाहपा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ जिया चाहिँ बाह न्याने वयो न्या वयो दाइ हिसाब न जिमस जिम चाहिँ सेटिङ फर्मेट चाहिँ अठेदु अलिबो ढुङ्गाले पा आछि चाहिँ नि छिसो जब मखु छिनेबा छि भाषा रहे चाहिँ नेपाल भाषा मसपिन तन इन्ट्रेस्ट छ नि मसपिन दु भन्छ मठुपिन दै सो के लागि चाहिँ जिमस लाइभ यो लागि चाहिँ नि बाखको नाम पिस अनि पि लोकल पिस सु ल्याङ्ग्वेज कम्फर्टेबल लाला वे ल्याङ्ग्वेज याजी तर आतको चाहिँ जिमु छौ न्यु बाहेक द कोइ सेसन पि चाहिँ नेपाल भाषा याना चौदु अलिबो ढुङ्गाले पा चाहिँ प्रोसेस याना ओ लाइभ सेसन हुँदा चाहिँ ओ लाइभ सेसन काइपटी ओ भिडियो त सबटाइटल्स पि नेपाली नेपाली भाषा लिपा वो ढुङ्गालिपा इङ्ग्लिश सबटाइटल्स पि तया अलि बच्चा बच्चा अडियो भिजुअल्स पि न फोटोग्राफ्स पि पेन्टिङ्स पि के चाहिँ वो बाखै त मोर सपोर्ट है अयु पि तया चाहिँ जिमस लिपा प्रोसेस यारको भिडियो चाहिँ युट्युबे त्योपट्टि जायान चनौडु अलि फ्युचर प्लानिङ चाहिँ जिमु चाहिँ सुना दुदाहरुले चाहिँ आठो अडियो भिजुअल अडियो वो भिडियो बाहेक चाहिँ नि इलस्ट्रेटेड स्टोरी बुक्स अलि एनिमेसन पनि थ्रु न चाहिँ नि younger generation the focus in aya khas nai ayo illustrations pe taya ayo pati books pe चाहिँ further publish out ga no jimu pati further plans future plans edu jimu team members pe चाहिँ नि dokon na ta dai the jab jipi campaign to rebuild Kathmandu le just a couple of minutes left. Yeah, sure, I'll try to wrap up. So okay jipi lage ja chuna pi kha आठो चाहिँ आठो पेन्डेमिक यो टाइममा चाहिँ आज मुक्ति लाइभ सेसन या मिले मजे आज जिमस फेसबुक लाइभ यु मार्फत चाहिँ नि कार्यक्रम जिमु याका चनगदु आठो चाहिँ छौ न्यू सेशन्स पिन्यु फोटो पिचे जी क्विकली रन थ्रु या अलि थोरै थोले चाहिँ जिमस इन्टरनेसनली न थो इन्टेन्जिबल कल्चर हेरिटेज वे सम्बन्धी चाहिँ जिमस इच क्याप न अर्गनाइज अपटी स्टोरी टेलिङ कम्पिटिसन हैन पार्टिसिपेसन प्राइज चाहिँ लास्ट इयर जिमस बाखने न टिम पायो जुल अलि आठो ठो बाहेक चाहिँ नि ठो जिमस यान्चो नबुठो उके चाहिँ छौ एकदमै नेफु चिज सुजु लगाएर हामीले जिममा थाहा थाहा छ यही अलि जिमुटी मेन मोटिभ दगादा पटी जिममा छ थाहा बना छ यही तर अनटपी मनोपिसँग चाहिँ हाना हान चाहिँ अन थपिनुवे हिसाबमा चाहिँ हान बाख निन्यो सेसन पि चाहिँ यान्चोनी मार हे जिमुटी मेन मोटिभ जुल अलि के निम्ति छौ न्यू थाहा चाहिँ छटा याना भले मे थाहा छ न जिम त हे या माल र गाताइ छ चाहिँ जिम त एकदम एन्करेज जु अलि आ नेक्स्ट ले चाहिँ जिमसँग थो जाइ त चाहिँ फर्दर अब इलस्ट्रेशन्स भी बुक्स भी निकाउ हिसाब हो न जिमस चाहिँ फन्ड्स भी माला जाया लागि चाहिँ छौ कम्पनी थिए न दर्ता याना चाहिँ जान्या क्युपटी चाहिँ यान चनौदु सुबा Thank you so much, Alina ji. And let's move on to the third and last speaker for this session. The third speaker is Lorina Stapit. Lorina, welcome. Thank you. Yeah. Thank you, Marilena. Can you hear me well? Yes, yes. Okay, great. Great. Thanks. Lorina has almost a decade of experience working as a development professional for organizations such as Oxfam and many local NGOs in Nepal and also abroad. She is trained in social entrepreneurship and she is also a Kathak dancer. And Lorina is the co-founder of AJIS, which is a social entrepreneurship, and she's also it's a social enterprise based in Nepal that aims at, and I quote, empowering elders to live healthy and happy lives by providing a platform to showcase their skills and knowledge. That's the mission of AJIS.
And she's also the host of Aji's podcast that documents the extraordinary and inspiring stories of the elderly, many of whom are in fact Newars. And in fact, today she will be presenting on the topic of preserving the legacy of our elders through Aji's, a social enterprise. Lorina, the floor is yours. Thank you, Marilena. Let me start by sharing my screen. Can you see my screen? Yes, yes. Okay. Perfect. Okay, great. Okay, let me start my video. Jojo Lapa, Fukushita, thank you very much to Marilena and everybody, all the organizing team, for giving this opportunity to share about Ojesh. Ojesh बारे जी थों बटीजा Sakshita to share या तिनो दु थो चिक्सा presentation बाहे. First thing, Ojesh that is whole social enterprise where we work with elders 60 and above. Sati soya apo umir duki Ojesh baja pina pachi sanjana. Ale wake up in you say next. Okay. Okay, choosing Ojesh your mission saying Songo Kishimo mission do first thing is Ojesh baja pino elders they would say unique skills, knowledge they would say Gina meeting the thank you the Kasoya. Ate how we strengthen the bonds between younger and older generation. Ojesh baja pini saying che three pina pa yuputi relationship Gina build ya the okay pahina jupti objective do. Ate third objective saying to Ojesh baja pino life stories. Wake up in South how life is going to Kishmo Sangarse and do Makla. What's come up top the culture, history, pati barina, life gina links to do. Wake up in you Thawe Hasa Makla Thawe words, saying podcast stages, interview yana or legacy stories to document yana. Ale chise a चाहिँ छिउ यो चाहिँ मेकर्स त दया चिस Ojesh baja pinsa चाहिँ छेचुना विभिन्न सामान त देखा दिएका छारा सा थो चाहिँ जिमे Ojesh चम्पा देवी तुलादर पाखे सुरुजु ख हिना सुरुजु दासा जिम Ojesh पहिला अनि से जि सोइचुना मोजा थाउ शिके रहर काला अले Ojesh मोजा थाइचुनी ब्ले she forgets all her troubles मतलब it's her passion तर वो मोजा चाहिँ नि थाथा वनी ब्ले यो कोइ दतका छु उता थुता इना मतलब Shitko ina achne bloke value no apas ko monta aljin su bichana dasa to mia bilda me pinsana to moja yuputi sai value shi use ri ali athe jim Ojesh na bhati sa income dai ka wo surya no kha ali na ukli Ojesh zulka jim Ojesh ne bahe surya no ali a चाहिँ ji Ojesh jim Ojesh bahek चाहिँ ji चाहिँ maybe 30 जना Ojesh baja त चाहिँ थुकै सम्बन्ध दु ali most of the Ojesh bajas were involved with us as makers are from the Newa community मतलब यो कुथै Newa Ojesh baja त दि ali Newa community चाहिँ गे खण्ड दास Ojesh baja पनि यो कोही skills धा यो सिप यो कोही दुखनिका चाहे वो knitting जुइमा चाहे वो crocheting जुइमा चाहे वो सुकु देखियो मुडा देखियो sculptures देखियो मतलब जस्तै थन छौ न्यु सामान किन दिउ छु जस्तै स्वयं बुनिसेका sculptures अलि विभिन्न सामान अलि थो सामान किन्छ सोइदिस यो कोथे चाहिँ नेवा कल्चर ट्रेडिसन हेरिटेज छल्केजु सामान न यो कोइ जस्तै पञ्चबुद्ध स्वयम्भू धर्मचक्र अलि सुकु तजुल अलि अलि प्लस छुप्टिया jewelry देखि मन बाजे सम्बन्धी वो चाहिँ 10th generation jewelry maker ख ताम्राकार बाजे सम्बन्धी अलि वेकैपटि jewelry न एकदम skills culture नेवा युपटि ढल्के जु मुखला अथे थे जि ढाका युपटि गा निसिंकाया Ojesh baja पिन्छ थयौ किसिम उपटि ट्रेडिशनल सामान त देखा दिकाला अलि वो चाहिँ जिस प्रमोट याना अथे थे Ojesh चाहिँ जिउ मे सामान थुजिउ सामान त चाहिँ नेपाली न मिया अथे थे जिस अमेरिका चाहिँ Etsy store there's an Etsy store una okay na miya ale me desi na जिस बिस्तार मिया छमौदु ale अथे थे जिउ next चाहिँ जिस गइना वो traditional skills त छि Ojesh baja traditional skills त चाहिँ next generation ने गेना transfer या दका वो किछ मन सोइचन दु ale थो युकुति skills चाहिँ नि नेवा
नेवा ट्रेडिसनमा पनि लिन्छु जस्तै कि यमरी देखियो मतलब यमरीलाई चाहिँ एकदम नेवा यो कल्चर युपट्टि छ एकदम इम्पोर्टेन्ट खाना जुल मखला छ इम्पोर्टेन्ट स्वीट जुल अहिले आथो बजारे दुतर गति दास दक्सले बेस्ट यमरी सुना देखिले तकादास जी अजि बाजे पिन्छ स्पेशली मखला आज त धामा जित न्याना दिसा जिम अजुबजी यमरी जित दक्सले बेस्ट काला अहिले थो स्किल्स त चाहिँ छि यंगर जेनेरेसन चाहिँ इन्जोय चाहिँ या त थिजुल तो स्किल शेना मकाला दुनी उक्ली झिसा चाहिँ छुसुरियाना दास थै थै इम्पोर्टेन्ट स्किल्स मखला जुन चाहिँ तनावनी क्योंबु वो चाहिँ यंगर जेनेरेशन्स दे त नेक्स्ट जेनेरेशन्स दे त चाहिँ झिसा शेनिफु अजि बाजे पिन्छ शेनिफु दका झिसा तो स्किल ट्रान्सफर वर्कशॉप्स त सुरियाना अलि उके मध्ये चाहिँ छौ चाहिँ थो योमरी मेकिङ वर्कशॉप्स ख थुके चाहिँ यक्को मन्तेसम पार्टिसिपेट यान दिला नेवा नन नेवा मखला गुली विदेशे चुनचुना दिपि थनवया स्याउपि यको शाए अलि फरेनर्स दे सन थुके भाग गइदिन अलि योमरी देखा नयाँ एकदमै रमाइलो जुलकाला अबले अलि त्यति झिसा मे वर्कशॉप्स स्कुले मखला अर्फनेज वना चाहिँ अजि बाजे पिन्छ निटिङ क्रोशे अयो यहाँ शेना न दिउदु मखला व्हिच इज अल्सो वे अफ बन्डिङ विथ यंगर जेनेरेसन अलि अजि बाजे पिन त थे आइबले चाहिँ एकला थौ स्किल्स टु ट्रान्सफर जुल नेक्स्ट जेनेरेसनले अलि दोस्रो चाहिँ नि वेक अप इन एकदम भ्याल्युड फिल जुल सो गुली अजि बाजे पिन चाहिँ थयो याना चोंदु थौ लाइफ ए मखला सामान देखाइ चोंदु तर तो अजि जे वे धुंका चाहिँ वेक अप इन थौ रेकग्निसन अझै पावे जु थिन फिल जुल का दुनी थासा छम अजि जु दिसिन दिल हेरा तुलादर दाम वेक अजि आला ढाकाइगा पहिलानी से देखा दिउ ख मखला तर अजिस पाहे चाहिँ 83 वर्ष से उमेरे वेकन फर्स्ट कमाई दिला अथेथे जिमजियाना पहिलान से मोजा देखा दिउ ख तर अजिस बाहे वेकया कमाई जुल मखला Ali, just these are the few feedback that we've received from the public. Maglagina ajibajepinu, it resonates with everybody. Says ajibajepin ta चाहिँ थो थौ देखियो पटी अवसर न ख अनि प्लस थौ हेल्थ मेन्टल फिजिकल हेल्थ है त इंटैक्ट देउ पटी थौ वे न जुलकाला अलि अथेथे मीडिया कभरेज न जुदु छिउ रिसेन्टली ठ्याक्क थौए एएफपी न चाहिँ छौ छिउ न्यूज पिकाउ दुला अलि वो चाहिँ फ्रान्स 24 याहू न्यूज अलि इकोनोमिक टाइम्स अथेथे यूके न्यूज मखला इम्सा वेक अप इन्सा चाहिँ कभर याउदु अलि उके चाहिँ अजि बाजे पिन्सा खलाउन भिडियो न दुसु उके चाहिँ नेवा नए खलाउ भिडियो दु अजि पिन्सा अलि it's also an opportunity to spread Newa language with the world. अजि बाजे पिन्छ थौै language and थौ experiences the share या विभिन्न international news ए हुँदु BBC news अथेथे अलि मेरो चाहिँ छिउ so part the third objective चाहिँ नि अजि बाजे पिन्युक्ति life stories त document या होला बाखन त document या तो नाच थे सिमिलर खतर थुके चाहिँ छि अजि बाजे पिन्सँग वे कयो थौ लाइफ स्टोरी चाहिँ थौै ल्याङ्ग्वेज शेयर यान्दी अले यको थे थुके चाहिँ नेवा भाषा नए अजि बाजे पिन्सँग ल्याङ्ग्वेज थौपटी स्टोरीज त शेयर यान्दी दु तो चाहिँ फर्स्ट एपिसोड थो चाहिँ आतक 17 वटा एपिसोड जुदु होला फर्स्ट एपिसोड चाहिँ जिथय बाजा जगत रत्न तुलादर लासा व बलेउ आफले नेवा त लासा व बलेउ जर्नी यो कथा त मतलब गयो किसिम नेवा त छि लासा व अले अपलेउटी एक्सपीरियन्सेस त मतलब घेना बाजा ल्या वे बले अन द वे वे कय बाजा चाहिँ बितेजुल अलगिना स्काई बेरियल यानाल अयोपटी एकदम इन्स्पायरिङ एन्ड एक्स्ट्राअर्डिनरी लाइफ स्टोरी त शेयर यान्दु दु अथेथे मेयो नेवा ल्याङ्ग्वेज दुपटी मेयो छौ एकदम इन्स्पायरिङ स्टोरी त चाहिँ धमावती गुरुमा योपटी ख मतलब गुरुमा न गेना थौ यंगर डेज चाहिँ शी ran away to Burma from Kathmandu मतलब बुद्ध धर्म बारे बोनी त अथेथे दिल रत्न शाक्य न दु मतलब वो एकन चाहिँ किन 1950s as an entrepreneur some नेवा entrepreneur जुया किन नेपालले चाहिँ अडियो साउन्ड इन्डस्ट्री त चाहिँ यहाँका दिल अयो स्टोरीज त जस्तै रिसेन्टली चाहिँ छि नीलसोवा तुलादर अजिउ न दु वेकन घिना छि लेट पद्मरत्न बायुपटी चाहिँ ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट युपटी जर्नी त घिना सपोर्ट याना यहाँका दिल थै त्यो स्टोरीज चाहिँ वेकयुए नेवा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ झिसा document so that the younger generation can learn and get inspiration as well as for the next generations to listen.
तो चाहिँ युट्युबे वना सोइदिसान जु प्लिज त सब्सक्राइब न यान्दिसा अले थखे चाहिँ अझै बाजा पिन्यु चाहिँ छिसा न लकडाउन बले यंगर मानुतिस यंगर किड्स ग्रैंड किड्स तेसा चाहिँ अझै बाजे थय इन्टरभ्यु कया नेवा भाषा नय इन्टरभ्यु कया मखला छित भिडियो छै जुन चाहिँ छिसा कम्पाइल याना न युट्युबे तया मखला so it gives an opportunity for the younger generation to speak Newa language, learn about the Newa culture while interacting with their elders. हजुर अहिले थो चाहिँ patron page ल आथु गिना जिसा support यान चौदु दासा people from across the world have joined us to become a patron मतलब just as little as $1 per month चिकपिना support यान दी त help यान दी फुसा चाहिँ नि patron जुया मतलब as little as $1 per month चिक patron support जुया त इनहा प्यान छ न थुलिए खजुबजी presentation चाहिँ नि अलि जी चाहिँ थो links त न chat share yeah I think थुलिए I think we could go to the question answer round I guess. Thank you very much. Thank you so much, Lorina. Yes, so before we go into the question and answer section, I just want to say that we will have an extra 30 minutes at the end of the presentations, at the very end of all panels, for those who want to continue chatting and asking more questions, especially because there are lots of questions that we couldn't address. And in order to be more inclusive, as much inclusive as possible, and welcoming all different views and steering the discussion on those. On this panel, we've had lots of positive comments so far. We've had comments on people like Ananda Manandhar, using already the Ranjana Lipi app, I guess, and saying how helpful this has been in order to learn the script. And Professor David Gellner, who commented on how he wishes there were these resources 38 years ago. And I would say that these resources were not available not even 5 years ago. So I could really see a change really in the trend of interest in producing new resources on and learning material for Nepal Bhasa. Tribeni Pradhan had a comment which I might turn into a question and on an issue that Lorina touched upon briefly in her presentation. Tribeni Pradhan had a question for the Bakanya Newa, but I think we can extend this. And the question is about the financial support. More financial support is needed, so perhaps there should be more Nepal Bhasa commercial program or rewards, and more research is also needed on narratives. So I was wondering whether each of you could perhaps comment on the financial aspect of this. I know some of you mentioned that it's a volunteer work, but how and whether you have thought about ways in which some financial support can be provided. Anyone wants to go first, please? Yeah, can I go first? Sure. Thank you so much for the question. Yes, financial part is of course very important, and apart from the voluntary effort and voluntary aspect that each and every one of us has put to conserve and preserve what we have. So for that, Newa is moving ahead to register itself as a non-profit organization, and we're working on it so that we can apply for more funds and we can do it more organized. Of course, it started as a voluntary movement, and we still are working in a voluntary terms, but we are also moving ahead to register it properly so that we can apply for funds and also manage and organize our funds and money in a more proper way. Yeah, thank you. Okay. So
Yeah, shall I? Marilena, there's one question in Nepal Bhasha, so shall I read it for you? Sure. Yeah. To question चाहिँ सुवर्ण बजाचार्य खा जापाना नेपाल लिपि एसएनएस अथवा चाहिँ सुन्ता मेजु खा नेपाल लिपि एसएनएस ए छेलेजी धमकुको ख चाहिँ शुला थे SNS style, as far as I understand, it's social network service. Nepal लिपिलाई SNS छेला चुनौये तो के बारे चाहिँ जिसा नाचा browser based website browser based चाहिँ बुल्ली खले चाहिँ नेपाल लिपि छेले जिउदागा नाचा presentation ने ना केनो बुझलो अले जिनसा ना युजियन चुनौदु अले यो कुछ चाहिँ content ना जिनसा चाहिँ जिसा यूनिकोड वेदिका फन्ट वेदिका कीबोर्ड वेदिका चाहिँ जिसा छेले जिउदागा थके बारे चाहिँ थपिन्छ सिउ ख चाहिँ मेपिन्त न शेनिगु ज्याना यान्चनहरु उके बारे चाहिँ सिउ Thank you, Sunita ji. And I guess I have, I'm checking the chat. I don't see up more question on this panel, but I would like to ask one in the meantime. Okay, so there is one. So Tribeni Pradhan, transmission of Newa values through intangible culture. First, strong financial support to existing cultures. Secondly, make a new generation understand the values and importance of protecting the Newa values. Let the new generation get the sustainable financial support or opportunities for contribution in Newa culture improvement and development. So there is a concern for the financial support that these initiatives would require. I have, if I may, one question to all the speakers. I guess each of you can elaborate. And it's a question on the audience, for example, for Sunita, on the audience of your workshops, and for Alina, the audience of your listeners, and Lorina, for the elders who come to your place, to your organization. So for Sunita, in terms of linguistic competence, are people who come to your workshop already competent in Nepal Bhasha, and they just want to learn the script, or is it more, the script a way to appeal, to a larger audience and, to lure people to actually get into learning Nepal Bhasha then? And should I ask the questions at once so that then I leave the floor to you? What do you prefer? Shall I go on and ask the questions to the others as well? This is fine, I guess. Yeah, okay, I'll continue. It's still related to the audience. So for Alina, in terms of the audience, you were talking about producing a book, an illustrated book, and I was wondering, in that case, the target would be kids, more specifically, and if so, if you're planning on perhaps choosing different stories, and if so, what kind of stories? And then for Lorina, are elders coming to your organization mostly part of the community of elders whose kids perhaps have left and are living abroad, or do they come also with members of their families? So do they live in joint families, for example, and they come with members of their own families, or is your organization providing a space and a sense of belonging to the elders who don't have their kids in Nepal? So shall I answer first? Okay. जीवोपति वर्कशप वही बने चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर चाहिँ खासै मरो खासै यो कोही याना जिन्छ नेपाल भाषा है लिपि सेनी ज्यादा नेपाल भाषा जिए मा भाषा है यान्छ नगुख तर जिन्छ चाहिँ वी शुड कीप आवरसेल्फ ओपन दगा चाहिँ नेपाल भाषा जको मखु माछा खस नेपाली अथवा याना इंग्लिश छ त वो छुछु ल्याङ्ग्वेज हो वो ल्याङ्ग्वेज त को युजियामा द को छेलीमा दगा चाहिँ जिमो ओपन माइन्ड चाहिँ थाहा छ बडी बुझी नेपाल भाषा
खलासा न जिसा यहीपति नवाई बलेला खोपे पनि बलेला इनको बच्चा awkward थे जी उके नि चाहिँ जिन्छ ल्याङ्ग्वेज खलाइ बले चाहिँ जिता वौडा पछि songu भा चाहिँ हो नेपाली नेपाल भाषा इंग्लिश अले सोता भा चाहिँ छेला चन बुदु अले वजुनी चाहिँ नेवा त जको मखुकी attendees त न नेवा अथयाना नेउ समुदाय नन नेवार्स त अनि इभन नन नेपाली त न जाइदी अले इंटरनेशनल attendees त न वइगले नै जिमसँग वेक अप त चाहिँ इंग्लिश अपोसा इंग्लिश मखुसा गुल्ली केसे चाहिँ इंग्लिश न बालाको मसपी जस्तै छमा थाई गेस्ट अथवा थाई चाहिँ थाइल्यान्ड युमा छमा न जाइदिउ ख अले वेकन चाहिँ वर्कशप गेना जुइ दगा स्पेशली नेपाली चाहिँ वर्कशप गेना जुइ क्याली जात्रा गेना यान्चोदु अनला धेवा पुला मनते त वा दासा वइ मकु थने गेना मनते स उनी मछि मन त वइ छुयाना यान्चोदु दगा चाहिँ वर्कशप एसो दि जाइदिउ ख अले वेकै त थिकी बले चाहिँ इंग्लिश न मजुसा चाहिँ साइन ल्याङ्ग्वेज थियो छु ला त बच्चा खाल जिल्ला ला त जिल्ला हिला जिल्ला मिखा दया जिल्ला इना चाहिँ यान्चोदु केनी ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर चाहिँ खासै मरु सोता भा चाहिँ छेला जनबदु तर मोस्ट प्रेफरेन्स चाहिँ जिसा थ ये मा भा नेपाल भा त बिया जनबदु. Thank you, Sunita. And if quickly the Alina and Lorina ji could quickly reply as well. Yes, so I'll go second, I guess. Yeah, for the book, illustration you put books pinu lagi ayu lagi jimso target yanso nangu pati chai ne chara dekhi jira more specifically alwasha वशा चाहिँ पि छन ठिक जस तर चार जिरोपटी मस्तेपटी थॉट प्रोसेस गयो जी इन्सा चाहिँ गयोपटी इलस्ट्रेशन चाहिँ त क्याच है मोर इलस्ट्रेशन लेस अफ टेक्स्ट याना चाहिँ या त चाहिँ आयु टार्गेट करेन्ट टार्गेट चाहिँ वेट नि इन्सा मपिकाना नि वेजा फर्स्ट आयु लागि जिमसा वर्कआउट यान्छ न चाहिँ चारन से स्टार्ट जुइ पिनु लागि चाहिँ चार जिरो है धामाले काल वशा चाहिँ पिन त न जीव किस्म चाहिँ आ चाहिँ वे यान्छ न ख जिमसा बोक्यो लागि चाहिँ. Thank you. And Marina ji? Okay, thank you, Marilena. So my answer to your question would be both. Newly, Kishimo PG Ajibaje the suya che atwa kids, grandkids, they're living abroad. So yeah, चाहिँ थनेदु तर छौ चाहिँ unique feature अजिज यु छुदा सा सो यामना अजिबाजा छिना प associate जुयादीपी अजिबाजे दु wake up in your kids अथवा grandkids चाहिँ नि focal person का चाहे wake up in थन्देमा अथवा पिनेदेमा मतलब अले छारा सा छौ objective दै चाहिँ वो अजिबाजा पिन्यो छे छि पिना प you bond stronger या ख अले सो छिसा चाहिँ directly wake up in the हरेक time खमला मकी जिसा we go through the kids and the grandkids ale not necessarily at thai must the three modusa cousins that younger people from the extended family or just friends can help them so in this case it's both ale pine dupinsana chise Facebook athwa Viber WhatsApp we are constantly connected ale ena chisa coordinate yana chai thojan sunodu. Thank you. Thank you so much. And we'll pick up a last question from Professor David Gellner, who asks, does anyone know what the current situation is on the side of the Nepal government? How close is it to being able to identify and recognize items of intangible culture to propose to UNESCO for acceptance into its lists? If any of you knows about this issue. May I have option to have a word? Sorry, I can't hear the speakers. So perhaps Alina, would you like to comment on the question on whether the government is being able to identify and recognize items of intangible culture to propose to the UNESCO for acceptance into its list? I think we can move on. This is a kind of may I have a chance to have a word? May I have a chance to have a word?
Is it be fine? I'm Kripendra Amatya. May I have a chance to have a word? Kripendra, we will be having a discussion at the end of the session. Okay, so okay. So we will give you your time, okay? And we will move on to the next session now, I guess. So thank you so much to the speakers, and let's move on to the third session of our discussion. Yeah, right. Thanks, Marilena. That was a brilliant session. I really enjoyed it. The next and the third and the last session for today's Guthi seminar series is we have three brilliant speakers here lined up for you. And let me just take their names out. Yeah, I think my video is not showing up here, but for some reason, because I'm kind of executing this from, yeah, I think it's working now. Okay, brilliant. So this is Supriya Shrestha, and the third session. In the third session, we have three of our brilliant speakers: Mallake Sundar from Nepal. Then we have Dr. Felix Olcher from Germany, all the way from Germany, and Dr. Jyoti Thuladar from Portugal. First of all, I would like to call upon Mr. Mallake Sundar, who we all know as the Newa Yaluwa. He has also been a senior journalist and a rights activist that we all know from Nepal, and his topic today is autonomy for Guthi. Mr. Mallake Sundar, could you please start your presentation? Jodolopa, Revapi Sakle, Jita Gosakala, Beta Uputi Pala, Guthia Samande Ka, Tanaji say slide say Gosakala say Androdia Kata, Angrezi Vasa slide say Dagabuta Dowling, say the PowerPoint. अंग्रेजी भाषा है स्लाइड चाहिँ देख्दै छु अत्र चाहिँ नेबुले ठाउँमा भाषा चाहिँ नेबु हो अनुभूति चाहिँ फना छ अथनो गुटिया त जी जीगु नेवाते उचगु ठाउ इन्डिजिनस जीगु चाहिँ आदिवासी देउ चाहिँ नेवाते चाहिँ छु नलेज रुपे चाहिँ जितन चाहिँ नेगै चलाउटु थो थियो चाहिँ मतलब चाहिँ अझै धैचुने माओपट्टि खम्बको गुठियो चाहिँ इतिहास लिचिपी शिवेन यहाँ ख तर लिचिपी चाहिँ काले वया वसन्त देवी चाहिँ गोदावरी शिलालेख हो अन चाहिँ शिलालेखे चाहिँ दक्ले नापा सुनिगले गजौपट्टि गुठी त दूर घाटेपट्टि वो अभिलेखे झन्डै झिङ्गाउ निगु कठायु चाहिँ गुठियु चाहिँ सन्दर्भ हुन चाहिँ यथार्थ टाउपट्टि हो तर गुठियु चाहिँ सम्बन्ध थोरै प्राचीनता तो गुठी चाहिँ नेवातेसँग तो आदिवासी चाहिँ मतलब ज्ञान कठ थुइट चाहिँ छा चाहिँ व्यवहार चाहिँ यहाँ कलर गाटाले चाहिँ जी खनौपट्टि जो छलफल नजिसँग या छगुला चाहिँ जीव संस्कार संस्कृति सम्पदा व्यवहार परम्परा थुइट चाहिँ मतलब चाहिँ लेङ्कटेउपट्टि कठ तो गुठिया चाहिँ तो संस्थागत परिकल्पना चाहिँ नेवा प्रकारसँग याउटेपट्टि चिसँग ठिकौ चलाउटो मेउ चाहिँ तो गासा गुठी नाप सम्बन्धित डेटिपट्टि गुपट्टि जो टेन्जिबल भौतिक चाहिँ मतलब चाहिँ सम्पदा सम्पत्ति तदै उयो चाहिँ मतलब चौकट चाहिँ रक्षा याउ अले सेनो दुनो घाटा लासा उइटा हन चाहिँ पिङ्क्यु बा पुनर्निर्माण या रिनोभेसन याउपट्टि गुठिया चाहिँ मतलब छो आजु छो चाहिँ तातुना क अले मेउ चाहिँ गुठीले चाहिँ दुने डेपट्टि चाहिँ गो अमूर्त चाहिँ मतलब चाहिँ पक्ष त क उइटा चाहिँ मतलब चाहिँ नेजकिउपट्टि कल्चर एस्पेक्ट देफु बा चाहिँ हेरिटेज एस्पेक्ट देफु बा रिचुअली एस्पेक्ट देफु उइटा चाहिँ प्रमोट यापट्टि चाहिँ छो गुठिया चाहिँ मेउ चाहिँ उद्देश्य खर्गा चाहिँ चिसम छिटो छिटो मेउ रे चाहिँ जुला गुठिया चाहिँ दुने दोपट्टि गु चाहिँ प्रिजर्भेसन या प्रमोसन या प्रोटेक्सन यापट्टि ठोक डकुइट चाहिँ
सञ्चालन या गभर्नेन्स बा चाहिँ त्यो चाहिँ मतलब त्यो कन्डक्ट यापट्टि चाहिँ मेउ चाहिँ गुठियो चाहिँ अब्जेक्टिभ चाहिँ ख गुठिए दुनिया चाहिँ मतलब सांस्कृतिक चाहिँ मतलब गतिविधि तरह हामीले चाहिँ छौला जो सम्पदा चाहिँ मतलब चाहिँ क्षेत्र त उही त चाहिँ संरक्षण यापट्टि सम्पदा क्षेत्रका हामीले जो उद्योग स्वत निसिकया चपा निसिकया विभिन्न कठायो चाहिँ भौतिक चाहिँ सम्पत्ति त दे था त दे उयो त चाहिँ मतलब चाहिँ न्याक्यु लिङ्क्यु उयो त चाहिँ सियापट्टि मेरोपट्टि चाहिँ सुर्गा लासा ठो सम्पदा दुनिया कला विभिन्न कठायो कलाकृति त नदै उयो त चाहिँ मतलब चाहिँ लिङ्क्युपट्टि मेउपट्टि चाहिँ गु चाहिँ छौ जिउ नेवाटे ठाउँ कठायो वास्तुकला या पक्ष त वो वास्तुकला चाहिँ लौकिक चाहिँ प्रयोगको लागि चाहिँ मनुट चुनेको लागि मनुट छेलिको लागि मेउ आध्यात्मिक चाहिँ आस्था आराध्य देवता आग बा चाहिँ बही त जुल बा आँखा छे त जुल थया यो चाहिँ मतलब छौ चाहिँ वो वास्तुकला ख उही त ल्याङ्कट्याउ उही त न्याकट्याउ अहिले झिके डुपट्टि वो सम्बन्धी या चाहिँ वो ज्ञान ख वो ज्ञान या चाहिँ नुगु पुस्ताइ त चाहिँ बिहुपट्टि वो चाहिँ मतलब नलेज चाहिँ मतलब ट्रान्सफर यापट्टि त्यही चाहिँ मतलब जीव चाहिँ मतलब नेवाटे चाहिँ सब हेरिटेज दुने सांस्कृतिक चाहिँ तडो पक्ष गाडेपट्टि चाहिँ चित्रकला त सम्भवतः संसारे नेवा समुदाय छौयासको जुजिके मेमे पिलिउ चाहिँ समुदाय उली ज्ञान मरो तर छका बिचाइन दस्ता नेवा समुदाय चाहिँ जीवने चित्रकला चाहिँ स्वाफुर गाटेपट्टि छका बिचाइन दस्ता जी ई आसान चाहिँ मतलब चाहिँ चित्रकला आवश्यकता दैसुनी जी चाहिँ मतलब अन चाहिँ बाखको आसान चित्रकला आवश्यकता दैसुनी जी लक्ष्मीदेव पूजा आसान चित्रकला आवश्यकता दैसुनी साया छोसान चित्रकला आवश्यकता दैसुनी अटेल जी चाहिँ मतलब चाहिँ घटामुआ चाहिँ मतलब जात्रा आसान चित्रकला आवश्यकता दैसुनी ले तटाउरो सम्यक या बोले बात याउ नक्सा चाहिँ ज्या जनको या बोले पोवा चोका चाहिँ याउ ले तो लौकिक जीवन को मको देगले सतले न जिसो चाहिँ मतलब चाहिँ फेरेसको पेन्टिङ लगा बा अंग्ले चेउपट्टि तो चाहिँ मतलब चित्रकला जीव चाहिँ मतलब जीवन है आध्यात्मिक चाहिँ जीवन है न लौकिक जीवन है न चाहिँ नेवाटे चाहिँ समुदाय दुने तो चित्रकला चाहिँ लावल लुसिते चाहिँ ह्याम्चोपट्टि तो उही त ह्याक्यु ज्यान गुठी या पाक्या जे चौलो गुठी या चाहिँ छगो तातुना गुठिया छो आजको ठाउँ चाहिँ थो सांस्कृतिक गतिविधि या पक्ष चाहिँ थो चित्रकला न छे लान्छौपट्टि तो चलो अठया चाहिँ मतलब जीव चाहिँ वस तिसा अनवया चाहिँ अठया चाहिँ मेमेउपट्टि चाहिँ मतलब चाहिँ गुलिन चाहिँ मतलब जीव चाहिँ तो दो पुसा तो बा तिसा तो दो अमिउ चाहिँ मतलब चाहिँ या त चाहिँ ह्याक्यु उयो त लिङ्क्युपट्टि न गुठियो चाहिँ सब चाहिँ पक्ष ख अहिले मेरो चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ पक्ष गुठियो चाहिँ भाला गुठियो चाहिँ छौ चाहिँ क्षेत्राधिकार कठाउँ चाहिँ नख त जात्रा त हरियोपट्टि होला विभिन्न झिसो चाहिँ पसली भेरिया चाहिँ मतलब चाहिँ जात्रा बा आवयोपट्टि चाहिँ बलचरे जात्रा धर्मार्य जात्रा भाविस्का जात्रा नख चख कठाउँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ मतलब नख चख छ हरियोले उयो लिपन चाहिँ मतलब नेवाटे गुठी पाखे चाहिँ कहम चौपट्टि छौ छुटुकार लाग्छ छौला संगीतीय पक्ष झी चाहिँ गुठी ते पाखे चाहिँ गुलिन चाहिँ मतलब बाजा गुठी दु बा भजन गुठी त दु बा डाफा गुठी त दु वो गुठी पाखे जीव चाहिँ शास्त्रीय बा चाहिँ जीव सांस्कृतिक परम्परागत गुलिन चाहिँ संगीतीय पक्ष त दु वो संगीतीय पक्ष म्याहालिउपट्टि सिन्यु नाप्पचना चाहिँ म्याहालिउपट्टि उली जको मक्सी चाहिँ राग त सिन्यु निसि गया खोजन चाहिँ गुठी न यही
नाप्न पहुँचे उकियो लागि माउपट्टि गुलिन बाजौँ त वो बाजौँ छगु पुस्ता मेगु पुस्ता इट बाजौँ चाहिँ गुरु बा बाजौँ कोजी ती नाप्नपला चाहिँ हरेक तले हरेक गुटिया आखा छे छगु चाहिँ मतलब बाजौँ बा संगीत बा सांस्कृतिक चाहिँ मतलब कि चाहिँ मतलब पर्फर्मिङ आर्ट या चाहिँ मतलब चाहिँ ट्रेनिङ यापट्टि छ उठा आखा छेने गर्दै वा आखा छे चाहिँ चुना संगीत या चाहिँ मतलब चाहिँ गुलिनो चाहिँ मतलब छेउ चाहिँ बाजौँ तोटे वो पुगु बा वो ठागु पट्टि चाहिँ सिनिउ जन जी नाप्न प चाहिँ इले बिले चाहिँ प्याउपट्टि चाहिँ छिरे छ प्याउपट्टि चाहिँ प्याखौजीमा बा नख चख पले प्याउपट्टि जीमा अझ ख्वापा प्याख बा ख्वापा मुडुपट्टि प्याख नक्तनी तनी गेले चाहिँ अचिक सिउजी कि चाहिँ कार्तिक चाहिँ प्याख होला न्यबेउ ज्या मेगा तिनी चाहिँ कोचाला थयाउ चाहिँ मतलब चाहिँ डान्स और ड्रामा होला प्याख वो चाहिँ मतलब चाहिँ जिउ चाहिँ मतलब संवाद या चाहिँ प्याख खलाबला प्याख वो सिनिगु इट प्रस्तुति या उपति तो सांस्कृतिक गतिविधि या चाहिँ मतलब पालन गुठी पाके चाहिँ क गना वइसुपति बा क गयापति उठिया छौ चाहिँ उद्देश्य मते छौ क अले ठो के अन्तर्गत चाहिँ सांस्कृतिक नियमबाट यहीपट्टि क अले ठो जुल चाहिँ सांस्कृतिक पक्षपट्टि चाहिँ खटुला गैर सांस्कृतिक पक्ष ज्ञान गुठिन चाहिँ क गना वइसुपति क झिस लुमङ्केमा जस्तै चाहिँ मतलब गुठीय अन्तर्गत चाहिँ गण चाहिँ मतलब चाहिँ जात्रा जी मतलब पूजा या मतलब ढकाट लासा छौ चाहिँ दसु या लु चाहिँ न्या पनि बोले ये चाहिँ वंगले आज दियो चाहिँ भई वा आज दियो भई बोले फ्ली चाहिँ आज दियो त छापी त फ्ली स्वा ओ स्वामा चाहिँ मा उक्यु व्यवस्थापन लागि गुठी पाके छौ चाहिँ मतलब चाहिँ के अलग अलग व्यवस्था हो के चाहिँ हरेक स्वयंभू चाहिँ पूजा या लागि न अलगे सिगर पूजा या लागि न अलगे विस्काबले सिउ लागि न अलगे जन्मादेव चाहिँ मतलब चाहिँ झी चाहिँ मतलब चाहिँ रथित चाहिँ छापीको लागि माओपट्टि स्वाय लागि न अन्य चाहिँ मतलब चाहिँ छु झी सरकार गाडेका छ के भयो चाहिँ व्यवस्थापन न गुठिया पनि ला मेउ चाहिँ मतलब चाहिँ चलासा जी नापनाप चाहिँ छे चाहिँ सा लगियो मे लगियो तोलेचा फैचा लगियोपट्टि उक्यु लागि चाहिँ मतलब छौ चरण क्षेत्र पास्चर ल्यान्डमा वो पास्चर ल्यान्ड यो लागि न गुठिन चाहिँ गनौन्सी घन्टके ठा ठो चाहिँ मतलब चाहिँ खाली टोट्यो ठो चाहिँ मतलब चाहिँ वस्तु भाव चाहिँ मतलब जो लागि चाहिँ ठोठा चाहिँ खाली टोटे मार्गा ठो ठुक्टा चाहिँ मतलब चाहिँ तिन क्या घाटा नभा गुठिन चाहिँ कहे टपट्टि चाहिँ छौ पास्चर ल्यान्ड चाहिँ मलाई बा चाहिँ ओपन एरिया रासा जिल्ला अले मेउ चाहिँ गुठीय अन्तर्गत चाहिँ झी चाहिँ मतलब वन जङ्गल नला जस्तै छौ चाहिँ मतलब दृष्टान्त लागि चिकुन्त खने कि चाहिँ मतलब इन्या पनि बेला यसी दियो चाहिँ थनेमा बा बिस्काबले चाहिँ मतलब चाहिँ यसी थनेमा ओ यसीको लागि चाहिँ गु चाहिँ मतलब चाहिँ सिकाउ लागि यसी खडगा यसी गुडगा अया कठा चाहिँ वो गु फरस्ते तता माउपट्टि तप्यौपट्टि सीमत पिउपट्टि चाहिँ जङ्गल चाहिँ मतलब चाहिँ अलिअलि उके चाहिँ मतलब चाहिँ झी चाहिँ मतलब चाहिँ उके येला पाके वन ढगाटा प्याङ्गा पाके ती अन चाहिँ मतलब चाहिँ प्याङ्गा मिटे चाहिँ पय जाया लागि अलगे पबोडुपट्टि चाहिँ जङ्गल चाहिँ गुठिया अन्तर्गत चाहिँ लिङ्कटेपट्टि चाहिँ मेउपट्टि चाहिँ मतलब ती चाहिँ गैर सांस्कृतिक खेले चाहिँ गुठिन चाहिँ कगय चौपट्टि भालाडैपट्टि चाहिँ चलाछ वी चाहिँ ल हेउ लागि ल ढ मलाई राजकुलर गाडै विभिन्न ल ढ यो चाहिँ व्यवस्थापन याउने चिप्स शिउला मसिउला नापा ल ढ यो चाहिँ कगय लागि चाहिँ ढपारगा वो क्यानल या चाहिँ मतलब चाहिँ उयो चाहिँ मतलब चाहिँ सुपरभिजन याव वो क्यानल चाहिँ घनो गुण्ठालको चाहिँ गु बुएट चाहिँ गु लागे त लट पोटियो गाटेपट्टि भाला कोबिमपट्टि ढपा ढिमया चाहिँ मध्ये अले उके चाहिँ सफाया मल्लासा
उही त चाहिँ तब्य यामल लासा गणस्यन दास भिङ्केमल लासा ऊ गुठी न यही अठे चाहिँ लपुट गण घण्टको पनि ऊ चाहिँ लपुट देख्ने ऊ लपु चाहिँ सन रास देखियो जात्रा पात्रै लागि चाहिँ भिङ्कियो लतब्य याव बालले चाहिँ मतलब चाहिँ घामट बेवल लगा लासा उही त पिउपट्टि वन चाहिँ गुठी न यही ले मेउपट्टि चाहिँ बिआरआई जिजको चाहिँ बिस ख जी चाहिँ तो ता चाहिँ मतलब चाहिँ ता चाहिँ मतलब चाहिँ उ चाहिँ अछि यापट्टि ज्यान गुठी न यहीपट्टि ख अटे चाहिँ ट्र्याक का चाहिँ जी चाहिँ मतलब चाहिँ ब्याचा त देखि ज्यान यही मेउ चाहिँ सुर्गा लासा सफाई सुगरितपट्टि याव जी चाहिँ चिबा देखा जीमा बा चाहिँ गनो चाहिँ त्यो चाहिँ मतलब चाहिँ लाग्या जीमा दे पिने जीमा थयाउ चाहिँ मतलब सरसफाई याव पाला न धेर चाहिँ मतलब सांस्कृतिक रूपे गुठी न चाहिँ कगन चौपट्टि थियो गुठी चाहिँ स्वभाव त खख ले मेउ चाहिँ गुठी चाहिँ मतलब चाहिँ धेर सांस्कृतिक पाला गाटेपछि देगले चाहिँ विवादन लगाट लासा खासेमा चिवा देठा सफा पाउ बा देगले चाहिँ रङ इलिउ घोडा याउ अझ चाहिँ मतलब झिउ मूर्ति त चाहिँ चन्द्र गाट आसा लपु छाउड गा चाहिँ धाइ छि त चाहिँ मूर्ति चाहिँ जन्मादेव बुन्देउला देरसँग लपु छाउ यही मेठा मेठा चाहिँ बिजसोली देठा बा चाहिँ जी चाहिँ मतलब सप चाहिँ मतलब चङ्गे त्याठा चाहिँ मतलब चाहिँ वज्रयोग नि झिङ्गिरे छ चाहिँ पायो लपु छाउपट्टि चाहिँ जान यही अरे मेउ चाहिँ गुठिया चाहिँ मतलब चाहिँ सो चाहिँ सी गुठी ढगा चाहिँ छि चाहिँ दु ओ सी गुठिया मेन चाहिँ मतलब चाहिँ मो भाला ढगा थियो मनु त सीता ढगा त लासा ओ चाहिँ अन्तिम चाहिँ संस्कार दाह संस्कार चाहिँ भाला दाह संस्कार यानी बिउपट्टि चाहिँ जी नेवा सी गुठी त्यसमा चाहिँ यही मेउ चाहिँ चुर्गा लासा मेठा गुनाउमरु झिउ गुठिया चाहिँ चौ चाहिँ मतलब विशेषता ढगा थियो चाहिँ जङ्ग पञ्चित त बा चाहिँ मतलब वस्तु भाव ये त चाहिँ अम्द संरक्षण या अम्द नकिल टुङ्किल ज्यान जी चाहिँ गुठी न या चलन तो अतिके दृष्टान्त रूपे कि चाहिँ मतलब जी इतुम बाले वन लगाला स परावर्त चाहिँ मतलब महाविहार लगा चाहिँ लगा तै अनुवन लगाला स आनो अन चाहिँ चिप्स खने चाहिँ बहुते लागि चाहिँ अन ओ बिहार चाहिँ ओ जाकी होला वा होला चाहिँ बहुते चाहिँ ओ चाहिँ लिङ्कियो लागि अनि चाहिँ संरक्षणको लागि यही ल गुलिका गुटीले चाहिँ मतलब चाहिँ सुरगार लाछ जिउ चाहिँ साथे त चाहिँ मतलब चाहिँ छिमेकी ज्यान यही अले गुटी न चाहिँ मतलब चाहिँ यात्रुटे त चाहिँ मतलब चाहिँ सेवा या ल टुङ्क्यो यहाँ ज्यान गुठी न यही जिउ गुठियो चाहिँ मतलब चाहिँ परिकार त ढाबला सो चाहिँ जी चाहिँ मतलब जॉब पिनी छे जॉब पिनी ये चाहिँ मतलब गुठी देव पूजा गुठी गाट है बा आगो गुठी गाट है वो चाहिँ छी छोए परिवार या छोए फुकिटे दतिया ग्रुप दति मेउ चाहिँ जाति अनुसार उराटे गुठी जपटे गुठी स्यामटे गुठी गुवासटे गुठी कठो यहाँ चाहिँ एकल जाति कृष्णहरु मेउ चाहिँ विभिन्न जाति तो दुईपट्टि चाहिँ यहाँ गुठी तनहरु ले ट्वाछिया गुठी तनहरु होला अले आठो गुटीले चाहिँ गुटीले सदस्य जीएम आउ दुजा जीएम आउ गुली ठय चाहिँ दुई गुटी नहरु होला अले गुठिया चाहिँ मेउ चाहिँ भाला र गाटे गुटी मेउ चाहिँ गुटिया हरेक गुटिया चाहिँ ठौ चाहिँ आस्थय गुटिया चाहिँ मतलब चाहिँ उयो चाहिँ मतलब चाहिँ भौतिक चाहिँ सम्पत्ति त दिने गुटिया तिसा त दिने गुटिया तुने भारत र दिने बाजा त दिने थमी संरक्षण यापट्टि चाहिँ जुला होला मेउ चाहिँ मतलब चाहिँ वसर त जुला उयो चाहिँ मतलब ग्रन्थ त दिने यहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ धार्मिक तत्व त दिने अथवा चाहिँ मतलब चाहिँ तिसा त दिने होला मेउ चाहिँ स्रोत या त न चाहिँ व्यवस्थापन या संरक्षण या गुठियोपट्टि खख अले मेउ चाहिँ मतलब ठिकमा चाहिँ सुर्गाला छ गुठिया चाहिँ मतलब चाहिँ अतिरिक्त चाहिँ मतलब भाला गुठी न चाहिँ मिटाउै चौपट्टि चाहिँ भूमिका दैपट्टि सुर्गाला छ नाप हरेक गुठीले खासेना बाहा बैले चाहिँ देश चाहिँ चुन चाहिँ मतलब महत्त्वपूर्ण घटना जो लगाला छ उयो चाहिँ मतलब चाहिँ उयो त चाहिँ नोट हेना वो घटनाक्रमित त चाहिँ पाठ टिप्पणी कठा चाहिँ मतलब चाहिँ गुठीले बाहा बैले वो चाहिँ सर्वसंग पाके चाहिँ
ile thonthal ko minola tho ile thote tolo e wala tho ile tho juju sita daga ko documentation ya jana guthi no yan wi so pati ji sa khana me wala ja sa dad no ki guthi ya mu bala de yo ji aja aju piso chai se ko wi so pati gu chai gyan ko wo nu purkha pinta chai wo chai hastantaran ya jana yan wi so to me महत्वपूर्ण चाहिँ गुल्सिया शिवबा मस्युजी गुठी ढेगा ढेउपट्टि छौ चाहिँ अर्ध न्यायिक चाहिँ छौ चाहिँ मतलब चाहिँ संस्थान का अड्डै चाहिँ चुलासा जे चाहिँ मतलब चाहिँ गुठी त्यसमा सर्वसंग पिस बा बिया पिस सुनो मुनिको चाहिँ मतलब सामाजिक रूपमा चाहिँ कारबाही या मतलब दण्ड सजाय बि मला ढगा लासा जाति च्युत या मल लगा लासा पारपचिक या मल ढगा लासा अंश बन्द या मल लासा गुठिया खोजी पिंचना गुठिया नाय पि गुठिया पिंचना तो चाहिँ मतलब चाहिँ अर्ध न्यायिक भूमिका न यहाँ विषयहरू मेउ चाहिँ सुरासा गुठी ढगा दे नेवाटे दति चाहिँ सामाजिक चाहिँ एकता सामाजिक चाहिँ छगु चाहिँ मतलब चाहिँ आबद्ध यन्त्रपट्टि चाहिँ छौ तो प्रमुख चाहिँ मतलब चाहिँ इकाइ न ख अले गुठी ढगा दे मेउ गुण समुदाय मरोपट्टि नेवाटे छौ चाहिँ विशिष्ट चाहिँ मतलब चाहिँ पहिचान न ख आ तुके चाहिँ मतलब चाहिँ गुठियु चाहिँ we need to wrap up. Jesus ato yakne ko jake hala chu nochu चाहिँ 3 minute ki jisa चाहिँ yoko yad na allocated time so हैन please try to wrap up because why जो का गुठी जे तुके लास्ट वे या चाहिँ मेउ मोरा गुठीले चाहिँ मतलब वे या चाहिँ डगले मध्ये चाहिँ मतलब चाहिँ समस्या गाडेपट्टि चाहिँ सुरगार लासा झिए चाहिँ मतलब चाहिँ स्टेक होल्डर त्यसो चाहिँ गुठियो सम्बन्ध चाहिँ छिटो चाहिँ मतलब चाहिँ ह्यान्डल या चाहिँ सही रूपमा चाहिँ काम चोबरो उके दगले मध्ये चाहिँ छि कमजोरी गाटे हामीले झि नेवा गुठिए चाहिँ मतलब चाहिँ सरकार वाला गुठिया तय क चासा भली चाहिँ मतलब गुठिए चाहिँ मतलब सम्पत्ति मिया गुठिए चाहिँ मतलब चाहिँ सत गुठिए चाहिँ मतलब आगो चाहिँ त चाहिँ शंका जिसो गुठिया चाहिँ मूर्ति त गुठिया चाहिँ मतलब चाहिँ ग्रन्थ चाहिँ मतलब चाहिँ मिया अया अनुसार चाहिँ गुठी त चाहिँ मतलब चाहिँ ध्वस्त या सिंगिल या तगले नापाला चिसा या नो छ ल मेउ चाहिँ गुठी रिया चाहिँ आइस्त कटन चाहिँ भूमि गब्ले निसी चाहिँ भूमि सुधार होला अबले निसी चाहिँ मतलब चाहिँ ओनरशिप चाहिँ छगु चाहिँ मतलब वो उके चाहिँ मतलब चाहिँ परिवर्तन होला उके चाहिँ आय स्रोत गुल लिचो लाखट उके न गुठी त चाहिँ लिचो लाखो ल मेउ चाहिँ सुरगाला छ गुठी संस्थान चाहिँ ढेग ढुङ्का चाहिँ गुठी संस्थान चाहिँ गुठिया सम्पूर्ण प्रपर्टी चाहिँ मतलब चाहिँ दुटकया गुठीले चाहिँ राज्य गु हस्तक्षेप यापट्टि ज्यातल पुनः चाहिँ गुठी चाहिँ समस्या का यो गुठीले चाहिँ दैचौपट्टि छौ चाहिँ पितृ सत्तात्मकता व गु सामन्तीवादी चाहिँ मतलब चाहिँ छौ चाहिँ स्वरूप त क वन चाहिँ मतलब चाहिँ गुठिया दुने चाहिँ समस्या का मेउ चाहिँ गुठिया समस्या त गाटेपट्टि चाहिँ राज्य चाहिँ गुठी त गु अखनो चाहिँ गुठी विधेयक या चाहिँ गलत कथा गुठी त ठीक गलत कथा गुठी त ह्यान्डल यापट्टि चाहिँ सोच्न वन चाहिँ समस्या का मेउ चाहिँ आयो लागि चाहिँ झिसा चाहिँ खन्त्राउ चाहिँ च्यालेन्जेस चाहिँ समस्या बा चाहिँ चुनौती रहे चाहिँ छुटा छ नेवाटे दुने चाहिँ गुपट्टि थिति चाहिँ मतलब जाति समुदाय चाहिँ विविधता दो वो कारण एनान गुठिया दठी चाहिँ मतलब चाहिँ जिउ चाहिँ सोच जो एकीकृत धारणा चाहिँ बोलन फैचौ मरु मेउ चाहिँ थासन तासे जिउ चाहिँ मतलब येले खोपे बुंगे बा चाहिँ हरेक तासे गुठिया स्वरूप त अलग अलग चाहिँ मतलब सांस्कृतिक चाहिँ व्यवहार त विधि त डुलिन समस्या होइसो छ मेउ छगु चाहिँ मतलब झिके दठी चाहिँ समस्या रहेको चाहिँ झि नेवाटे दठी चाहिँ छौ चाहिँ व्यक्तिवादी सोच जे चाहिँ मतलब चाहिँ नेवाटे चाहिँ मतलब चाहिँ मुमुनु ख जे चाहिँ नेता ख रगाटेपट्टि छौ अराजक प्रवृत्ति न ठौने चाहिँ त्यसमा हावी छौ चाहिँ मेउ समस्या ख छ मेउ चाहिँ झि दठी चाहिँ मतलब छौ एकीकृत प्रभावकारी चाहिँ नेतृत्व अभाव न चाहिँ आयो लागि चाहिँ गुठी चाहिँ मतलब कगाव वा राज्य चाहिँ गुठी सम्बन्धी हस्तक्षेप यन्त्रले नेवाटेसँग गैना छिटो चाहिँ मतलब चाहिँ समाधान याउने विषयलाई चाहिँ तडौँ चाहिँ समस्या छिटो चुनौती भइसक्यो सुभा यखेको सुभा मलाई के सुन्दैछु because मनोजु चाहिँ जस्तो दिन्छ कोना निन्दर
कोदुङका चाहिँ जी मेरो वक्ता जो यो सेसन मेरो वक्ता चाहिँ वैका चाहिँ डाक्टर फेलिक्स ओटा वैका चाहिँ छन् अध्यापक ज्यादी डिपार्टमेन्ट अफ इन्डोलोजी एन्ड टिबेटोलोजी ले डिपार्टमेन्ट अफ फरेन ल्याङ्ग्वेज फिलोलोजी जे फिलिप्स युनिभर्सिटी ह्याम्बर्ग जर्मनी पखे चाहिँ वैका छन् अध्यापक वैका चाहिँ थुसिया तो कोभिड ले चाहिँ भएको सब चाहिँ समर स्कुल जिमा हो क्लासिकल नेवा लिटरेचर बारे तर वो दुई मुख साना वैका यो सब प्रस्तुति चाहिँ छन् दिन्छ चाहिँ भन्ने भइ वैका प्रस्तुति यो छ जो classical Newa literature today preserving manuscripts studying texts. Dr. Otter, would you please like to start your presentation? Yes, thank you very much, Sanyukta, for the introduction, and thank you to the, let's see, okay, now it's working, good. Thank you to the conveners of today's seminar for the organization, and especially for the kind invitation. It really means a lot to me to be included in today's program. Now, I have been asked to present on classical Newa literature today, which to me is a rather daunting assignment, because there are people present today who obviously will be much better placed to speak about that, but I will do my best. Let me start by defining what we mean when we talk about classical Newa literature. Now, of course, the term was coined by Hans Jørgensen, the Danish scholar and pioneer of Newa studies in the West, who defined classical Newari as the language of the manuscripts and inscriptions. I am not entirely happy with the word classical in this context, of course, because classical is a very highly charged term that implies a degree of perfection and refinement that is not achieved either before or after the classical period, which is evidently not the case. Obviously, no diachronic variety of any language is intrinsically superior to prior or subsequent varieties, but the term has come to be generally accepted, and I will use it, but we have to bear in mind that classical in this context does not imply in any way that the language of the manuscripts is somehow better or more sophisticated than the living spoken language of today. Thus defined, classical Newa literature can be dated back to Nepal Samvat 235, corresponding to 1114 of the Common Era. The oldest dated document written in the language dates from that year, and really takes off around Nepal Samvat 500, corresponding to 1380, with the composition of the Gopala Raja Vangshawali. This variety of the language continues to be used in manuscripts through to the 19th century, although it seems that the spoken language already started to shift towards the modern spoken language of today sometime in the 18th century. It is a curious fact that even 80 years after the publication of Jørgensen's grammar, classical Newa literature continues to be acutely understudied. Despite the wealth of material, the number of texts that have actually been edited and published is just barely in the double digits. And that is despite the fact that classical Newa literature is really one of the richest and most voluminous literary traditions of South Asia, surpassed certainly by Sanskrit and Tamil, but in the same league as Bengali and Brajbhasha, and certainly more diverse than the latter two. There is virtually no literary genre that is absent from classical Newa. There is, to begin with, a very rich corpus of narrative literature and poetry. I'm thinking of the lyrics that were edited by Siegfried Lienhardt in 1974. A wealth of technical literature ranging in topics from architecture to medicine and astrology, and of course a huge corpus of ritual literature, and of course the biggest corpus of historiographical writing
that is found anywhere in South Asia. So still, most of this material continues to exist only in unedited and unpublished manuscripts. There are several important collections. I'm just naming some of them, beginning with the Asha archives in Kathmandu, probably the most important collection of manuscripts, containing about 7,000 manuscripts, about half of which are in Newa, the other half mostly in Sanskrit. And it might seem that preserving and collecting manuscripts is a modern activity, but it is really not. What I have here is an example of a manuscript from the 16th century that apparently is sometime around 1800. You see the original material, the top leaf is palm leaf. And sometime around 1800, someone started copying those pages that were becoming illegible on paper and replaced the faulty or the decaying folios with a new paper pieces, and thus preserving them. And you can also see here that some pieces, some bits of the text were already illegible at the time. So preserving manuscripts is nothing new, but the need for a more durable preservation, not of texts, but of the manuscripts that contain them, or at least of their physical appearance, began to be felt in the 20th century, when manuscripts were being transferred to microfilm. The most ambitious of these undertakings was the Nepal-German Manuscript Preservation Project, which ran for a duration of 31 years, during which a total of about 180,000 manuscripts were filmed, with one copy each stored in the National Archive of Nepal and one in the Staatsbibliothek Berlin. Unfortunately, this method has proven to be less than ideal. I was speaking to Siegfried Schmidt the other day, the head librarian of the Oriental Department at Berlin, and he told me that the material used for the first few years of filming actually has a life expectancy of about 45 years before it literally turns to vinegar. So the earliest recorded films are already decaying again. So what would really be needed in the long run is a comprehensive digitization of the surviving manuscripts. That is underway at the Asha archives, as far as I know. And the British Library has a rather interesting endangered archives program. This is the screenshot from the starting page of that. The exciting thing about that is that they, just like the NGMPP 40 years earlier did, that they digitize manuscripts, but the manuscripts stay where they are. So the inherited ownership is not disturbed, but the manuscripts are available to everyone who wants to work with them. The University of Cambridge digitizes on demand at a price, but usually the manuscripts, once they are digitized, are also put up on the homepage, and the same is true of the Staatsbibliothek Berlin. So, so much for the preservation of manuscripts. When it comes to studying them, of course, preserving manuscripts is in and of itself a rather futile attempt if no one goes on reading them and engaging with them. The materials for study have been around for some time, beginning with Jürgensen's Grammar of the Classical Newari, which focuses on late classical Newar, but is still the only available comprehensive grammar of the language, and the great dictionary of classical Newari, published in 2000. I have been teaching the basics of classical Newar grammar at the University of Marburg for the past 3 years, and
Last summer, I was going to have a summer school, but of course, for obvious reasons, that had to be cancelled. I hope to be able to do that next year. Meanwhile, I have condensed the teaching materials into a textbook that was actually due to come out this month, but in days of Corona, everything takes a little longer, but which hopefully will be published in open access format online with the option to have it as print on demand sometime in the next few weeks. But enough of that. Let's move on to the question of why we should study these texts in the first place. Now, for a philologist and a linguist, the answer is quite simple. We have to study them because they are there. But how are they relevant for the preservation and promotion of Newa culture today, which is actually the topic of today's seminar? Of course, it is absolutely not my place to decide that or to make any recommendations, but I would still like to offer two observations. The first is the very general and admittedly not very original observation that, of course, these manuscripts and the texts they contain are an integral part of the tangible and intangible heritage of Newa culture. They reflect cultural beliefs and practices, not all of which have survived until today. By the way, this manuscript right here, that is one of the microfilms from the NGNPP, that also contains, because Alina was saying earlier, talking about the fact that stories give meaning to, for instance, architectural practice, and this manuscript contains one of the foundational myths of architecture, a version of the Vastu Purusha, but a version that I have not yet encountered in any Sanskrit text. As far as practices that might not have survived into the present are concerned, this is a detail from a manuscript held at Cambridge that apparently shows 4 people playing Chaturanga, an early version of the game of chess, but that was played with 4 players and a pair of dice that basically dictate which pieces you can move. And that seems to have been played in both in Nepal and in Mithila and Bengal, but as far as I know, has died out sometime in the 18th century. So far, to get back to the quote by Gustav Mahler that was mentioned in one of the earlier presentations, I have really just been talking about preserving, if not worshipping, but then preserving the ashes. How about the actual fire and the continued practice? That concerns the second observation I would like to make. And that concerns the fact that when we study these manuscripts, it is striking that the past is in some ways not intrinsically different from the present, because these manuscripts are a very potent reminder that tradition is not and never was something static, but always reflective of debates and contentions going on in society at large. And I would like to end my presentation with a concrete example. It concerns the 10th story of the Vitala Panchavinshati, a text that probably needs no introduction, and the classical Newa version of which I'm currently engaged in editing. In the 10th story, now the classical Newa version of the Vitala Panchavinshati survives in a staggering number of manuscripts, about 20 of which are complete, and each of which, if you study them closely, turns out not to be just the manuscript of a certain text, but actually a different telling of the story. The wording of the manuscripts differs, they diverge rather markedly. And in the differences between these tellings, we sometimes find echoes of debates that seem to have taken place in the past surrounding these tellings. Really no more than echoes, but still very, very tangible in a way. The 10th story
as a case in point. To summarize the plot very briefly, it basically tells us how a young woman by the name of Lavanyavati is basically blackmailed by a man into agreeing to go on a quote-unquote date with him on her wedding night. On her way there, she's attacked in turn by a robber and a demon who threaten to kill her and rob her, or to kill her and eat her in the case of the demon. Now, she manages to fend off both attackers by pointing out that she has a promise to keep, but promises to render herself at their mercy on her way back home. In all versions of the story, both of them are so impressed with her determination that they let her go. And in the classical Newa versions, both of them, both the robber and the demon, are actually reformed. They undertake to forsake their evil ways in future. And in the course of the story, both the blackmailer and the husband end up rejecting her. And then the Vitala's question to the king is, who acts the most righteously? The husband who rejects his wife, or the suitor / blackmailer, the thief, or the Rakshasa? And in different tellings of the story, different answers are given to this question. Now, most versions agree that it is the thief who acted the most righteously, but one version, for instance, has the husband as the most moral actor in the story. Quite aside from the elephant in the room, that none of the stories offers the option that it was actually the young woman who acted the noblest and the bravest, but that's a different matter. Now, the thing is that in one of these manuscripts... yeah, sorry? Right? We're running out of time. I understand that we are almost in the last slide. Okay. Remind that we have to wrap up in the last. I've actually basically already made the last point, which is basically that what these manuscripts can really show and demonstrate is that any dichotomy between tradition and modernity is ultimately false, and that basically the dynamics or the dynamism of culture today is also reflected in these stories and in these different tellings of the story. And with that, I would like to end my presentation and thank you for your attention. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Otter. That was a brilliant presentation. We learned a lot, especially when you said documenting manuscripts is not a new thing. Having known that Germany has has been one of the most effective contributor in this process for Nepal all these years, all these decades. It is interesting to know this is also a case with Nepal from historical times. Thank you. So our last speaker for today's this session, as well as the seminar, I would like to call upon here. Our last speaker today is Dr. Jyoti Tuladhar. She's a senior gender specialist at ILO. She's been, and she also likes disseminating her knowledge about Newa intangible heritage now and then. And her title for presentation today, transmission of Newa values through intangible culture. Dr. Jyoti Tuladhar, could you please start your presentation? Thank you. Do we see Dr. Jyoti Tuladhar here? Yes. Could you please unmute yourself, Ms. Tuladhar? Could you please unmute yourself? Okay.
Is it yes, okay? now we can. Yeah, okay. All right. First of all, I wanted to say that today the seminar has been so compact and the presentations have been so very pregnant and so rich. At the end of the seminar, I have very few things to say. The organizers were very worried that I would have such a long presentation, and I cut my slides and made it into 4 and then enlarged into 8. And now at this end, I find that I might be repeating lots of things that have already been said. And in fact, it seems that I might be giving a theoretical scaffolding, a kind of a framework to all that has gone on before. So that is what I want, that is what I'm going to be doing. And at the same time, I will only emphasize on 2 major concerns of mine, which I would like to talk about a little bit more. And my concerns have been deep. My concerns have been many, many years, not just by the way. It's not my concern with Newar language and Newar people is not just by the way, but have always been there since I was born. Okay. So having said that, as in Nepal Bhasa Khala, and I will upload my my presentation. Okay, so the topic is transmission of Newa values through intangible culture. Aji to be say bastule ju mu aju ji sudha to soyu to katasa ji intangible culture athwa amurta sampada raga ji son sudha uyu mukhya mulya chu uyu mahatva chu this intangible culture there goblen bakon kanu khanana goblen dipio khanana dipi goblen bhasayo khanana goblen ji son guthio khanana kisim kisime topics se ji khala ji son khanana from the seminar present do there jita just so interested to that so intangible culture atha amurt gu sampada kha uke ji son chu values ji son se ka kaya wo intangible culture jo masika ai bare jo visishtata yo bare jo distinctiveness yo bare jo values and beliefs yo bare ji son chau pusta neo pusta ita gena hasantaran yantana chu khe ji son stalan diama at intangible culture that immaterial or ji son thimofu svemofu khonimofu elements that are type actually the intangible culture e dune chu do or intangible culture on ji son hapine mulya manyata thomeo generation ya ji son gathena pasyan chuna okay the taske interest duli ji thobi se vastu than choose yan do today so very interesting do surasa jisa किसिम खलाना विभिन्न विद्वान त्यसमा एकको विद्वान त्यसमा एकको खतोइ ताउ छु intangible culture यो बाले छौ आइटम कया तर युनेस्को 2003 कन्भेन्सन जिता 5 डोमेन्स ता यसको स्पष्ट जिका जिता केना बितु छौ जुल मौखिक परम्परा मौखिक अभिव्यक्ति तथा गु कोंदु उके दुने थौकेन खौ यो एकवे खौ गु बाखौ कन्यु खौला गु लोक साहित्य खौला गु थो दन्त्य कथा यो खौला गु chant khawala music khawala with the oral traditions and expressions that been la athen to a disant to bu abhyas kala traditional music dance and theater the gaguji mallaji nawana dila one of the to domain no la second la third domain sudasa जो सामाजिक रीति रिवाज जो किसी में वो फेस्टिव चार बार इत्यादि भूलना वो सामाजिक चार वो तो पूर्ण छौ डोमेन छौ एरिया छौ कैटेगरी तथा यूनेस्को न वो अलग होते बिला तर जिता तक से इंटरेस्टिंग ताउ सुरासा नेवाते ज्ञान तो विश्व बारे नेवाते छु ज्ञान दु प्रकृति र नेवाते सँग गथेना स्वत यो आर्थिक जीव धार्मिक आस्था देख यो वन नॉलेज न इंटेंजिबल कल्चर भाग ख वन नॉलेज इज थौ पुस्तै त गथेना हस्तान्तरण छ सञ्चालन गथेना हस्तान्तरण छ वन सौ तस्ना इंट्रेस्टिङ ख अथवा ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप तथा परंपरागत शिल्पकला जैसे कि चीजें विभिन्न किसिम शिल्प दु छियो चित्रकला दु पौभा कला दु स्कल्पचर दु हरेक किसिम काष्ठकला दु तो को खै त कया युनेस्को न 2003 ले फुन्यागु डोमेन से भागन बिला भाग्यवश सुधासा यो नेपायो सन्दर्भ नेपायो कन्टेक्स्ट है जिसा जिउ tangible World Heritage Sites तका जिसा बिदुना जिउ रेकग्नाइज दिबुल युनेस्को तर वो तको tangible
intangible ataka sarkara chawaya recognize amufuni recognize list amobuni sakaje bungudio jatra wasakwa na list teo de kanu khalata Dr. David Gallner Guthi eta no chau intangible culture heritage declare yama with Jesus sarkara nyone tema ta kanu khoyaudu ani UNESCO chau chart yana chau safu pikala intangible cultural heritage of Nepal ta okay ji theko safu banasebele ji sara chukhana dasa me pisim o kha ulev dete tauru de Newa sabete bare nita khaja ulev so mokuja so I we bare Newa de bare jiu sabyata jiu samskriti bare chhuye ulev jumoru o safute havle jiu sabyata me pina pachi sandena chunna ya jita the chhuye samrita sali mokla jiu Newa chhuye gaurav mokla gaurav jisa tama chhuye khomurla ki chho UNESCO eta prastuti au so safute Pisano Swedish Safety, Newa de bare te dui paragraph na banakti moro okay jisa to intangible culture yakwe mahatabia jisa samastigat rupa avalokan yana swayamala nati jisa chatakala but actually Newa de culture ta kathiyana jisa yoi chuna beu khanje jisa yoku bisaya ma things ta at intangible culture jisa chai important has important daga me sona nazana samke mezu dhadu gala pakham pane wa dhauli is you pura Sanskritic system to you backbone kha for intangible culture which you backbone kha you sara samast silpa kala India you parampara value beliefs you viswa world view you ways of thinking you soch you vichar ekar korda ko you parasparik sambandha vyavhar language lipi dakai chukhe samavesh dia chumdu so intangible culture so torangwe body kha okay jito as a whole samastigat rupa jisa thike maudu swe maudu and the intangible culture they thayang khoti ugen jisa jiu identity view Newa su da sa Newa de toto kha Newa su da Newa de asta thike du Newa ye biswas su da sa thate du da chuim jita dai da sa intangible culture amurt sampada ita thika bi and intangible culture they thaya pe jisa susika te ma khomoko with the guli jisa share da guli mapping na pe jisa the intangible culture le bare khana ta uli jiu sai mahatna bare jiu sai vikas bhoi wala chata intangible culture edu a tangible culture de gati rasa sunana nakkaliana no aname swayam saik degi fu nakkaliana la sa chisa mushu pasipati mandir na degi fa nakkaliana tangible cultural elements careful the intangible culture you sabyata yo atma your community Newar, it takes a long time to cultivate intangible culture and it takes an equally long time to wear it away. Intangible culture turunto when you choose no more. And tangible culture that is a plunder and destroy and binas and donfena achana unify brute force. So intangible culture that chata cheez on the yafu was a राजनैतिक किसिम दमन याना र अर्थ छछौ किसिम जल फल कपट्याना दाल साजना दमन याना जक्क है intangible culture shina wani a toke jinch pinda so quote jinkene quote say Lord Macaulay was a British parliamentarian in 1835 imsa India the gena dominated at ashka bichainchu India was such a rich country was so wealthy so great in culture imsa dominate mofu wala Lord Macaulay was a parliamentarian sudala. If we want to dominate India, we break the very backbone of this nation, which is our spiritual and cultural heritage. We have to replace our old and ancient system, our culture. Matlab, true sabyata, true kishime bhi manute the shanketa, imi culture shanketa, imi backbone, intangible culture jison shankema. What's hata khama? Alindita kasudasa, how culture yata. Our hilly distance, everything that is foreign, everything that is dominating, that is great. But how cultures are not the bhavna, wake the bhima. And the last stage, okay, and Sudi Rasa, mono take self-esteem, the muku. In your native culture, Toro, the topics on Taimoko, what is the house of a chiso dominate your faith. But the way color run it today, how to dominate a nation. At 20 Chison Wobble, and Dr. Mahesh Man Shrestha Supriya Manandhar Newa ta mare wani tyamu laki mare wan ki tyamu. So that's very interesting observation ka wekala. Newa ta lebi mare wani tyamu laki mare wani tyamu. Havle to the challenges of acculturation. So this jita thanyam laksan acculturation ya ta jita thanyam laksan domination ya ta you bhai durla sa so this. Bikram Samvat 68 64% on the Newa ta khalafu.
Bikram Samvat 58 at 66% of Kalafu, national statistic, and the Tatyanka Chisa, you could be Swasna Yamu, Buktan Ukans or Tatyanka Kala, Chisa Balkumushu. At his Dusano Hetabi, 2.41% lapse within 10 years. Well, I'm so Tatyanka as a Kokumu, okay, may Gully lapse to the Gezula, Chisa Mushu. Have the moon's throat, the greatest transmitter of our culture, which is a ma bag, where the ma, Dam Katam Javan. Chisa do too much effort. Do Tona Konyana Jikoski, Kushidula, Isim Kishima Nepal Lipi, Nepal Basa, some of the Shrestha Zolan to Udarandu, Nepal Basa, Mosha Mesa, Tomesa, Bidesa, Nagata Nepal Basa, second, they will come, Zolan to Udaran. Members of Zolan to Aranzi, Marilina, Prisone, Bukulipan, Nepal Basa, and you would see Bidesa. Example, Deka, Nepal Kathmandu Valley, Swedisa, Nepaliteu, or Nepal Basa, Durdasa. Hong Kong, Nepal Basa, Sudiasan Dasa, Hong Kong. Advertise Nepali list Rukshana, you take her name to the Nepal Vasaita. Nepal Vasaita, this which Udaran be was Udaran, maybe some of you example Malatandu, Gino example Malatanadu, you has a Gajavan, Nepal Vasakana episode, example, verb root, Nepali color affects you Neva Tavila, for a Gezula, Shima Katezula, for Kuheyao. Kappa Koleyao, Gari Taleyao, Lord to Hedula, Islam Hamatu, Fajala, Shima Palimala, Ford Dogino, Kappa Taku, Gari Nyaku, Lord Jola, and now Chicken Nepal Vaja, and now take of the Decono, she saw the Nepali Koya, wait as any by affix variant, such as Volando Udaran, Yaktasona, Tulisomaki, Gia Calabale, Roke Zula, Hatagena, Haman Nepal Vasanda, Pitayama, Roke Zula, Roke Yadu, Pony. Lost yet. Nepal Vasta, you could not boring do, but no boring to hybridization, who yana gaji rasa very soon, Nepal Vasta Halapisana, Nepalia, Kishimo, the Kuyana into the scare from the hybridization so Orangwe Chitasumaru. Is on Chuta Kama, told us, Mil Sudulasa, you hate this much, you Nama Karanjin and in the life cycle, Bulino, you call life cycle of the rituals that you change your Nepal Vasaka Kalamuzi, Yakona, Tab I will not change Zula Chipin Okno, Yudakone, Dunaneta Azimaya, Netamoro Azimajula, Nordivizula, Badra Kali, Lute Azimai, Indra Nizula, Congress of the Azimaya, Samanazul, Athena Tab I will not sponsor Hilayin Kedungal, Tisana Goblin Goblin, for example, Chipisa Shulaki Moshu, Lazim Patiuna, Sukubaha. Chisa Shulaki Moshu, Baluatariuna, Sakuna. Maharaj Ganjuna, Uchatua. Banimurena Tamaru. Indra Tokyona Wongo. At Akshwenuna, Mahalakshmi. Luvayata, Nagar Palika, Mahalakshmi Nabila. Julia Kageja Sanadasa, is it a conscious effort? Is it a conscious effort to minimize our culture? Is it a conscious effort to acculturate in such a way that we don't exist, that our culture doesn't exist? That's a Malaysian Guthi to believe Takuilum Balataka. What is Zuli, Jesus Suresa, Jisa Yukwe analysis Yaduna, Newa the Functional, Unchannel Haduna, Jisa young people, Jisa Yukwe Kishimio Suraduna, Yukwe Kishimio, a program, the project that Bizarre the voluntary Kishimo Ho, the Skisarani Zoo. Alhamdulillah, Meo Kata Sujan Nepal as a thermo yoke. Even Yabla Hindu Dharma Guma Buddhist Dharma Bay, but I can't say Jew Dharma all of their Jew Dharma to Newa Dharma. Jew Dharma Newa Dharma. They can Nepal Samvat, Jew Nepal Samvat. We are almost running out of time. This is our last one. Okay. Can I have 3 minutes? Sure. Okay. Give me 3 minutes. Nature worship we worship both good and bad. We worship deities and we are peace demons. Because Ajima Dio Hale Kishimajita, Chama Ajima Dio, Nepal Mandaleta, Raksha and Sompi. She get carried. Matlab Jean had to switch to PowerPoint available and which piece to PowerPoint Balgobana Disanju. She's a too much concerned duty. She will culture yet the chap Dunichunga. Belief system do. O belief system one. O belief system is not sure like Mushu. Jew Dharma Neva Dharma Kachi, Hindu Namako Buddhist Namoko the Kachi is not sure like Mushu. No pista sure like Mushu. But the Pukan is on Duana Stable. These are way forward things. It's Sukanadasa. These are Jawu. We don't act well.
We talk well, we analyze well, we don't act well. This is also concerted action. So awareness, knowledge, authenticity is being lost. Yes, modernization is a good thing. Yes, practicality is a good thing, but authenticity cannot be lost, because if we lose that, we lose our values. Mutual disagreement to minimize people, to scale them down, to put them down and only uplift yourself. Swabiman, to personalization, what is on Rogeta, Tinewa Taponzi, and Antewaya Tatasuda, to World Heritage Sites, Ataka Intangible Culture, so Red Mamoni, this is a Poshis and a Guthi Sosa, Dr. Gelna Date, Tugafasa, we would be great. We should have these, because that will provide us the legal framework. So enforcement no way. Had as a Nepal has the 2003 convention. Anumodi Albato, Chisa, Sarkariatno, Yamala, Yawchike, Putade Chike, tool the Chike instrument. Actually, I think you consider it. Thank you very much. Yokosuba was saying sharing. Okay. Yokosuba, Dr. Suladar, it was an enlightening speech about talk about intangible culture. So, to the discussion session, to the Kanabala Sala, session is saying, Raskusia. Tanazai, Junior, article war, Yasazi, and Bonaz, there. But then, possible to go to UK, Polistami Bazu, Dr. Dharmabat, Dr. Shakezuna, they do Yasa, Tatedu, Dr. Dharmabat, Dr. Shakir, founder of Possible to UK London, Possible to UK, has forwarded his question as below. My question to Mallake Sundar, please. What is the situation of Guthis, including C Guthi at present? My experience from my village is that they are not so strong now because of ownership of Guthi estates have been transferred to individual people for many years. With the development of modern electric crematorium, how necessary is C Guthi? So, Nesa saying, Monlake Sundar Zuyata, workers on these are saying, so to be Lisa Bial in a pier. Monlake Sundarju, Sinkanadi. Malajo, Chalo, unmute and the mic. Jula. Unmute. Jozalapa, that's how. Chigu, Yasa, they, Disable, Amsik Rupa, Satyaka, to Adunik, they go Pranali to Wedunga, Kashana, they, Yede Serga Damalkala, Sonigole, they, wo Tonkone, so they, Biduti, Sabdagrion, Dota. Meu चाहिँ to पशुपति थियो ठसे चाहिँ यंगल लगा डल्ला सा वो पशुपति विकास कोशी पाखे व्यवस्थापन यंत्र पे गो अन दासस्कार ये पे चाहिँ मनुतो दो अब सो चाहिँ भतिजा देवकया माउ डको चाहिँ जैन बिउली कारण हैन सी गुठिउ चाहिँ ज्यादको सी गुठिया गुठिया त्यसो ये ज्यादको चाहिँ वो पाखे चाहिँ जेसो पति दो तर आठो डको खचे अथवा केवल चाहिँ सोनिगा दुने न यही लागि जको चाहिँ थो सत्य खट तर चाहिँ डकोटा चाहिँ सत्य मको अले नपना प चाहिँ गुलिके चाहिँ मतलब चाहिँ समुदाय दुने जस्तै चाहिँ उराते दथि गुवाज देव दथि जब देव दथि सम देव दथि आफला चाहिँ मतलब चाहिँ नेवा समुदाय दथि अजन सी गुथी चाहिँ भूमिका तस्कै प्रभाव गरेको ठाउँ चाहिँ जसो मोबुटु पठिपटि चाहिँ सी गुथी चाहिँ मतलब ठो संरचना पठि चाहिँ मतलब सेनो चाहिँ मूलत चाहिँ सिसटे चाहिँ समुदायले चाहिँ पठिचा चाहिँ सेनोपट्टि चाहिँ दिस अनुभव यन्त्रपट्टि दु नत्र गाडला सी गुथी भूमिका चाहिँ अझ न नेवा समुदायले उलिया पट्टु गर्दनी Yokosuba, Monlake Sundarju, she was saying Lisaya Niti. As a Jimio, Nasayu Pakiwanetana, Gu Dr. Shobit Shakya, where Estonia Sama Shota Juadi, Shobit Sakya Juyataji. I think Shobit is here with us. If you could unmute and ask a question in very, very short.
Okay. यो मुख्य Myanmar so content so that since Jason Yable for Guthi collabले चाहिँ नाफिउ थे नापाच्छ थे रका जी पहिला पृष्ठभूमि देका ले अनाउना चाहिँ आयु collabले अपना चाहिँ आयु ख चाहिँ हामीले चिया गजी आउँछ जस्तै मतलब के सर यो यो presentation and अठे जुल ल अले हामीले जिसमा चाहिँ थोड़ा सांस्कृतिक अले गैर सांस्कृतिक का अले नापाइ जीवन शैली अनुसार जित सुसु माउ ख वो समयले वही अनुसार चाहिँ उके यो आवश्यकता पूर्ति आते गुठी देगा तो ख वही अनुसार जीवन शैली ना पाना मोदु वो हिसाबमा सबैले जिस नापा छे तथा चाहिँ यो कुक्ता लखनला चाहिँ छ आठुटा यो टाइमले आ बरु न्यानी चाहिँ वन्त जिउ आयु आवश्यकता छु वो आवश्यकता यो लागि के त चाहिँ जिस गुठी त गिरा छिलफे कास्पे बाटे तो ओके छु चाहिँ दिस मतलब के सरलाई अले मेरो छौ खने छु चाहिँ आ जिस यदि न्यानी मुनि फसा जिउ लिगल फ्रेमवर्क आ देश चाहिँ छु वो ओके त गेना परिमार्जन यामले ओके बारे मलाई के सुन्दैछु फोन यासा हाना चिकित्साय लाभला कृपया प्लिज त्यो चाहिँ विश्वविद्यालय दिदी हजुर सोभिटी आपला चाहिँ सुभा यी चाहिँ मगाउ कारण जी चाहिँ लिपयुपति यो प्रस्तुतिपट्टि चाहिँ व्याख्या यामफ्ट माफियान छ चाहिँ नेसा ज्ञानदिला द अफसर चाहिँ होला जेसुले गुठियो लागि चाहिँ आयु आधुनिक चाहिँ मतलब दृष्टिकोण चाहिँ सुले समस्या सुरु गर्न लाग्छ जिउ गुठी अझोन संस्कारवादी कथा चाहिँ रुढिवादी कथा चाहिँ आपल गुठी त यहाँ हुन्छ चौपटी दु उके दिन हसन चाहिँ कनौटो गुठी चाहिँ छु प्रब्लम बा च्यालेन्ज दगा सो पितृसत्तात्मक जिउ आपल गुठीले चाहिँ मेजु पिण्ड चाहिँ अन चाहिँ ठामहरु गुठीले देशिका भूले चाहिँ चोनी बुला मु भएला चोनी बुला मेजु पिण्ड चाहिँ उस्तो चाहिँ मान्यता बेताउपटी जिसम बकना गुठीले चाहिँ मतलब चाहिँ नेतृत्व याउली न थकली जीवले नोकु जीवले बाछ्यान्जे जीवले चाहिँ मेजु पिण्ड चाहिँ वो अवसर चाहिँ बेताउपटी मर छौ ठोगु चाहिँ मतलब चाहिँ सामन्ती चाहिँ रुढी संस्कार ख ओना छौ चाहिँ आयु कारण चाहिँ आयु यी कथा चाहिँ मोलेर गल उइटा जिसा चाहिँ हिके फ्याक्टमा देउ चाहिँ चुरगाल छ नापा गुठी चाहिँ मतलब चाहिँ आय स्रोत मूलत चाहिँ सामन्ती अर्थव्यवस्था आधार है छकु बुँदै वो बुई चाहिँ मतलब चाहिँ सम चाहिँ मतलब चाहिँ भएरै वो भए चाहिँ मतलब चाहिँ पुरा चाहिँ मतलब चाहिँ छकु कथा चाहिँ मतलब चाहिँ टसी प्रति अब्लाइज दिया चाहिँ वहाँ चाहिँ वापी उनसे गया गुठी त माउ चाहिँ बा चाहिँ मतलब चाहिँ यंका बिउ तरकारी यंका बिउ इलेबले चाहिँ मतलब चाहिँ ची चाहिँ मतलब चाहिँ बुटवाटे यंका चाहिँ अच्छी याओ मल लगा डल्ला सा गुठी चाहिँ मतलब सारा चाहिँ मतलब चाहिँ शारीरिक श्रम ज्ञान वो निशुल्क यान बिउपट्टि चाहिँ गु वो सामन्ती अर्थव्यवस्था या लिडस है ची गुठी त नाप ज्ञान होइ चौका आला चाहिँ जिउ चाहिँ सामाजिक संरचना राजनीतिक संरचना चाहिँ यो पावेर होला सामन्ती चाहिँ संरचनालाई मन्ट वो जो लिएर न चाहिँ मतलब चाहिँ गुठिउ चाहिँ गु चाहिँ मतलब चाहिँ अर्थ प्रणाली क वो चाहिँ एकदमै पानो कारण न गुठीले समस्या जसो ओके आइट लो कथा चाहिँ मतलब ठोकने चाहिँ गु कथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सो गुड गभर्नेन्स चाहिँ गु कथा चाहिँ संस्था यहाँ के लागि नो कन्सेप्ट होइ छ उठी चिता आवश्यक दो जिउ चाहिँ परम्परागत चाहिँ छौ ती समाज त न्याकीपट्टि समाज त चिनाटपट्टि चाहिँ छौ संरचना क तर उही त नापयु चाहिँ मतलब सामन्ती सोच कट रुढिवादी सोच कट चाहिँ बक्से आधुनिक आवश्यकता कट तुइ त हिका अथवा सम्बन्ध झिस चाहिँ झि जगत यामको छि जगत यामको सक्ले तना चाहिँ सल ब्याका चौ चाहिँ गुठी त ठौ यी कट लेउ कट चाहिँ गयाउपट्टि लिडरशिप गयाउपट्टि गभर्नेन्स गयाउपट्टि चाहिँ रिसोर्स चाहिँ व्यवस्था या मार गाटेपट्टि वो जिसले आजिस चाहिँ बिचायामा जिस सल या यक्क सुबा मलाई के सुन्दैछु त्यो चाहिँ त्यो निको नेसैना बानक चाहिँ लिसा दिया थियो जी भन्छ का सबै जो याद चाहिँ त्यो विद्यालय जी आछि त्यो कार्यलाई न
दक्ष लिपावया चाहिँ सेसनलाई आलोक सिद्धि तुलादरजु सम अभियन्ता जिमध्ये दक्षिण चाहिँ छु नेपालमा चाहिँ छ नसा जुजु भएका त चाहिँ त्यसको चियाको चाहिँ नसा चाहिँ अनम्युट हैन सही छ keep it very short हजुर सुबा योको समितजु तो डाक्टर ज्योति यो लास्ट प्रेजेन्टेसन यु लिन सके जिउ चाहिँ तो छौ कमेन्ट नमखो क्वेशन नमखो तर कल टु एक्सन ने ख खैतला ठिक पनि सेमिनार चाहिँ नलेज शेयरिङ यो लागि खस जि चाहिँ तो कल टु एक्सन चाहिँ सडनली वोलिन चाहिँ छेमा फना छ न तर गुलिना तुकी नलेज बिल्ड जु दु गुलिना एनर्जी जिके चाहिँ तुकी वो दु उके त चाहिँ जि याक्ने एक्सन ने यके माउथे छौ तान्जुना आठो गुलिना जिसा तो स्पेशली थोसिया ना भयो सेशन ने सोंगु नु इनिशिएटिव्स खाना जना होला क्याली जात्रा अजीज अलि बाखन्ने ने वा तो यो चाहिँ जिउ इन्टेन्जिबल हेरिटेज यो चाहिँ कन्टिन्युटी लागि चाहिँ एकदमै तरौ बालाउ इनिशिएटिभ ख तर जिउ वरी चाहिँ छुदासा उके त चाहिँ गेना सस्टेन या इन्टेन्जिबल दिउ सस्टेन या जिउ ट्रेडिसनल वे दिउ चाहिँ गुठी गु आयस्ता ख वय ख तुकिला जिसा चाहिँ आयस्ता छुमरु अलि अजीजे चाहिँ इन्टेन्जिबल हो टेन्जिबल निगुली दु प्रोडक्ट्स ला अन बजा सेलरी तर उकियाना अलि स्पेशली म्युजिकली चाहिँ इन्टेन्जिबल चाहिँ जुली उके त सस्टेन या त जिसा किसिमको इनिशिएटिभ किसिमको क्याम्पेन याके त थोरै सेमिनार एज अ फलोअप चाहिँ सो टिक्टरौं सब ग्रुप सब कमिटी चाहिँ देखा एक्चुअली ज्या याके के त ब्रेनस्टर्मिङ याना वर्कशप याना न्याउन्यु खला दिउ चाहिँ जिउ छ चाहिँ मति वोली तन चाहिँ सक्न पास पिन त छौ आवानी हुन्छ नाका सुबा कसको चाहिँ भयो चाहिँ सिउ सुझाव सिउ धापु छम चाहिँ झिसन यातना हो मु बिया यो लिचो कथा चाहिँ सब छु चाहिँ इन्टेन्जिबल हेरिटेज या त पिवा बि त टेन्जिबल बिजनेस मोडल न माला दइ चाहिँ जी चाहिँ ताका थन चाहिँ छु अब नेन ढुङ्गा थुकी त थो सेसन थो डिस्कसन सेसन त पछि आके त आलोक ju यो नेसा यो शिक्षा लिसा मखु तर टिप्पणी प्यादी त जिसो बि मास्तिवा संयुक्त प्लिज अलग सिद्धि तुलादर अन्यंगुली for intangible culture बारे बेकलन याना दिला छिपिने वर्कशॉप याना दिसा फॉलो अप याना दिसा तर छौ जानकारी छु भी मास्ति वा धासा जिमसन जिमे शो छौ कमिटी देखाउदु intangible culture यो बुलिन खवै वइरो जिसा समष्टिगत रूपमा गेस्वेउ छौ थिंक ट्याङ्क थे छौ मोटिभेसन थे छौ इनिशिएसन या हो सो नक्तिनि छिपिसा बिजनेस मोडल थाला जिपिना बिजनेस मोडल तकला मौना तर नलेज बिल्डिङ मोडल हेल्पिङ इच अदर मोडल मोटिवेटिङ एन्ड इन्स्पायरिङ मोडल तो त्यो जिसा खराया जायना कमिटी दु सो या जिले से सफ्टवेयर do within next 2 weeks it will be announced. Thank you. यको सुबा सक्षित थौ या बक्ता पि अले चाहिँ लिपापि अथे चाहिँ डिस्कसन सेसन या चाहिँ बोधिकाई दिबि दक्षित चाहिँ यको सुबा धासे जी संयुक्त श्रेष्ठ सो जिउ चाहिँ थर्ड सेसन थने पचाके अले तुकी त र्याप अप या त तको सेमिनार यु गुलिन खा थौ जुल तुकी चाहिँ लिपाउना जिस छुछु या फै अथवा चाहिँ थौ यु चाहिँ whole program just to wrap it up I would like to request the president of PPGUK Board of Trustees Mr. Ojesh Singh. Thank you. Yoko suba बाजु संयुक्त श्रेष्ठ जु अहिले मेरिलिना फ्रिसोनी जु या त आशया नापांगु न्यू session या त चेयर याना डिगुली I would also like to thank all the presenters who have been so in depth within the given time of 15 minutes to present their thoughts. I would like to thank all the participants who have been patiently been with us for over 3 hours now. This is our first seminar of this kind by PPGUK UK, but this definitely will not be the last one. But so we have learned quite a lot within this seminar today. We definitely went a mile wide. We covered a very broad subjects from Nepal Samvat and its challenges and also its solutions. Not just that, we also received few resolutions even during the comments and question answer sessions. So we'd like to thank all of the presenters and participants for that. Going further, we had also been able to go into the political issues
intangible heritages, Guthis, and even classical Newa literature. And not just that, not just these deeper issues, but we have also seen the innovative practices such as Ojesh, Newa, and Kalijatra, which has actually brought quite a warm and fudgy feeling to all of us. And it just shows that how these innovative and contemporary practices can help preserve and promote our culture to the wider generation. So it has been a very successful seminar, I believe, but then there has been learnings as well. There might, and we also apologize that we might not have been able to take all the questions that were raised during the session, but what we will do is we will have half an hour discussion session from here. So anybody from the audiences who would like to ask questions are now allowed to ask questions. So I would kindly request all the presenters to be online for next half an hour. And I will end the seminar here on, but we will start the question answering session. I will request my co-organizing committee members, Sangita Shrestha, Marilina Frisoni, and Sachatan Taladar to help me moderate the questions. First of all, I would like to ask Dr. Suvarna Vajracharya to ask question. He has been raising hands a lot. So Dr. Suvarna Vajracharya, you are more than welcome to speak now if you would like to ask questions. Ojesh Singh Pasapucha Guthi UK Palthaya Chaini Nida Kyangulasta Ju Dunulka Nise Lasana Napa Pinturando Ji Bisasana Chaini Castan in Yamal Yukedu Esano Chagusanda Rubik kind to the Kaka what's that? In Nato Castani get Jenna no Esanta Bino she's any Paspinton Laimuku Usra, Nepal Samvat itu Chinese, Jisan Chinese, Solar Nepal Picanadilla, Supriya Manandhar Putala, Meju Supriya Manandhar Putala presentation, Jenny Yuke Bala Content. As a research, it was a great work you have done. Tada, Jisan Chinese, Tanaka Mouth to the Nepal Samvat they would study Balaka Chisan Yafekman. Sada, Nepal Samvat they would any Tantanu Komoko. You Bectius Katon, any treated any Hilegu, treated any improve Yagu Kont Hasantabino, Chisan Gayat any policy mitamanda, the clan hapa, Sambandit, Sarakot Valatalis any 200 capekama, Alekaya any treated in change Yausano. Gukotan change Yama, the cousin Chisansani, the Mesa Halayam, Tola national policy. It's not something ordinary. Nepal, they say it's any Tontaka Raja, Nepal Sambat Dukuyata, Ayago Rajang, Asasakan Santani, Nepal Samit, Svikar Maya, and Nama Matrutani Sarkarantani, Nepal Sambat and Rasa Sambat Koitala. Constitution they could do no Mane Constitution they will the clan happen to in Nepal some way matase in some mota tablets any Nepal some in some any Bihari children prepare more okay I'll prepare more car on the tablets any GKS any Balaka Salamorni Nepali videos any Tichi Katanzulins any Jisan Chili machine. So idea any you have to rethink about it because 1141 years. Twitter, how can you say it is not practical? Numbering it is not practical because you can count from 1 to 30 days. Tada. I say 41 वर्ष तक गए ना मोनोटेशन Twitter चाहिँ चलाया न चलो थोड़ा चाहिँ नि थोड़ा न शासन मोवाटले Twitter चाहिँ नि सरकारी चाहिँ नि हिसाब है इतिहास फुको चाहिँ नि नेपाल समतन चाहिँ नि डकुमेन्ट यान्टाउ दुधासा जिसा जी थोपेम न्यामेशा चाहिँ जिमचम न्यामेशा चाहिँ नि Nepal Samvat is not a practical dialogue. You have to think very, very well. Well, Dr. Suvarnaju, question was precise and decided.
Alleging that notes, I'll come to the end. That notes, Rasa, Tuketa, Jin raised a question to Chinese called Soidism, okay, Chinese, Rasa, Twitter declare Yago, Chison Yamaju. Our website and Twitter from October 2010, who Nepal Samvat Suru the Ladagas and declared Taudu, Totani Mile Mazuni. As a proposal of a project, as a study group, you can do that, but not as something declared through an website, because this is a national matter. If it is something belong to non-Newars, people could have taken action against you. Okay, so last adamant Zuluki, maybe they might take action against you because this is against law. Okay, treated then that's that no nasa. Gigi, Naplaga Konana, treated any Yaptena, Jiu, the Sahala Yanata Dasa, Al Sarkarana and Lipawaya and Jesus Sikare, after Mokus Dasa, to Sarkarano, Jesus Nilatoni, oh, Chippy, Milamodu Katchimta, Chippy, Dati Milamoduka, Jimson, Nepal, Paria, Sambat Genaya. So you call him such chicken newly to get we have to be very considerate of what we are doing. So please take considerate of my this is a kind reminder. Thank you, Suvarnaji. Supriya ji, Rukshana ji, Chikpin ke wekayu lagi reply to Sasakata please. In concise short form. His remark was quite long, so I'm not sure how the burden of giving a concise remark falls on me. But thank you very much, Suvarnaju, for the remarks. A lot of loaded questions as well as assumptions in there, as well as a veiled threat of some sort that people may take action against me because of my participation in this Solar Nepal Samvat initiative. So that was quite interesting. I welcome that as a response. I mean, I'm not expecting that, it's going to be super hit, super popular all at one glance. Getting to know and understand a new concept is always a challenging task, and it takes time for people to understand and come on board. Okay, so to address the questions. So your claim was that for 1141 years, Nepal Samvat has existed. So how can we say that it's not practical? Now, the question here is, the question kind of back to you is, how exactly do you define how something is practical or not? Like, yes, it has existed, but is it widespread? Do we want it to be like this token thing where every day during Bintuna rally, you take it out of the box and we look at it and Bintuna, and then rest of the year, boom, back in the box. Nobody cares about it, right? Like once in a blue moon, you look at it and that's it. And is this the kind of tokenist existence that you want for our intangible heritage or not, right? So that is a question I'd like to ask you. With regards to things like, have I missed any points? Let's see. Yes, okay, so with regards to government lobbying and so on. So in our presentation, we clearly articulated what are some of the reasons why it is so challenging to incorporate the Lunar Nepal Samvat into administration, judiciary, banking, technology, and so on. If we want to move with the times, we need something that is compatible with these. And that's why we believe that moving into the Solar Nepal Samvat will help us transition into an updated sort of scenario for our intangible heritage. And of course, again, I want to reiterate, there's been a lot of misinformation. There's been a lot of misinformation where people are saying that we're trying to remove the Lunar Nepal Samvat, we're trying to replace it. Again, like that is not what it is. We've clearly said that it will still continue. I mean, I myself, like whatever rituals I need to attend with my family, it will be along the lines of a Lunar Nepal Samvat. But for practical purposes, if I want to use it at the bank, if I want to use it for banking, if I want to use it in tech or coding, whatever, I need something more practical. And that is what this initiative is all about. And we intend for these two calendars to exist side by side. What we're doing is we're broadening the scope of the Nepal Samvat by saying Lunar Nepal Samvat, yes, cultural traditions, all of this rich history, and then the Solar Nepal Samvat, which is the practical thing that still commemorates the Lunar Nepal Samvat, but also is practical. Thank you very much, Supriya. We will go to the next question. There was a gentleman, I forgot, it was Kopendra, was it, who wanted to ask a question? Yeah, Kripendra, sorry, Kripendra, could you please ask your question now? Sorry, I had to interrupt.
Okay, sorry. Actually, I was not trying to ask a question, but I was just trying to make a remark on the intangible heritage. Okay. That there have been some controversies, such as we have been. So I have met like the Nipuna Shrestha Singh, who is the head of the culture unit in UNESCO. So I actually went to meet her for the coconut issue. But then I learned that there is this idea of intangible heritage, and the Guthi can be kept as intangible heritage. But then when we want to lobby in favor of the Guthi as an intangible heritage, then we also see the issue of like the animal sacrifices. So these are the kind of challenges, and then the animal sacrificing, that the animal rights lobby always do not want such institution to be inscribed. So that's kind of challenges we always face. And I've been trying to study on this topic. So there are other ways where we can work, such as working on like the script in the language, because in Ladakh, the incantation has been a part of the intangible heritage from India. Am I being clear? Sorry, am I too fast? Yeah, you are, yes. So there are these kind of things where we can focus. But a few days ago, Kashi sir and I were in a program together, and the Nepalese official were always focusing on like past history, like in Lichivi era, like old Lichivi era. So they were not focusing on the like major contemporary issues of our present heritages. So we see this challenge that they are always trapped in other chapters, trapped in Sanskrit and other languages, like old languages. So this is a thing where we faces of a hard time. So I just wanted to introduce that idea which Dr. Gala had presented, just because nobody was there answering. Thank you. Thank you, Krupendra. I see few hands being raised, and one of them is Hari. Hari, you could unmute your mic, and could you please let us know what your question is? And could you yes make it as short as possible? Am I heard, please? Yes, you are heard. Hello. Yes. Okay. My question goes back to the Nepal Samvat and the basis of this Samvat. It could be Supriya Manandhar or Rukshana Kapali. Maybe Supriya is better. My question is, do you know why Kachala Tho, the New Year, is taken as New Year? Hello? I'm sorry, I did not understand the question correctly, I think. Could you please rephrase that question? So now, yeah, I will repeat. All our Sambats, including Gregorian calendar, they have certain bases like the solstices and the equinoxes. The spring equinox is what is Baisakh 1st. The autumn equinox is the basis of our Nepal Samvat. I'm not sure if you know this fact. So as per my understanding, even though that is how the calendars may have been initiated, I mentioned, so in the presentation, I made an example about something called a Parva Sudhar, and the calendar shifts every 2,000 years, and how they need to recalculate. Yes. Because Magh 1 used to be winter solstice back in the day, but it's not anymore. Everything is shifted. So now winter solstice is on post 6. So what I would like to emphasize is, even in those examples that you're giving, it's not actually constant, right? So I didn't quite understand the context of your question. You're asking why the new, like. Okay, I repeat, please. I repeat. Okay, September 23rd is the autumn equinox, when the day and the night are equal. And if we shift this, the present New Year to 1 month beforehand, then it will embrace, because there is what is called Malamas. Due to the Malamas, the New Year is shifting back and forth within 1 month. And during that period, it must, as a necessity, embrace September 23rd. That is my point. So this is the basis of our Nepal Samvat, because we don't start Samvat by some English date or something like that. It's okay as long as we take the September 23rd as the
equinox means equal day and night. Okay, I mean, I'm happy you know about this 1 month shifting of our calendar. It means shifting of both Nepal Samvat as well as Bikram Samvat, because they have both gone wrong from the original track. That's my point. I think it's a good note to end. Brilliant. I don't see any question. And I think my co-presenter would like to answer this question. So, Rukshana, if you're online, would you like to take that on? Subama Dakshin Napala to today English calendar UT Adare saying Yakimoju. Only 123 September Yakusa saying Gileta, it was toy so contradictory Zulam. Only on our way as I to equinox, you not Hanui like Maku Gregorian calendar, 23, 24 shift Jasmine, or just not 18 to Nogumadi, saying Jesus, think my ash, one a kid saying it, or Vulu, to a Jisan group, this how historical landmark, so Gayad you do astronomical landmark Gayad you do. Okay, Vulu Panaya when you got to for today, winter solstice, the cats and that's all I take. I got a mocket, the first target way up Pana. As I say, was thinking my heart, twisting toy, self contradictory. That's what has any equinox, any 23 September, Zusana, any. June 20 October is a pass somebody, Yago Dean Kayako, and I call it assessing. What's the English calendar? 23 September, no English calendar, call. On our way, I think equinox not had like before. Only Anna Mafuzala on 23 September is in Lana to 20, well, a 3 year, as I say, Jean Damouse and to Liak House back. To solar somewhat this examine Yahan, Yapusung discussion Tanawana on the Umakla. Torai to take us where as a Tozai so 2 years and years, Hutchison workshops and Yama and John. Tassantana Bibina Bichar, I do is about to design Chison saying 2 years and workshops and Chison Yaknoya and Ariana. Pocotan Chison, Somatis and have to swell the Tassan, the Kushu would dish it, Akiras and Chison, Nepal Summit, the Genas and Chiliu, Malaganas and Sarkari stories and check beauty, and the Kushu would dish it and Tamjazum Kondu. We have on Jimson Yakna as Jose, so platforms, hosting workshops and Jimson's eyes and these and details and discussing the arts and music using. Gulino discussion, please. Mail session as a sweet on questions to start. Wake up in the Zayat. The Tomaji Kanatun Sarah saying, Swimutula Zike, Nasanchi saying, wake on us and Lazar do. Swimutula do 2 questions. The usual Virginian master where solar calendar you call. Solar cooking and huge and Nepal Samvat calculate out have. We are going to lose our authenticity. I don't know why we have to be practical. I can't understand it. Has a huge and modern Nepal Samvat decto where it was not for running the government. Government run yet they have this Gregorian calendar, they have this what you call incorrect this Bikram Samvat. Let them use that. As for us, why can't we just maintain our this Nepal Samvat in a lunar way? Because in one way, to actually what they call maintain all the calendar is very difficult, because the precision of the equinox, the North Star that we see today is not seen 4,000 years before, and will not be seen 4,000 years later. So from my point of view, why don't we just maintain as it is for our Tithi? That was meant for Tithi, not for running the government. It doesn't have to be practicality. We don't change something because of the practicality. If we start doing that, what happens is that they will start changing our language, they will start changing our Guthi, they will start changing everything just for the practical reason. Thank you. Chu Bizayola is a quick Suba. Athana Dr. Santabir Singh Jude, we're going to launch a question present this way. Santabir Zu. Suba Josolopa. You told the Ganyasadu, and Iapamoru, who called Dr. Mahesh Man Shrestha. Nyasa Tulirasa, Atana Jisangu, and the Newar the Kotrawage and Ostitu, no new Australian and Pasa, Sanskriti, you Ostitu Kilagi,
हरिनेङकै नेवार छदी छपजी माउ आवश्यकता खना अकिन चाहिँ डाक्टर महेश मानजुरी नि ठुलेर काडा छ ठौगु नेवा ननाउने यो नेवाटे विकासमा विनाश नेवार विनाश यो चाहिँ को लागि गु किसिम सिस्टमेटिक पला बनाउने नेपालले दियो चाहिँ अहिले गु किसिम हरिनेङकै चिची दिए चाहिँ जी नेवार जाना सहयोग या माउडु छोखेसको ल्याबले आर्थिक सहयोग कानुनी सहयोग अहिले ढाँचे अन चाहिँ फिजिकल सहयोग वा फिजिकल सहयोग चाहिँ दिन्छौँ सम्म गेना सहयोग चाहिँ एक सयजना यो निन्दु छ बाले सुबा महेश मान्जु थनदी हजुर Good. thanks. Weka napa yoke tai thano ji sonikle tonadi rungu nepale tonadi rungu ole tai newa khelena yoke jaine di rungu ju karna yana weklon thike chuta de bila atho khasna tai yoku idga bidese ton rungu pinyo लागि नेपायो स्थिति छुटुरियो चाहिँ उली ज्ञान मरि जुन यो स्वाभाविक दे जुल खन्सुलेर गार हल्ला छ झिउ थनो चाहिँ नेपाले झि सोनिकले झि नेवा त्यसै चाहिँ खना जुन छुलेर गारले झिउ नेपाल भाषा नमरिन झिउ आदिवासी नेवा जाति नमरिन त्यो वास्तविकता ख त्यो यथार्थ ख झिरङ्गिरे दुने अथवा सुइरे दुने चाहिँ नेपाल चाहिँ यथार्थ जुल ठिकैको लागि चाहिँ आफ्नो समस्या जुन चाहिँ छुइ चौँ दुलेर गारहल्ला छ चाहिँ झि ससुपी नेवाट चाहिँ उपयाना कि नेपाली काङ्ग्रेस दु कि एमाले दुने दु कि मुख समाजवादी दिने दु अहिले इपी फुकौ छुलेर गारेहरूले ओ पार्टी हो चाहिँ यो कारण याना चाहिँ इमसँग चाहिँ पार्टी विरुद्ध भनेको चाहिँ साहस चाहिँ यही मुखो जिमु नेवा भाइ घेना मक्यो जिमु नेवा जाति घेना मक्यो हरे इमसँग बिचाय यही मुखो पार्टी चलो वहे चाहिँ खौको जन्जोंडु वो कारण एना ठोछौ टहरंगे समस्या जन्जोंडु आ जिमसँग बाटेर चाहिँ छौ घेना चाहिँ को जीव भए जीव जाति मक्यो या माउ छुदुलेर गारेहरूले जिमसँग खनत जुराउ कठाउ चाहिँ संविधाने मरुपटिएलाई झिक्छ तस्कै ठाउको खन्दुल संविधाने ढु चिज संविधान चाहिँ स्वायत्त क्षेत्रीय अधिकार वीर गाडाहरू त्यो स्वायत्त क्षेत्रीय अधिकार ढाउली चाहिँ सांस्कृतिक अधिकार दु आर्थिक अधिकार दु सामाजिक अधिकार दु ठु अधिकार दुसनो झिस छाटो थियो छा मक्याउ ढकारिया थौकुने जिपी वन्यु सूर्यान जुजुनौडु तर ठुके जिम्टो छुलेरहरूले गेमाले माओवादी नेपाली काङ्ग्रेस पासपिसन चाहिँ ग्वाली यान्छौँ मरु कारण याना ठुलो एदु कारण याना जिउ नेवा भए मकी फैलेकी मफै जिउ नेवा जाति मकी फैलेकी मफै थो चाहिँ छौ अनसर्टेने जन्छौँ तर एन नेवा ध्यान चुके सालिर गारला चाहिँ चिक्नी चाहिँ संस्कृति अथवा साहित्य अथवा चाहिँ लिपि पाखे चिक्नियो चाहिँ इन्ट्रेस्ट अप हुन जाउँ तर नेपाली दुनिया स्थिति गारला छ नेवा जातीय मरि हुन्थ्यौँ नेपाल भाषा मरि हुन्थ्यौँ एजुली याना ठिक पाखिन चाहिँ सिक्नियो ध्यान साल्ट जिसोयुक ठिक पाखिन सिक्सपति चाहिँ ध्यान बिया चाहिँ नेपाली दुनि जिउ नेवा जाति हो नेवा भ्यायो लागि चाहिँ सङ्घर्ष यान्छौँ पिन्यो लागि सिक्किसँग चाहिँ नैतिक समर्थन अथवा सिक्सँग मेरो किसिमको समर्थन दिइदिउँ चाहिँ आस्का स्वा थरो चाहिँ मेमा चाहिँ लज्जु ढाँचान्छी भवेश प्रधानजु छु क्वेसन चाहिँ Hi, am I audible? Yeah. Yes, you are. Yes. First of all, I would like to thank the organizers for such a brilliant coordination, and I can see also Professor Gellner here. His work has helped me a lot on the Newa people. My question is for Sunita Dangol, who's worked on Kali Jatra. I would like to ask her what were the difficulties she faced in working in various towns in Nepal, which she has mentioned, depending on the various composition of ethnic people in
those towns. So where some towns like Ilam having lesser composition or more of Newa people in terms of that. Sunita Ju, chị thân đi là thế. Sunita Ju. Hello. Adata. Thank you so much, Voice. Thank you. दक्षिण नापा चाहिँ नेवा community चाहिँ focus yana चाहिँ Kali Jatra workshop yana ka. We were more focusing into Newar community. We wanted to go to different places where Newar people reside. But then later on, what we had actually realized was not just Newa people, but also non-Newars, they equally enjoy Ranjana script, and they are equally, curious to learn and also embrace Ranjana script as the script of Nepal. Okay, ni say Jimsa Lipa say Newa community moko. We should not limit ourselves in a Newa community, so we should be open to everyone, not just depending upon the ethnical group, but also depending on the age group, and for everything we should be open. That was the main theme of our workshop. And then Lipa चाहिँ छुयाना दाछि बिस्तारै चाहिँ नन नेवा कम्युनिटी अथवा नेवा कम्युनिटी न्याउ एथनिकल ग्रुप जो छ न चिकी चौके लागि ओपन ज्या तर उकेना बेसिकली लोकल पार्टनर्स त चाहिँ गनेपति लोकल पार्टनर्स छ जिन त इन्भाइट है वो अनुसारमा डिपेन्ड्स होला. So it was not just our choice, but it was also the choice of local collaborators. I guess I hope I have answered Valasthai's question. Yokusua, Sundaju. Thana chi thana daya sakiju nasan chi चाहिँ लालन सुन्दियो दया sakiju. जोजोलोपा सकिस्तान थो एकदमै बानापट्टि चाहिँ थना सेमिनार ज्याजोंडो छि पासुपसा गुठिया त योको सुबा appreciate very much. जिगे चाहिँ हरेक फुक प्रेजेन्टर पाकी यो लागि चाहिँ जो क्वेशन दो तर यो पता आगा जो खाना चाहिँ जी छौ युको खा एकदम जित मोर पूर्ण चाहिँ जी भने नेपाल सम्बन्ध दियो चाहिँ बारे चाहिँ क्वेशन जना दि बटे ऐसा मेरो क्वेशन जना दि. Exactly, I'm not going to talk about Nepal Samvat. I know Supriya very well, so she know how to answer my questions. Okay. मेरो चाहिँ खसुरा लासा छि छ तस्का व नेपाली चाहिँ परिस्थिति खबले चाहिँ छि तस्का निराश यो चौंडु महेश मान जुयु चाहिँ डाक्टर महेश मान यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन खाना भने यङ जेनेरेसन चाहिँ नेवा भ्याट वटा होला. That is true. मलाई तर छि नेपालमा पिन चुन्सला पिन जिमि छ जुन नेवा भ्याल हुन्छ ना तर पिनेपी मोनोटेसन चाहिँ इन्स्पायर याना चाहिँ छि जिमसा चाहिँ मेरो छुटे चुनला लासा यदि नेपालमा चाहिँ पि मोनोटो सुन पिनेपी आउ चोन दुर्गा डालासा they can contact us, who are the people around the world that serve is preserving Nepal Bhasa. Uksma चाहिँ छ यदि एक्सन वन डाला चाहिँ जसले इन्टरनेट स्प्रेड नेपाल नेवा भए मसपि मनुट पिन प्याए पर पिन प्याए चाहिँ मेक्सिकन जुला स्पेनिश जुला हरेक किसिमको चाहिँ जाति मनुट इंटरनेशनल कनेक्सन जीवले so they inspire to oh we also have their own Nepal language. Ale Nepal wana चाहिँ they learn from their parents, they learn from their grandparents. This is a good point. Mahesh Dr. Mahesh Man जो थोसो चाहिँ जिउलाई चाहिँ तरुण उपलब्ध का मेरो सोच चाहिँ जे कमेन्ट आन्सर डाक्टर फेलिस ओटर वेकला चाहिँ गो प्रेजेन्टेसन यान्दिला. So I'm very impressed that you did not use the word classical Newari, but at least there are some places you have used the word Newari because I am the person in the world. I mean, not I started that we just have to give up using the word Newari around the world. So that's why when I did the presentation in Santa Barbara University in 1997, from that onwards, so after that, nobody used all the linguistic people. But somehow every year, once in a while, here and there, so I see that Newari is not a good term. Newari is like a term for like a derogatory term, just like a view to the people who are just like a white skin. So that means you have just used the word N-E-W-A, Newa, classical Newa. So that is very appreciative. I really appreciate that. How did you inspire to use that? Because you are talking about classical Newari, and then you are using the word classical Newa. So how did you inspire to use that word? So maybe your answer to my question will be inspired to the other people that from now on that we need to give up using, because the Nepal government are still using the people who know is Newar or Nepal Bhasa. They speak only Nepali, and then they are still using the word Newari, because Newari is the term given by the Khas Nepali language, just like a Hindi, Nepali, Bengali.
These are things. So my question to you, Felix, is how did you get inspiration from using the word classical Newa instead of Newari? So, Dr. Felix, can you comment on that, please? Yeah, very briefly. First of all, thank you for the question. The thing is that, generally speaking, philological disciplines tend to have a certain time lag with, I suppose, other areas of research. It was really actually suggested or inspired by the seminar today. You know, and we're usually working with research literature that was written 50, 60, 70, sometimes 80 years ago. So it's, for me, also still a learning process, the whole thing. Thank you very much. Yeah, I would like to request all the participants from today, please, let's not use the word Newari in anywhere in literature, in Newa, also in Nepali, and also anywhere. So it has to be either Nepal Bhasa. Thanks for your comment. Yeah. Arjun Pradhan ji, weka pasap suku thia founder na ka, weka na lal unjun diu. Chiu question dari sane. Chi unmute yan listen le Arjun ji. Chi unmute mozu ni Arjun ji. Ajula. Sautarada. Sautarada ta isnai. Dr. Jujalpa, especially Dr. Mesida Makhon 4-5 वर्ष था वो के त दयाजी त मखाउन वर्षौं दरगा त्यो क्वेशन चाहिँ तैरी छ ल्या क्वेशन छैन जी क्विकली छ कमेन्ट या छ आज होला हजुर तो यङ जेनेरेसनले गुलिन नेवा मस्त प्याउ दिन्छौं दे आर डुइङ ए ग्रेट जब होला यहाँ चाहिँ गु चाहिँ इन्ट्रेस्ट के हामी चाहिँ याउ जाइ दिस सराहना यामा एप्रिसिएट यामा तो ग्रेगोरियन क्यालेन्डर नाप सम्बन्धित निवायु पुलाउपति क्लासिकल गु चाहिँ नि लुनार क्यालेन्डर दु मगला वो ज्या चाहिँ नि भचा पुवंगे ज्या माका छाजी थोडा लासनी जिनिवा जादि बाल के मिले मोज्या जीव शक्ति हरुन जेसो हुगा राष्ट्रिय चाहिँ राजनीति जिनिवा पक्षम विभाजित कि धर्मी नाम विभाजित गु बुद्धिस्ट गु चाहिँ नि हिन्दू त गु बिचे लागि एकदम टाइनी मनो चाहिँ निवा धर्म कारण जिपिन्छ दु मगला अलियान पिन्चोबी निवा त दुन्चोबी निवा त हाना जातिउ नाम चाहिँ निवा त आज डाक्टर महेश मान धिए दिला निवा त चाहिँ छला छ राजनीतिक सावना गुमा माओवादी गुमा चाहिँ कांग्रेसी गुमा चाहिँ येमाले तर निवाई इश्यू लाई लचित छौटिका जिसक माल्ने whatever our political thoughts whatever our religious affiliation एजुली पनि थोज्या चाहिँ बालावटी जा ख मोरने जा रेच बामलाव जा मखु मला तर पुवंक मला मिलेजिया जा मागा फजन जुजन रिक्वेस्ट चाहिँ छला छ डाक्टर सुवर्ण जी जापानी जमेस्त न प्लस आछि त न्यू जेनेरेसन ने गु होया चाहिँ निवायुलाई छु यार का वो भी मस्तिष्कलाई न चाहिँ वेस अफ रिक्वेस्ट पुवंक जाइन्छ Yoko Suba Arjun ji, to comment you lagi. Ojesh, I think you have some questions from chat box. You are still muted. Ojesh, you are still muted. Sorry, Dr. Gellner, you had a question for Felix, I think. Would you like to ask it yourself personally, Dr. Gellner? Hi, yes. No, he answered the question in the chat box, so I think it's fairly. But I did have a question. I did have a question for Jyoti, okay, which I put in the chat box, which is about the, how receptive do people think the Nepal government and also the current setup of the UNESCO office in Kathmandu is going to be to proposals for intangible cultural heritage? How realistic is it to expect that the Nepalese government will push items of intangible cultural heritage to be accepted by UNESCO? Jyoti, Jyotiju? Okay, where am I? I'm unmuted, no? You're unmuted, yes.
Yeah, okay. No, Dr. Gellner, I'm not very familiar with what the ministry is thinking right now, but what I can see is that UNESCO had commissioned a group of people, Mr. Divas and him, I don't know if you've seen that book, and what they had done is they had gone around the entire country of Nepal and catalogued what they think are the different intangible heritage items. And that report was submitted to UNESCO. I know up till there, but I don't know if the government is thinking ahead or even thinking about it at all. There has been no indication anywhere after that. Thank you very much, Tata. I hope that answered your question, Dr. Gelna. We are coming to the end of the show. We have actually overrun 1.5 hours almost. I don't think we will be taking any questions on Nepal Samvat because we realize that that's a very complicated matter. As Dr. Sachatan Tuladar already mentioned, we are already working on organizing the Nepal Samvat workshop where more than one ideas will be presented and we will discuss in further depth. I think we have got everybody else. I got Dr. Bal Gopal Shrestha raising his hand. If it is not regarding Nepal Samvat, you're more than welcome to ask your question, Dr. Bal Gopal Shrestha. Nepal Samvat yo bari lama ho तर छकुचा चाहिँ ढामास्ति हो चाहिँ छोरा क्वेशन म हो जो क्वेशन चाहिँ झोटी दिए त ढुगा नेपाल सम्बन्ध यो बारे चाहिँ नाचा गु सुवर्ण जुव वेको पनि चाहिँ डिस्कसन दिए छौं नि सोलर क्यालेन्डर लुनार क्यालेन्डर नेपाल सम्बन्धलाई न्यूली जुरेर चाहिँ काशीनाथ जुन एकदम बालको व्याख्या या ढुङ्को दु तर छौ इन्टरनेशनली सुटेबल कथन चाहिँ गु चाहिँ छेउ चाहिँ डोलन्डो वर्षको लागि चाहिँ छौ सुटेबल या लागि क्याल्कुलेट या लागि चाहिँ छौ क्याल्कुलेटेड चाहिँ क्यालेन्डर आवश्यक जु कथन गु सुप्रिया पिसन चाहिँ यान्छौ ज्या ख उकिया चाहिँ झिस 7 बिमा खण्डुला रा छौ चाहिँ जु वो लगे जु अनि मेउ चाहिँ सरकारहरुले गुण सम्मत चाहिँ सरकारले सरकारन चलाइरहेको चलिजी मखु यामा सरकारले ख झिस सरकारले चलाएके फड्डका चलजी आज जस्तै गोरखापत्र चाहिँ ठाउँ करे जिउ चाहिँ डेट फुकेट या चलजी चलन राइजिङ नेपाल न गोरखापत्र गभर्नमेन्ट तिथियो चल तिथिया त न उ कठै चल्या फो मफै खला खय मखु साइड बाइ साइड इसी सम्मत या त त्यही के फो वो थो खल अरे जिम्मेउ छौ चाहिँ जति डेट हेर्ने नाचा चाहिँ एकदमै बालको इन्टेन्जिबल हेरिटेज यो खौ एकदम चाहिँ हेर्न दिला को सुभा अले वेगला स्लाइटली एकदम हिन जग बियादल का नेवा धर्म म नेवा धर्म बारे चाहिँ उक्नु नेवा डे डब्ली पाखे चाहिँ नायो जुन न चर्चा यान दिनको ल जिन छौ लेखेन ठोक चर्चा यान ठोक विषय चाहिँ भति चाहिँ कुछ चाहिँ नुग्लेट वानी गर्न जति चाहिँ भति चाहिँ इलेबोरेट यान बिला रका ले जरा इलेबोरेट या त टाइम जुला थे शॉर्ट यान दिसले short je thuke se ji chura ta so yuda sa ji san yable tapani se bulina writers to do bulina ancient writers to do Nepal history le imsan yable chata ji chudai da sa there is syncretism of religions have combined so Hindu so Buddhist taka thake mofu taka emso comment and they do then there is a lot of literature which says that Buddhism was the first religion of Nepal and other things came in. The population was actually Buddhist and all the ruling families were Hindus. Ate they will do. They will thunyu tetaskin wakjana yukku jezo yukku barsa derungula and everybody only talks about syncretism and synthesis. Ajuzum zuzu guli brahmanization of fojawala uli se chisa to Hindu anabali Hindu they will not napashaiya they wish as a Hindu or Buddhist they upati nevateva pati is a rift napasivena Burma manemo, Gurzu manemo, and young Kanda. So it's something study and if you really look very well into how the Newas overview the world or the universe, Newata is what Labratnaji calls it Upayogi Badi. Upayogi Badi Chiu Dharma. Upayogi Badi Ruchurasa, Chita Chutu Jasalezu, Waita Chisa Pujana, Vatiki Prisibi Chisa Pujana, Mi Chisa Pujana, Atia Gulika nature Prakati Nagno Pujana, Ati which you do. What's one you unique call? Maybe not nature puja, there are Jesus Upayogi do nature, Timlana Pujana, Sudana Pujana, Ulona Pujana, Nodina Pujana, Jesus nature where Pujana. What's that? It's very interesting from Newa. Number 2, Ajimadyo.
Azimadio, you Kalajina, Azimadio, by articles to do, Azimadio signals matriarchy in Newar culture. Bangsawali Sudita Dasa, Wukalamokla, we don't know Bangsawali say, Gunakam Dev, Juzu Lake, Jiu Nepal Mandal Gobles reason Adula, okay, say Chama Azimadio, they Lola, Jiu Nepal Mandal Bisan. So Chamo Azimadio Nano Jigate do at Tomnaka Natunimoko, the Jitote Sulaga Zudas, Azimadio is very central to our Newar culture. Agaki Chisa, Chasa Azimadinadu, Nabanaba Azako Montana, Yaguchis Chasa Azimata Kinu, Matabusa Chasa Azima, but Monoshisa Chasa Azima, Yaguchisa Chasa Azima. Chasa Azima was the protector of that particular community, of that particular Baha, of that particular tablet. Is a Hisima Azimadu. It has been protective bodies. So no Julagi is Azimadio Yokana. Azimadio Hanachi, Isimadio, the go I have not seen in other places. Ageki Santana listed will be Tanachi, the people do the value. Tanachi, Unado, Jig, Azimadio, the Gomoji, Agondio, Jigudio, living goddess Kumari, Master, Matapinka, Puja, which you tradition. Sanjare, you could have Samaru. This is Maja Bhairabdu, Maja Ganesh do, Awea Jisa, Osoyo Piakang, Dr. Balgopal Jipisan Taudu, Daitio Kumare, Machapi, Miza Musta, Tuladhar Vasakya, Pats Barsataka, Zima Rindu, Oguka Muste, the deification of children, or Meme culture, Jisa Mohana, Akumari Dala Akundani, and that also has been Brahmanized. As we achieve Bindia Ganedia Dalla, Hindu Kishme Bindia Ganedia Moko, Yaki senses, Chimsa Ganedia manage be Hindu, the Katakosta Hindu Deka Yongu, that is not correct. As you will, Jitsubisa and Kalas, and maybe no Jisam Bisakable, Jitagati Kalas, Niwate Bu Tarmoka, it is not Shaivism, it is not Buddhism, it is not this or it is that. It is a collection, a synthesis of Nepal animism, Upayogi Bajla, Udapukayachi, Newa Dharmayu, all get how identity do, all get how Jisan to get the skin Bizaya Mauka, all get Ajisan Goti when Yana Ajiu Mopuja. Mopuja is a unique festival. Mopuja is a unique festival. Or unique festival since I you self-adulation. You place yourself in the middle of the mandala in the universe and self-adulation, of self-praise, of self-preservation. What go mother doing mother Kataye, mother Moshita Leta, so it's in Madhindeka, and you Parampara Chike Dule, is the Ajit Jisan to Jugu committee the Kajin Kalana, who get two to the G area to skin the interest to Yokukala Mushu, the Tuki Barena, but a research Jimate Jitata. Maybe sorry with the Roman dimension for to get it over. The Jitas is full against Rasa. She go intangible culture, don't it? Bahans of Fupe, you Piahandu, you dances too, and you talk Kokaya, Innovation, Sukotote for Astayata, the Shigate Mastiwa. So that will be one of my campaigns. He, you asked us to listen. He, Buddhist na Kalaki, Hindu na Kalaki, animist na Kalaki, you never Dharma the Gachisan de Pasa, never did the Huno announce Yadunkala. In the next census, maybe not 2021, but 10 years later, Newas may be able to put Newa Dharma as their Dharma, not say Hindu or Buddhist, anything like that. Thank you. Thank you. Thank you very much, Tata. I'm sorry to interrupt again. No problem. Keep interrupt me all my life. You are the first one in my entire professional career who has ever asked me to shorten my PowerPoint and then made me the last speaker in the seminar so that I was bereft of anything to say. Who is this? You are the first people to do that to me at this age, 70 plus. Thank you. Thank you to Samyuta, who didn't even introduce me well enough. And thank you, Ojesh. I want to say this. And Marlena has been excellent in this. Okay. Thank you very much, Jyotitata. I'm so emotional now. Thank you. Thank you, everybody. I think we have had an excellent session. And thank you very much for everybody who stayed on even after the presentation. We're almost hitting the 5-hour mark. And also, probably all of us are tired. So one last request to all of the audiences and presenters is to send us your feedback, comment, any constructive criticisms, anything that we can learn from onto our email, which is seminar@ppguk.org. It's again seminar@ppguk.org. Till next time, Aitaba. Thank you very much. Yakuikusuva. Bye. Thank you. Bye-bye.
Yeah. Thank you all. Thank you. Good night. Thank you. Yeah, thank you. Suba. Thank you. Thank you, Suba. Thank you, Suba. Thank you, Suba. Suba. Thank you, Suba. Yoko Suba gane. Suba. Tagu चाहिँ नि लास्ट चाहिँ नि छौ चाहिँ नि सुचम्बी नेपाल लिपि नेपाल भाषा चाहिँ नि छिटो चाहिँ नि मलाई जिता सम्पर्क टेरेछ जिन चाहिँ नि छिटा चाहिँ नि छिपिन्ट चाहिँ नि गाली आफु ने सुबा दक्सा सुबा सुबा ओजेस यो चाहिँ हो लाइभ चाहिँ पठाइदिनु न मलाई पठाइदिनु न लाइभ भिडियो चाहिँ सो फेसबुक चाहिँ न जुमे चाहिँ जी चाहिँ भाजु ओजेस जुम चाहिँ वो चाहिँ जुम मिटिङ समय याद हुन्छ चाहिँ झिसा तको चाहिँ लिदिया चाहिँ अथवा झिसा ठाउँमा चाहिँ लिदिया छैन जी अर्जुन साइन्त चिकित्सा चाहिँ ठो नेपाल सम्बन्धी बारे चाहिँ नि हान छौ चाहिँ वर्कशप देखियो नि त्यसको बालो खमा मलाई अले छु सपोर्ट मास दैदिस चाहिँ नि जिन चाहिँ सपोर्ट या ओके चाहिँ छिकपिन नपाए सला ब्याकेको जी छिकपिन खाउ छु क्षेत्र चाहिँ दको चाहिँ चाहिँ सटरडे सन्डे जी एट द सेम टाइम अथवा एकदम भ्याउस नि छौ कथा चाहिँ न्यू जेनेरेसन चाहिँ पुरै थिंक अफ या होला त रङै चीज खा नि सोन्जु छौ चाहिँ अब त चिजार हुन्छ खचा छ जी चाहिँ बालके म चाहिँ 6-7 वर्ष नि जापान निसे चाहिँ नेपाल सम्बन्धी क्यालेन्डर नगुमा निल्या पाउ चाहिँ सोङपेङको त्यो पोस्टन छोइदियो मलाई आतन जिगादु आतको न जिउ चाहिँ स्रोतकारी लागि चाहिँ वो दक्को चाहिँ कन्सल्ट याना चुनाउँदु तर चाहिँ छुचु भाषा थना झिसा चाहिँ दक्को चाहिँ आतको नेपाल सम्बन्धी बारे सफु पिकाना दिपि मलाई सरकारी यान दिपि गुलिन चाहिँ आर्टिकल्स पिकाना दिपि चसु त दक्को चाहिँ वेक बिन्द झिसा चाहिँ सला या चाहिँ सबुत यो ख तर ज्ञान चाहिँ छि चाहिँ अन चाहिँ रिस्टार्ट मजुला उकिलाई चाहिँ पनि हुन्छ यो पाखया झिसा छ पनि नि या चाहिँ सबुत ठीक छ संयुक्त चाहिँ जिटा लुमङको बारे चाहिँ यो सुभा मलाई जिना चाहिँ नापानी चाहिँ जिम कि चाहिँ हिसाब कैत्र मलाई के चाहिँ नि चिकपिङको ठो प्रगति खना नि जिटा चाहिँ एकदमै लसता हो जिउ पाखेन चाहिँ नि दैदिस फुगु चाहिँ नि गालिया यो सुभा यो सुभा सुन्जु We're seeing you after 10 years after World Newa Organization convention. Because Rajiv, baya fun one to say fun is Sachetan Tuladar. हजुर द मशुला खै मको चाहिँ West Kapali काय मास्टर हैन हो जी बायो नाकाल की चाहिँ डेफिनेटली मसिगा छ जिता जी सिला मसिगा जला जो बायो ना चाहिँ समरमान तलादर के यरखबाला हजुर ओहो सिला वा अंकन नील हेरा गाडीमा सुजुला दाइया चाहिँ जिउ पाउँछ जिउ चाहिँ पिट होला पिट अहिले कमाल गाइसला सिलाला भयो युके का मगर कम करें हजुर अमेरिका युके लन्डन ठाउँलाई चाहिँ गाउँ लेबाट एजु न्यू उदको जोले ठाउँ न्यूस नि यहाँ छिकमी त को खमलाई जलाई ठाउँ एकदमै लस्ता गलका ठाउँ छौ टाइममा एकदम पिकअप चाहिँ झन्डै 99 चाहिँ थिएन जाउँ एकदम हेगो छ ठ्याउ दे छौ कठा आठो चाहिँ सला व्याख्या हिसाब न जिमसँग चाहिँ यहाँ जुन मलाई अझै सेथौ नेपाल सम्बन्धी सम्बन्धी न बाला नि छौ कठा चाहिँ न्यू जेनेरेसन न प्याउ जुन छिकमी थिया बि चाहिँ बिजन पाँची थो खेले चाहिँ दुपिन जुल वेक अप चाहिँ इनपुट दि आया बिन दैन यने गाचे चाहिँ यहाँ माउला खनि आखिर कसो उद्देश्य दे होला चाहिँ बालगिया ख नेवा कम्युनिटी नेपाल सम्बन्ध कसो छौ कठा चाहिँ बालावे उद्देश्य पोले यो बि चामै स्टेट इन नगोली गयो चामै सो फोटो रे त बनाउँछ त कसरी नवा गजला खारौ ओके ओके मध्ये चाहिँ सुप्रिया वा चाहिँ रुक्साना यो चाहिँ कम्बाइन्ड प्रेजेन्टेसन होला ए रुक्साना थोकै आग्रा युकेला रुक्साना मकुने नेपाली
Antara Facebook ya berabar wajibnya, makam itu dona dada, esok ni nak. Tell your presentation more or less productive जुल थियो अब चौकठमा चाहिँ डिबेटको लागि चाहिँ हुन्छ सर्ट प्रेजेन्टेसन जुसा न जस्तै चाहिँ यहाँ छि ज्योतिज्यू वास्ते प्रेजेन्टेसनलाई इन्टेन्जिबल हेरिटेज यो टाइप खसला ओइका त 1 घण्टा बिमा उठेन्छ तर यसमा चाहिँ गुडीफुली चाहिँ कन्साइज जुल नि मलाई छिटो मेसेज चाहिँ त छिटो चाहिँ चौकठमा डिबेट चाहिँ तयारी आउन खत प्लेटफर्म सजेतन हजुर नि जी चाहिँ खास चाहिँ ओजेस जुन ढ्याड्नु मलाई Jimmy Kanyan Magani. Kalau jumlah nama ni saya ada nak kata Magani, okay jadi. Sampai maksudnya, jilat jadi Yunusoni itu jadi yang besar kata you mungkin. Ale. Just kau tahu kan definitely just Alina jula, Lorina Stapit jula, lewat saya Sunita jula. I think they are really doing great job. Cisal cila एकदमै चाहिँ गरौ जिमा छु छिसा न्याउले चाहिँ नेवा द ठिजुला ठेजुला लगाइ नि त्यो यङ जेनेरेसन त उली चाहिँ याना चाहिँ न्याउने होइ जाउँदै हे अय चीज नि सय तरौ चीज नि यो साब अले आज छौ शब्द न्याउ नि हजुर जी मरिलना मेजु हजुर मरिलना फ्रेसन हजुर त यो के कसो भएको नि भने सिगु खयाना जिगु सास झन् ठाउँ होला छु नेपाल भाषा चाहिँ नि धेगु संसार छौए जको देश है दु मखला तो भाषा itu चाहिँ चिसँग सेका दिउ दिउ त स्कय जिउ लागि त तरमै सास ठाउँ होला मखला अझै छ न जापानी चुन्चना जापान टेट चाहिँ जी चाहिँ नि अंग्रेजी बंगा चना मखला हजुर ऐसा न अले मसा मसु पे पस यानान्डु नि जी चाहिँ नेपाल भाषा शब्द टेउकै मिन्यो ने अले म चाहिँ यो छुदै दिउहरु का नि मखला ठो नेपाल भाषा का छिमसा मसेको छन्जु त्यहाँ मखला अले म सेका हिजो Suvanji, actually, I also wanted to introduce myself in person because I contacted you on Facebook years ago. So we're friends on Facebook, I think, because I was starting with the project of learning Nepal Bhasha. And I think you write on Facebook something like, sentences or words, right? So you'll find perhaps in 5 years ago chat a message and you befriended me after my request. So I'm just happy to meet you in person. Yeah. I have not noticed this. I'm sorry. No. I will double check. Yes. That's fine. No, that's fine. Just to say that actually I'm really happy that the community has allowed me to learn more and more because this started as a passion, a personal interest and study interest because I did some field work in Nepal and I was living with a Newar family. But it was thanks to the community in London that really I had a chance to improve and work, with them, which has been a great experience. Right. You see, I have taught languages for the past 30 years, you see. And then I have also done some studies how to teach people quickly, you see. Yeah. So that's why I have been sometimes, forcing students how to learn the language quickly. So, and I am dedicated, I am prepared to help. Even sometimes, my students contact me at 12 o'clock midnight, so I still answer them. So it would be great actually if you could give some feedback on what we did with Ojesh. Yes. I don't know if you've seen those videos. We realized an introductory, 10 introductory classes. And we used some techniques which I learned when I studied for the CELTO certificate, so to teach English as a foreign language. No, I think I have seen you on YouTube, but then, I just couldn't follow it up for some other appointment. If you want, I can send you the links all in one email. And we could use a lot of your feedback because teaching techniques has been, something that Ojesh and me, and I think other people in the Guthi have thought about. Yes, and there are different formats, and I have seen Sunita's format and Sanyukta's format. They seem complementary, but we might use feedback on teaching techniques. I think. Also, what we have tried to use in that format is we have tried to use how
how the general conversation takes place in Kathmandu Valley, rather than going it theoretically. But it's just easy for people to learn. You know, when you go to any country, and you don't have to learn the grammar or of it, just the language, how to speak it. Right. Yes. Yes. And that is exactly what we have tried to do with right. conversation. Look at how a child learns a language from her or his mother. Does he read? Does he write? Nothing. He just listens and he just copy, and then he just utter what his or her mother says. Right. This is how we learned. And even during the Buddha's time, 5,000 years ago, you see, all those monks, they studied, they learned, they remembered everything by just hearing. Repetition. So Repetition is an important part of method. learning. Yeah. Right, repetition. Yes. Yeah. Yes. I'm glad. I'm very much glad to. I think we should all leave now. We have been here for okay. 5 hours. Yes, please go ahead. This is 1:40 here, midnight in Japan, because I still love to hear you. I have been waiting. So you know, please. This event would have been so nice had it been a physical one, so we could all go out and have a dinner. Yeah. I conversations. Yes. We will hopefully try and do something physical sometime soon once the lockdown is over. I'll be very happy to help. We'll try and get as many people as possible. In fact, one of the ideas I had for 20th anniversary of Guthi was to organize Yenya Puni. Yeah. And actually invite as many speakers like yourself and others, and have these. I would love to visit you all. Yes, Sunday. But yes, which could not materialize, but hopefully we'll do that next time. Yeah. Yes, so thank you very much again, and a good night, and thank you very much. Thank you very much. Yes, good night. Bim bahani. Good night. Bimbani. सचेतन भाइ मैले लिन फिस सुटाउन नेपाल भाषा छौन्यु शब्द नआउने मास्ते व वेको ठुल कि म वेगन चाहिँ इभन चाहिँ अथि देवनागरी लिपि न भन्फो वेगन का went to goodbye data नेपाल भाषा गर्दै दिस अलि जाछ Hanan apply. Bukan pasal pidato suwe. Mary Lena Fricho. Yeah. I'm sorry because I'm not very fluent, but I can understand, but not everything. Yeah. So I'm still learning. Badi Zakashu. Hazır.